Hello, and welcome everyone to the round 6 of FIDE Chess Olympiad 2022 भाई। साहिल भाई है मेरे साथ जुड़े हुए। भाई साहिल भाई, कैसा लग रहा है? आज तो डे 6 पे आ गए हम लोग, इतने जल्दी 5 दिन बीत भी गए और इंडिया भी स्टिल एट द टॉप। भाई क्या लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। आपका इंट्रो इतना खतरनाक था कि मतलब सबको शर्म आ जाए भाई। बड़े बड़े भाई लोगों को भाई क्या मस्त इंट्रो था रे। एंड आज का मैच भी उतना ही मस्त होने वाला है। एंड एज यू कैन सी चैट, क्या मैच है भाई। लुक एट द मैच, इंडिया 2 वर्सेस आर्मेनिया। Only two teams with a perfect score so far. Yes. Only two teams. And by the way, India A पहले fixed board पे थी, board 1 पे. Now they have been, मतलब वो fixed board हटा दिया उन्होंने. So they are playing on board 1, these two teams now. क्या 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 समझा नहीं मैं। Like basically पहले क्या था, India 1 was basically fixed to board 1, I think. ऐसा कुछ था कुछ दिनों के लिए. और अब वो उन्होंने हटा दिया. So now whoever is on board 1 plays on board 1. पहले उन्होंने board 1 रखा था fix. ओके, गॉट इट। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। बाय द वे, पर आज एक बार इंडिया 1 से शुरू कर दे क्या हम लोग, प्लीज? कैन वी गो बैक टू इंडिया 1? इंडिया 2 का पेयरिंग दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि इंडिया 2 टॉप पे है ना। वो बोर्ड 1 पे है इसलिए। तो टेक्निकली यही इंडिया 1 है भाई, अभी यही इंडिया 1 है बिकॉज़ स्टैंडिंग्स में यही नंबर 1 है। एंड ये ऑल्दो वी हैव इंडिया 1 हियर एज वेल ऑन द लेट्स स्क्रीन गो भाई। चैट। पहला आज मैच होने वाला है इंडिया 1 वर्सेस उज्बेकिस्तान भाई। उज्बेकिस्तान ऑलरेडी वी नो, अबू सतारो भाई गलबी फॉर्म में भाई। क्या लग रहा है भाई? हरे कृष्णा कैन ही आपको स्टॉप पता है हिम? उज्बेक का स्कोर क्या है अभी 5 गेम में? नहीं भाई। 5 आउट ऑफ 5। व्हाट? यस, इंक्लूडिंग डिफीटिंग कारुआना। तो यूएस वाला भी जीत गए थे वो। ये ड्रॉ हुआ था यूएसए, जहां पे वो जीतने वाला था, शैंकलिन लास्ट में बच गया था बार-बार। लास्ट में बच तो गया ये इसी के साथ था। So this is not an easy team at all, and this is literally the India 2 of Uzbekistan. यार ये इंडिया 2 के बराबर की ही टीम है टेक्निकली। इनका सिर्फ 4th बोर्ड है जो 2550 है। लाइक अगर वो 50 पॉइंट ऊपर होता, दिस वुड लिटरली बी इंडिया 2। बाय द वे गाइस, जिनको पता नहीं है, अब्दुल सतारोव इज आल्सो द रैपिड चेस चैंपियन करंटली। ठीक है, तो ही इज आल्सो द रैपर करंटली। नहीं यार, रैपर क्यों होगा यार? I defeat Caruana, I roast him every night, you gotta see my beautiful night। रैप करना स्टार्ट कर देगा। So this is going to be a very interesting matchup। भाई नेक्स्ट पे जाते हैं भाई। इंडिया 2 will be playing against Armenia, the only teams that are at the top of the leaderboard, not lost even a single game। ठीक है, सारे के सारे इन्होंने जीते हैं एंड आज जो जीतेगा वो सोल लीडर बन जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, सोल लीडर। एंड कंसिडरिंग कि यूएस और इंडिया भी, मान लो फिलहाल के लिए इंडिया 1 and 2 जीतते हैं, यूएस भी जीतता है, तो tomorrow's pairing is most likely going to be India 2 versus the US। Because India 2 होगा फुल पॉइंट्स पे और एक पॉइंट पीछे जो टॉप सीड होगी मोस्ट लाइकली उन्हीं के साथ मैच होगा। So we might see some crazy pairing tomorrow। So आज जीतना बहुत जरूरी है, तो कल से फिर तहलका मचेगा। ऑफ कोर्स आज का मैच बहुत डिफिकल्ट है भाई। आर्मेनियन टीम फुल पॉइंट्स पे भाई, एक पॉइंट नहीं दिया उन्होंने अब तक इन टर्म्स ऑफ टीम्स। और देखा जाए तो इंडिया 2 में आज प्रग को ब्रेक दिया गया है। गुकेश, निहाल, आदिबान एंड रौनक विल बी प्लेइंग भाई। तो क्या लगता है भाई, प्रग को ब्रेक देना इज सही? और व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक द थिंग इज प्रग शुड हैव टेक्निकली, इनका जो टॉप सीड है ना, सर्गेई सिंह गाब्रियल, प्रग प्लेड अगेंस्ट दिस गाय इन द वर्ल्ड कप एंड डिफीटेड हिम 2-0। Oh, so Prag could have played, but I think they thought कि Prag has lost. Maybe this is the right moment to give him some rest. So it makes some sense. Although Prag के साथ team would have definitely been stronger on paper, at least for sure. On paper, okay. But ये भी था ना कि प्रग पिछले मैच में भी लाइक बाल ही बचा था, and then कल he lost. Okay, so like he was maybe rest was a good decision, and Adiban will be playing in place of Prag today and Ronak on the last board. ठीक है? Yes. Let's go to India 3 एक बार फटाक से देख ले भाई। ये इंडिया 3 का मैच होना है लुथेनिया के साथ भाई। सूर्या विल बी प्लेइंग ऑन द टॉप बोर्ड। सूर्या, सेतु, अभिजीत है ना, अभिमन्यु पुराणिक भाई। क्या लग रहा है इस गेम के बारे में? क्या लग रहा है? देयर इज अ FIDE मास्टर एज वेल प्लेइंग ऑन द सेकंड बोर्ड भाई। तो ये वाला should be relatively easier. I think they should win this match. And if India 3 wants a medal, they literally have to win tuck all the games. So I think this one should be a relatively easy match for Team India with all 2600 players against. There's 3 2500s. I think they should win like 3-1 or something. And FM, though, of course, yeah, matlab, I think that should be Sethuman ke liye. Well, easy pickings is the wrong word, but it should be clear favorite, yeah, Sethu. पर वो वाइट से आया ना खेलने, वो कुछ प्लान करके आएगा ड्रॉ का?
हाँ ऑफ कोर्स वो करके तो आएंगे, कोशिश तो पूरी करेंगे, बट अगर सेतु का ड्रॉ होगा तो कोई और हरा देगा यार, कोई चक्कर नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीम है यार, डरते हैं क्या हमें, खेल लेंगे यार, कोई चक्कर नहीं है। चैट मैचेस विल बी स्टार्टिंग इन 4 मिनट्स यार, तो उससे पहले हम लोग सारे पेयरिंग्स फटाफट देख ले भाई। कैन वी मूव ऑन टू द वुमेन टीम भाई? वुमेन इंडिया इससे पहले शिवांकर जी कह रहे हैं, डू दे रीड चैट्स? यस वी डू, यस वी डू। नेक्स्ट होने वाला है भाई इंडिया 1 वुमेन्स टीम में वर्सेस जॉर्जिया आई गेस। चैट ये तो आई थिंक इंडिया 2 का मैच है अभी, एंड यहाँ पे क्लियरली इंडिया इज फेवरेट ऑन ऑल 4 बोर्ड्स बाय रफली 100 पॉइंट्स। सो आई थिंक कुछ ड्रॉ होंगे और कुछ में इंडिया जीत जाएगी। एंड नाउ वी हैव इंडिया 1 अगेंस्ट जॉर्जिया, एंड ये तो रिवेंज मैच है भाई। Yes. ये तो रिवेंज मैच है। इंडिया की टीम 2 को पहले टीम 3 को एलिमिनेट किया जॉर्जिया ने, एलिमिनेट मतलब इन द सेंस की मैच हराया पहला, फिर टीम 2 को हराया, और अब टीम 1 के सामने हिम्मत देखो भाई टीम की, इतनी हिम्मत, अब तो हराना ही पड़ेगा इंडिया को बिल्कुल यहाँ पे। एंड वी होप दैट इंडिया कैन क्रश जॉर्जिया हियर एटलीस्ट 3-1 टू यू नो रियली कीप इट लेवल। सही है, क्रेजी भाई। होपफुली आई थिंक हम्पी विल स्ट्राइक टुडे एंड वी कैन विन दिस। एंड नेक्स्ट इज इंडिया 3 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भाई, इसके बारे में क्या कहना है भाई आपको? I think Australia is clearly weaker on the second, third, and fourth boards. So I think, and Nandita is in insane form. Uska bhi 5-on-5 hai. Wow. So she's the one person who's literally been, performing for India Team 3 continuously. So I think I expect her to win today as well with the white pieces against a low-rated player. And a player from Australia and New Zealand, especially countries that are in the southern hemisphere, they don't get too much practice. Because OTP tournaments बहुत कम होते हैं. If you are in Europe, even if you live in a country of a lower rating, you will at least have a lot of practice in OTP tournaments. That's not the case always for people in Australia and New Zealand and all these countries. So I think India is a clear favorite here. And board 1 पे थोड़ा balanced है, but I think बाकी तीनों board पे India should be favorite. Wow. तो let's see guys, आज क्या होता है? BeastStats for Tanya's coach. ये क्या चल रहा है भाई? I think we can look at the games, and I think बहुत मजा आने वाला है because ओवरऑल आज काफी क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज इंडिया 2 का मैच आर्मेनिया से है। जैसे ही उनको अगर हरा देते हैं मान लो, देन दे फेस द यूएस टुमारो, एंड दैट विल बी द अल्टीमेट मैच, बिकॉज टेक्निकली दैट कुड बी द फाइनल यार, बिकॉज वी थिंक कि लास्ट डे फाइनल होगा, ये है वो है, बट ओके इमेजिन दिस सिनेरियो, इट्स इंडिया 2 वर्सेस यूएस, दोनों टीमें इतना अच्छा खेल रही हैं, वो अब मान लो टच ऐसा बिल्कुल ना, बट इंडिया गलती से हार गई, अगर यूएस अगले सारे मैच जीत जाती है, which is very likely to do, India can never catch up. They will never get any chance to catch up. So कल का मैच could very much be the final itself. अगर इंडिया ने यूएस को हरा दिया, US is literally gone to the medal race and India has ensured a medal almost. पर अगर आज ही यूएस ना जीते, हाँ वो भी खेलना ही नहीं उनसे, हाँ वो भी सही है, but I think it's very unlikely US will not win. I think we look at the pairing for the US also very quickly, games भी देखेंगे, but I think US का हारना बहुत कम chance है. They are a very very strong team, and with every match, they come more into the elements, like और form में. और US का है किसके साथ पर मैच? US का I'll let you know किसके साथ है, हमने देखा था I think ये briefly. I'll just quickly let you know, but I think they are the clear favorites regardless. Why board points are not considered and match points are considered? Actually, board points are considered for the tie breaks. Yes. Right? Yeah. US is playing Iran, by the way. So they have Fabiano Caruana versus Param Maksudlu on board 1. Then you have Aronian against Tabai on board 2. Wesley So against Idani Poya on board 3. And Dominguez against Bardia Daneshwar on board 4. The issue here is Maksudlu can match Caruana. Tabai has defeated Hare Krishna in the I think it was the World Cup. So he's also very strong, can match Aronian. Then you have Idani Poya, who's also very strong, can match Wesley So on his day. But fourth board pe, they have an IM with the rating of 2490. And he is playing Dominguez. So that's where US team is the strongest. Fourth board ना एक बहुत बड़ी problem है हमेशा. And इसका मुझे डर है यार बस fourth board का, and that's why US should be able to win this match. Okay. Let's see भाई आज क्या होता है भाई. I'm hoping ईरान जीत जाए तो और भी मजा आ जाए भाई. And fix audio कह रहे भाई, sound is fluctuating. निरंजन भाई. Fluctuating तो कुछ नहीं है. Nidhi is saying कि it could be India 2 versus India 1. It could be, but what happens is, मान लो कि India T2 wins, they will be the only ones on full points, like after 6 rounds, 12 points. Then 12 वाले का 11 वाले के highest seed से match होता है usually. So 11th में highest seed कौन होगी? US.
That's the thing. And the games have started, chat. As you can see, Yakovic Sindarov playing against Erigesi Arjun. Maybe we can go through all the games one by one. We'll start with the open A section and then B section. I'll check the sound error kya ho raha hai. BeastStats, can you look at the games? Let's go. We'll start from Hari Krishna. Hari Krishna has already started. His opponent has started with E4. He has replied with E6 and he chal kyun nahi raha hai bhai? Hello? Moves. Please move. Hello? Moves. ये क्या हो रहा है भाई? ओके. निरंजन भाई ने कहा है बैकएंड से पेशेंस रखिए यार. BeastStats आप बहुत वो है उतावले हो रहे हैं. Thank you. Chat अभी भी आ रहा है क्या? कोई आवाज मुझे बताना if there's any audio issue. I think it's not from you. I think it's from the playing hall. Yeah. No, I'm not sure. I just want to make sure. If the audio is fine, let me know, chat. If the audio is fine. That's not always, na. It is always as long as the colors match up and everything. So we don't really know colors doubling हो सकती है क्या ना. It depends on all the teams. कितनी teams हैं उस पे. So let's see. But most likely वही होगा. Like it's not guaranteed, but most likely yes. यार मैं बार-बार पीछे जा रहा हूँ. ये आ गया यार गेम. चलो कोई ना, पोजीशन पे तो आ गए ना. So h6 played now black. Okay. आगे भी आ गए. भाई ठीक है भाई, यहाँ से ही देखते हैं. S6 played by black. यहाँ से देखते हैं भाई. हाँ, and if you look at this position, this is very very theoretical. I think दोनों के पास बहुत fast खेल रहे हैं. And Hari Krishna would be absolutely fine if he takes the draw. Honestly, because first of all, Abdul Sarov is in crazy form, and he is the one who's been carrying the team on his shoulders. होता क्या है अगर आपके पास टीम में, let's say, you have a Carlson in the team, ठीक है? When Carlson does not win, then your entire team suddenly struggles. Because उनका लगता है हमारा लीडर ही नहीं जीत पाया तो हम क्या ही कर लेंगे. That always is a problem, right? So यहाँ पे it's the same thing. This guy has been carrying the team on his shoulders with this crazy play 5-on-5. If he draws and suddenly मतलब थोड़ा confidence, he has the white pieces also, so he's supposed to strike here if the team wants to win. So India के लिए यहाँ draw बहुत अच्छा result रहेगा. I hope Hari can draw or even push. Yeah, that would be awesome. But at least a draw is needed. He cannot afford to lose. बट अभी तो बहुत ही ऐसा वो इक्वलिश लाइन है. जोको पियानो चल रहा है यहाँ पे. जोको पियानो ही बोलते हैं ना भाई इसको. हाँ, इटालियन ही हो गया technically. But I think मतलब I think with the bishop on h4 the knight is pinned and white has two choices. He could play c3 d4 or knight c3. Play c3 and he will surely play d4, maybe rook e1, knight d2, knight f1 and ये ड्रामे चलते रहते हैं. And I think first of all d4 आ सकता है कभी. And if a played a5, the idea being first of all to prevent b4 for white, so white cannot gain any space now. Unfortunately, लेकिन bishop can also be put on a7. The idea being कि जब भी white d4 खेलेगा तो tempo के साथ वो move नहीं आएगी. The bishop is already on a7. But the drawback is now a move like knight to a3 becomes very legit because the b5 square is available. So knight a3, knight b5 can be a very very common plan here. So I think we can move to the next game now. Hari Krishna's game looks very normal. They are both playing very solid chess. We can see that. Look at Gukesh. By the way, game Vidit ki dekhenge, but look at Gukesh here. Very focused. He knows कितना कुछ दाव पे आज. It's very important for him. हम गुकेश को भी देख सकते हैं भाई एक सेकंड के लिए कि क्या ओपनिंग खेली उन्होंने. Okay. अभी तो c4 c4 ही है. I think we'll go back to Vidit's game. हाँ, Vidit की में चलते हैं. ये लो भाई, विदित की गेम पे चलते हैं. Chat कर देना यार जल्दी से. Let's go. Okay, similar भाई as usual अपना d4, knight f6, c4, g6, knight to c3, bishop to g7. ये तो मेरे को भी ओपनिंग रट गया. चैट आई थिंक तुम लोग को भी आ गया होगा अभी ये ओपनिंग खेलना. ये तो किंग्स इंडियन हो गया ना भाई. ये थोड़ा सा मैंने कल नहीं देखा. d6, knight f3, castles, bishop to e2, knight to a6. knight to a6 क्या मूव है भाई? पहले सौरभ भाई कह रहे हैं टिक्कू को कोरोना दे दोगे बाबू तुम. भाई उनको कोरोना नहीं है भाई, उनको प्यार हो रखा है यार. एंड कोरोना ऐसे नहीं फैलता भाई. 2 साल हो गए सौरभ भाई, अब तक तुम फैक्ट चेक नहीं किए. Anyways, knight a6 का आइडिया ये है कि बेसिकली e5 खेलेंगे and at some moment white will have to move the pawn somewhere. चाहे वो e5 मारे चाहे वो d5 खेले, जो भी उनका प्लान है, उसी मोमेंट में c5 स्क्वायर अवेलेबल हो जाएगा हमारे नाइट के लिए. And then knight c5 के बाद the e4 pawn will be attacked. इसे मान लो व्हाइट ने d5 खेला यहाँ पे. हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ पर ये बन ही नहीं रहा यार. कोई बात नहीं, मान लो यार d5 खेला. Then simply knight c5 would happen at some point. Yes. e4 is hanging also, and then black will also support this knight with the move a5 sorry, and that way white cannot play b4 and kick the knight away. So usually black plays like this. The knight can also go to d7 and c5, but a6 c5 भी एक पाथ है, bishop open रहता है. So this is very very normal opening theory चल रही है अभी तो. VD will of course, but Kings Indian chat
let me point out, it's not common nowadays. It's known to be good for white usually. लेकिन this is very theoretical. बहुत थ्योरी है इसमें, बहुत ज्यादा थ्योरी है. एंड ब्लैक ने अगर खेला है ना, that means either this is his pet line, उसको बहुत पसंद है, या फिर he really wants to win. Because किंग्स इंडिया में क्या होता है कि आप क्वीन साइड कई बार पूरी हाथ में दे देते हो व्हाइट के कि भाई तू कर ले अटैक, लेकिन किंग साइड पे मैं खेलूंगा, और किंग कहां पे है भाई? किंग साइड पे. So ये लाइन इतना, it's very double edged and theoretical भी है. So hopefully VD is all prepped up for his theory. Like he should not be surprised by the king's end. That's the main important detail. So VD, आप देख सकते हैं शायद VD को, right? You can see VD there, शायद. You can see VD. We have the camera. VD, भाई. We have VD's camera. Oh my God! Finally, VD's camera. VD is there, भाई. साहिल टिक्कू को VD को देख के ऑर्गेज्म आ जाता है भाई. भाई क्या आता है बीस भाई? सॉरी भाई. बीस भाई क्या आता है यार साहिल भाई को? खुशी मिलती है भाई. खुशी मिलती है. Nice. भाई. So the new India number 4 with Gujarati is right there, and he's looking very focused. I think, to be honest, the fact that Rakesh became India number 3, मैंने I think कल की वीडियो में बोला था, it's a great thing because इससे क्या है कि competition बढ़ता है. Like ऐसा बहुत नोटिस किया होगा, जो लोग अच्छे देखो, मतलब जैसे if you are learning in the same classroom as, let's say, top players, you'll probably become like them a little bit, right? So it's the same thing. जितना विदित को competition मिलेगा ना, उतना he'll be forced to like up his game and reach the 2750 mark. And in some में से सबसे अच्छा chance VD का ही है because he's been there for a while. So I think hopefully VD can also use that motivation, and he looks very focused, of course. तो आप कह रहे हैं कि उस प्लेइंग हॉल में तो वो भी बैठा है समय, तो वो क्या FMIM बन के निकलेगा क्या उधर से? नहीं, इतना भी नहीं, बट मोटिवेशन तो मिल रही होगी ना फॉर श्योर. मुझे देख के ऐसा फीलिंग आ रही है यार कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है. बट हाँ, समय के आई थिंक 50 रेटिंग तो बढ़ी जाएगी भाई ऑनलाइन, क्लियरली. लेट्स सी भाई. कल तो आया था तो 12:30 6:30 आ रहा था भाई. ठीक है, देखते हैं भाई. पीटी में तो यहाँ नहीं है यार. Okay, let's move to the next game. I think we can go to the game of Sasi Kiran and Arjun. Yes. शशि किरण की गेम पे आ गए हम लोग. Okay, ये conclusion है. Yes. And this is the bishop b5 Sicilian, yeah, and knight d7 खेला है. Usually I play bishop d7 or knight d7 because it simplifies the position. Knight d7 बहुत complex character आती है. White can now go c3 d4 and try to gain the center slowly. But अभी बिल्कुल opening part है, so we'll see how it progresses. अभी तो बिल्कुल opening start हुई है. Can we go to the game of Arjun now and see how he's doing? भाई एकदम एग्जैक्टली यही मैंने खेला था विदित के अगेंस्ट, और मैंने बस ना ये पीछे लिया नहीं था. इंजन बोला था बाद में मेरे को बिशप a4 इज द बेस्ट मूव. सही है यार. एनीवेज, लेट्स गो टू अर्जुन गेम. थैंक यू जॉन भाई यार, समडे मैन. 1800 से 1650 हो गई. ओके, अर्जुन इज प्लेइंग द कैरो कैन डिफेंस. इंटरेस्टिंग, इंस्पायर्ड बाय लेवी रॉजमन. लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग. क्या खेला है आगे? बस इतना ही है. ओह, संदारू जी सरप्राइज्ड. या I'm not sure भाई. Yeah, because clearly, मतलब I don't think Caro-Kann is Arjun's main opening. Yeah, it's nobody's main opening nowadays. है ना, so apart from बहुत कम लोग खेलते हैं आजकल, like as a main repertoires, like regularly. So maybe he's a bit surprised there because the fact that he's not played 9 minutes सोच चुके हैं. I think we can have the board somewhere in the corner ताकि हम वो भी देख पाए. Yes, awesome. So I think yeah, वो सोच रहे हैं ना. I think. Yeah, he's thinking. He's the board, right? सुसु करने नहीं गए वो. He's on the board right now. He's thinking. Yes. Chad, this is what an opening surprise looks like. Wow. Opponent ने C6 देखा. He's like shit. मैंने देखा नहीं यार. फर्स्ट मूव पे कैसे सरप्राइज हो सकते हो? उनको आता तो होगा ही कारो-खान के अगेंस्ट खेलना. होता क्या है? He's looked at the games of his opponent Arjun. And he has looked at a few games in the Caro-Kann also, but ढंग से नहीं देखा होगा. Because he did not expect this. होता क्या है? Let's say आपके पास opponent की बहुत सारी games, जैसे E5, D5, C6, E6. अब C6 तो सबसे कम खेलता है, सबसे कम टाइम उसमें स्पेंड करोगे, राइट? अब C6 आ गया. Now you're like, मैं थोड़ा बहुत देखा था. अब उसमें क्या क्या गेम्स हुई थी? He's trying to recall कि उसमें वो गेम हुई देखी थी मैंने, उसमें उसने ऐसे खेला था, यहाँ पे ये था, वहां पे ये था. So he's trying to recall everything you've seen about your opponent now. और फिर वो लगातार टक 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 फास्ट खेलेगा वो. ऑन स्क्रीन हम लोग देख सकते हैं निहाल आके सबके गेम्स चेक करके गए, और फैबियानो भी आए थे थोड़ी देर पहले. एंड निहाल ऑल द गेम्स. निहाल बचपन से ही करता आ रहा है. आई थिंक पन्नाली टोल्ड मी दिस कि मतलब वो ना मतलब सीट पे बैठता ही नहीं था कभी नहीं.
वो पूरे टाइम बस घूमता रहेगा, देखता रहेगा सारी गेम्स, एंड जैसे कोई गेम होगी जाके उनको बोलेगा यू कुड हैव प्लेड दिस, यू कुड हैव प्लेड दिस, यू कुड हैव प्लेड दिस। ऐसा गेम खत्म होने के बाद भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, अगर दूसरी गेम खत्म हो गई तो मे बी यू कैन लाइक tell them in a normal tournament. Olympiad maybe it might not be allowed, but we can kind of discuss a little bit like अपनी गेम के बारे में नहीं, उनकी गेम के बारे में. And finally he has played, his opponent has played, Arjun's opponent has played d4. Yeah, d4 feels very logical. d4 पर d5 incoming. Anisha is saying yellow. What's yellow? उनकी शर्ट. एक्सचेंज या क्लासिकल खेलो यार, थ्योरी नहीं आती भाई. एक्सचेंज करेंगे तो लंदन सिस्टम में चला जाएगा रे. So I am not really sure if he wants that. Oh, by the way, Caruana playing very fast, yeah. बहुत important game है Caruana के लिए, chat. बहुत important. His confidence must be the lowest it's been for, I would say, literally a decade right now, because he's challenged Carlsen for the World Championship. What has he not achieved in the chess world? Yeah, apart from the World Championship, he has the third highest chess rating ever at 2844. He had a 7-0 score, 7-on-7 in the Sinquefield Cup, जो Carlsen भी आज तक कभी नहीं कर पाया, I think. And he has achieved everything. He's been world number 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 throughout his career, and now he's dropped to world number 9. So let's see क्या होता है. बहुत important game है. But first we'll go to the team B India. Can we have a look at all the games one by one? Yes, गुकेश से शुरू करते हैं भाई. d4, d5, c4, e6. Knight to f3, knight f6, knight to c3, bishop to b4, queen to a4, check, knight to c6, and e3 is played by. Lakshay bhai puch rahe hain, Sahil bin bhai, what are the odds if India and India B both win? Next round will be India A versus India B. There are certain chances for that, but I think maximum chances would be US versus India B because they have the highest seed. Although there are chances, but दोनों को जीतना पड़ेगा उसके लिए. भाई मैं बता रहा हूँ भाई, इंडिया बी दोनों जीतेंगे ना. अगला मैच इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी होगा भाई. यूएसए आज यूएसए का ड्रॉ यार हार जाएगी भाई. बट आइडियली पता है यूएस का पहले से क्यों होना चाहिए, बिकॉज अगर इंडिया का पहले हो गया, जो जीतेगा उसका यूएस से पड़ेगा, तो एक ही हमें शॉट मिलेगा यूएस के साथ. अगर उनका यूएस से पड़ जाए तो एक शॉट, टचवुड गलती से हार गए तो एक और शॉट इंडिया को मिलेगा फिर. ठीक है भाई, है ना. ठीक है भाई, तो आज यूएसए जीत के भाई आज इंडिया बी वर्सेस या तो यूएस हार ही जाए, वो भी चलेगा. वो भी दौड़ेगा भाई. लेट्स गो. यो प्लस हेलो. नाइस. हाँ, तो ये अभी तक है भाई मूव्स हुए भाई गुकेश के भाई. हाँ, सो यहाँ पे क्वीन a4 चेक का आइडिया रहता है. तो बेसिकली कि वी फोर्स नाइट टू c6 बिकॉज ब्लैक का किंग पहले e8 पे था और बिशप था b4 पे. तो व्हेन वी गिव क्वीन a4 चेक, बेसिकली क्या है कि बिशप को बचाने का एक ही तरीका है, टू प्ले नाइट टू c6. यस. इसके बाद क्या है कि जो c पॉन है वो ब्लॉक हो चुका है नाइट के पीछे. सो ब्लैक कैन नॉट प्ले दिस लिबरेटिंग मूव c5. तो व्हाइट ने एक पूरा टेम्पो वेस्ट किया. ये क्वीन c2 कभी वापस खेलेंगे जस्ट टू फोर्स, मतलब ब्लैक का पीस डेवलप करने के लिए उन्होंने एक मूव वेस्ट किया है. दिस इज चेस या मतलब नाइट इज फोर्स करने के लिए दे काइंड ऑफ प्लेड क्वीन a4, you drop back the queen to c2, and then we'll argue कि आप c5 नहीं खेल सकते, and that means कि आपका ये जो सेंटर है, you cannot challenge my center. I have c4 d4 and clearly I have the edge here. So ये इसका आर्ग्यूमेंट है, but ये सारा theoretical है. But honestly, I play this line myself. I really love it. बहुत सही line है white के लिए, and it's always a safe edge. Like you're not risking much. Got it, bhai. Got it. And good afternoon to everyone, bhai, in the chat. पर भंडारी कह रहे good afternoon, भाई. और कौन है भाई? लक्ष्य है भाई यहाँ पे. हेलो लक्ष्य. हाँ बताइए भाई. और सर प्रोबेबिलिटी में कुछ डिफरेंस होता है क्या? नहीं भाई, उतना तो नहीं यार. डेफिनेशन में थोड़ा बहुत होगा. So let's go to the next game and see what Nihal is doing now. Yes, let's go to Nihal game. Nihal is playing Hyant Melkumian, and मैंने इनका भाई ये क्या भाई, इतने सारे मूव्स हो गए भाई. क्या हो गया भाई? Can we go to the game quickly? एक बार स्टार्ट से उल्टा फ्लिप करके. Yes भाई. बहुत लंदन जैसा लग रहा है, बट लग नहीं रहा, पता नहीं. c4, e6, knight to c3, d5, d4, c5, c capture on d5, e capture on d5, knight to f3, knight to f6, bishop to g5, bishop to e6, bishop capture on f6, queen capture on f6, e4, d capture on e4, knight capture on e4, queen to f4, bishop to b5, check, knight to c6, and queen to e2 and bishop to e7. भाई ये अभी तक हुआ है भाई. हाँ, so basically I think this must be some theoretical line which I'm not aware about, but honestly speaking I checked the results of Melkumian Hyant. इनका जो previous tournament उन्होंने खेला था, that was I think some tournament, I don't know exactly which tournament it was,
but वहां पे he lost 20 rating points in one tournament, including a draw against a 1900, a loss against a 2200, and a draw against a 2200. Oh, So he's definitely not been in form recently. However, he has played good chess in the Olympiad so far. So Nihal maybe has seen that as well, because when we prepare, we usually see कि हमारा opponent कैसी form में खेला है recently. So maybe he's going for this sharp line because he feels कि जो Milkyman ji hai, he's not in form. Because he went for this Tarash kind of line, which is very dangerous. I think VD has tried this multiple times and has suffered. So I think और बहुत complicated position लग रही है ना, मतलब सब कुछ खुला हुआ सा लग रहा है. मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है चल क्या रहा है इसमें. सौरभ भाई कह रहे बाबू के नोटेशंस तो काफी अच्छे हैं. थैंक यू भाई, थैंक यू. वो साइड में पढ़ने में इजी होता है भाई. नाइस. सो आई थिंक ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है. निहाल का टाइम देखो भाई, 3 मिनट गेन कर रहे उन्होंने. सो ही इज इन प्रेप, या ही इज इन क्लियर प्रेप. ही इज इन प्रेप, या. एंड अभी ये मिल्की मैन अभी टाइम ले रहे तो ही इज नॉट इन प्रेप, राइट? इन दिस देन बट ही इज सीन दिस, बट ही डजंट रिमेंबर इट क्लियरली. मतलब ये इतना है कि ही नोज व्हाट्स हैपनिंग, बट उनको थोड़ा बहुत याद करने की जरूरत पड़ रही है. Got it, bhai, got it. Next up is Adi Ban, bhai, the beast. Let's see, bhai, beast आज क्या खेल रहे हैं भाई? चैट B3 और नॉट, गेस करो भाई. वो मत खेलना beast stats. चैट B3 और नॉट. मैं तो नहीं खेल रहा भाई, अपने आप आ गया बोर्ड पे तो अलग बात है. अरे आ गया भाई, आ गया. ठीक है, बढ़िया. So it's not B3 भाई, at least not on so far. B3 नहीं है guys. B3 पे डांट पड़ जाएगी सबको, I think. ऐसा हो सकता है कि विशी भाई खुद ही आए और डांट दे आदिवान को, क्या कर रहा है. गेम के बाद हाँ, गेम ऑफ कोर्स, गेम के बाद. D4, knight to F6, C4, E6, knight to C3, bishop to B4, E3, castles, bishop to D3, D5, C capture on D5, E capture on D5, knight to E2, rook to E8, bishop D2, bishop F8, and rook to C1 is played भाई यहाँ. और फिर से देखो बिशप B4 आया, फिर F8 चला गया. And he forced the knight तो ये क्या है इसका, कुछ क्या है ये? हाँ, तो it does seem कि ब्लैक ने कुछ डेवलप. Isn't it true also? हाँ, it's true, but white के अगर आप पीस देखो सारे थोड़े से ना पीछे ब्लॉक्ड नहीं है. The bishop on D2 has no immediate future. The knight on E2 is also not doing much. It will take white time to basically castle, maybe F3 and then plan E4, king H1. उस टाइम में black will develop all his pieces. So black is usually fine. ये सारी थ्योरी है. In fact अगर आप बार देखो वो हल्का सा -0.1, 0.2 कुछ बता रहा होगा, as you can see. So it's usually fine for black because white के pieces उतने active नहीं है. Got it, भाई, got it. पर अभी इधर white अच्छा अभी तो ब्लैक कम हुआ है, पर जैसे व्हाइट कम हुआ है कैसल कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन अप नहीं कर सकता है सेंटर, और सब कुछ उसका खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा. एंड जो तेर साकिया है ना, लाइक ही इज अगेन सिमिलर टू नबाती तमीज, द इजराइल प्लेयर जिनका यूएस से कल था. ही इज अ वेरी गुड ओपन टूर्नामेंट प्लेयर, जहां पे टॉप सीड होते हैं ये सारे जीतते हैं लिटरली हमेशा. And यहाँ पे he's going to play much stronger players of course continuously, so we'll see how he performs. But he's very underrated clearly. मतलब lowest तक खेल की rating बढ़ाना is very difficult and he's very strong. And एक पोल भी लगा दिया गया, how many Indian team will win today भाई. मैंने तो वोट कर दिया भाई, आप भी कर ले भाई चैट. बढ़िया. So can we go to the next game? Fourth board. Yes, we'll go to the next board. Rohan Sadhwani back into the team after one day's rest. Let's see how he's doing with the black pieces. भाई ऐसा भी तो होता होगा ना, जो लोग ने रेस्ट किया है, दे वुड हैव प्रिपेयर्ड ऐसे, पर उनको पता भी नहीं रहता होगा ना कि किसके अगेंस्ट मैच है, तो क्या ही प्रिपेयर करते हैं. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता होगा बिकॉज़ आई थिंक वो बाकी लोग आके थोड़ा रेस्ट करते होंगे ना, फिर एक तरह से रिलैक्स होने के लिए, तो उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है. भाई ये क्या है भाई, ये तो एंड गेम ही पहुंच गया. ओह वाओ, कैन वी हैव अ लुक फ्रॉम द टॉप? यस, एक सेकंड बोर्ड स्विच कर दूं मैं. यस, लेट्स गो. B3 खराब ओपनिंग क्यों है यार? B3 खराब नहीं है यार, मतलब देखो ना, इट्स लाइक मतलब तुम्हारे पास 5 स्टार का मेन्यू तुम्हारे साथ में और तुम वही मतलब बोलते ना, वही एक बड़ा कॉफी मंगा रहे हो भाई या कुछ पता नहीं, आई डोंट नो. हाँ मतलब वही बड़ा पाव है, जो भी मतलब तुम जो चाहे मंगाते हो, तुम तो खेलोगे भाई छुटपुट चीज. सेंटर लो ना भाई, सेंटर लेना इंपॉर्टेंट है यार. ओके. E4, E5, knight to F3, knight to C6, bishop to B5, knight F6, and castles by white, knight capture on E4, D captures, D4, knight to D6, bishop capture on C6, D capture on C6, D capture on E5, knight F5, queen capture on D8 check, king captures, knight to C3, bishop to D7,
h3 s6 b3 c5 bishop b2 knight to d4 knight capture on d4 c capture on d4 knight e4 c5 c3 d capture on c3 bishop capture on c3 rook a d sorry a5 rook a d1 king to c7 unpinning and then f4 भाई ये तो खत्म ही तो गियर कर दिया इन्होंने गेम a4 भी played by Actually the thing is ये गेम ना लाइक वो ऐसे वो बर्लिन एंड गेम जैसे मतलब है ब्लैक हैज द बिशप पेयर व्हाइट के पास थोड़ा सा स्पेस है सेंट्रल नाइट है एंड सो ऑन सो यूजुअली ये गेम ही ऐसी होती है and white will try to win in the end game and black will try to equalize. Luckily black ने अपना कोई double pawn नहीं है अभी and it's all looking fine. But then white does have fully developed rook d1 पे आ चुका है. Black ने भी bishop e8 develop नहीं करा है, rook develop नहीं है. So it's kind of still going on. It's not like ये game खत्म है किसी भी एंगल से. अब ये चलेगी गेम अच्छी खासी मतलब we might have a result basically. पर ये भी है ना अपने पास डबल बिशप एडवांटेज नहीं है क्या? हाँ for sure. But the knight on e4 is not weaker than any bishop. That's the thing. वो खतरनाक knight e4 बैठा हुआ है. And अगर हम by chance bishop c6 खेल के bishop e4 मार देंगे वो रुक से मारता है तो we will have this bishop on f8 जो हमारा c5 pawn से blocked है. So it's not the best bishop in the world. तो इसलिए I feel कि थोड़ा सा भी game double edged है and both sides can actually win this. Okay. और एक और चीज भाई कि अभी तो इसको कैप्चर करना पड़ेगा ना इधर क्या करेगा पुश कर सकता है या इग्नोर भी कर सकता है पुश करेगा तो हम मार देंगे फ्री का वो तो फ्री का पॉन है आई थिंक मैं तो ऐसे भी मार दूंगा फिर इसके पास एक आइसोलेटेड पॉन है यहाँ पे जाके कुछ नहीं कर सकते हाँ बट हम डेवलप नहीं है ना इतना डांस करेंगे तो वो मतलब थोड़ा सा काटने को आ सकता है बाद में यू हैव टू बी केयरफुल वंस वी डेवलप देन वी कैन डू दिस आई थिंक ओके गॉट इट भाई black has bishop pair advantage but Babu and Tickoo OP how many games a GM can remember at a time अब ये तो tens of thousands games like वो कार्लसन की आज ही वेरिटेसिम ओपी की जो वीडियो हो जाकर देखो उसमें वो बताता है ये सेम चीज they can win tens of thousands of games at the single time yeah but ऐसा कुछ वो थोड़ी मेमोरी चिप थोड़ी कि अरे इसका स्पेस इतना है कार्लसन की वीडियो दिखाता है वो वेरिटेसिम like it's literally like उसको क्या करते हैं डेविड हावेल puts up a random position in front of him वो गेम आज तक की हिस्ट्री कोई भी गेम हो सकती है कार्लसन बोलता है ये गेम है इस साल में इन दोनों के बीच में नेक्स्ट गेम ये इस साल की गेम है इन दोनों के बीच नेक्स्ट गेम ये इस साल की गेम है इन दोनों के बीच और एक टाइम पे वो कहता है मैं एक गेम खेलने वाला हूँ मैं मूव चलता रहूंगा अब बताना कौन सी गेम है ही लिटरली प्लेज e4 e5 नाइट f3 नाइट f6 पेट्रोफ वो कहता है आनंद जपाटा एंड डेविड हावेल रो पड़ता है कि भाई ऐसा कैसे भाई मतलब पता नहीं कैसे भाई वाओ भाई ये आने वाला है बोर्ड पे आई थिंक एंड इसके बाद पर ये पॉन नहीं मर रहा है हाँ g7 मर रहा है बट नाउ एज यू कैन सी इट्स ऑपोजिट कलर बिशप्स एंड द d6 पॉन जो है हमारे पास इट कैन बी वीक हमें बिशप e5 रखना पड़ेगा एज वाइट टू सेव इट लॉन्ग टर्म एंड जो क्वीन साइड में प्ले है इट काइंड ऑफ कंपनसेट्स मतलब हम a3 मारेंगे रुक a2 आ जाएगा देन वी हैव b5 c4 पास पॉन बन सकता है हमारा लाइक so black should be fine opposite bishop kind of makes it quite simple in fact like itna aasan nahi I think yahan pe kya khelenge lekin okay rook g8 actually looks very strong no because h3 hanging actually yes h3 is actually strong so I'm not even sure if white should take this pawn yeah ha even Indian doesn't like taking the pawn actually yeah because suddenly you know jo black white ka bishop है it's useless it's completely useless वो सिर्फ प्यादा बचाने में लगा है हम तो अटैक करने लगे भाई because bishop h3 मारेंगे g2 हैंगिंग है then a3 और rook a2 भी आ सकता है suddenly वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है भाई चैट में लिख रहा है मेरी गेम दिखाता तो नहीं गेस कर पाता वो तो है मैग्नस है कह रही अनीशा भाई नॉट इन द बर्मुडा पार्टी शायद बर्मुडा पार्टी है भाई आज कुछ क्रेजी स्टफ होगा भाई पार्टी में तो अनीशा कौन है भाई अनीशा भी जा सकती है क्या बर्मुडा पार्टी में apparently मैं I'm not sure if this is true information but जितने भी प्लेयर्स हैं सारे आ सकते हैं ऑफिशियल्स बट शायद लड़कों की एंट्री 2500 रुपए और लड़कियों की फ्री है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस दो ये क्या है भाई आई एम नॉट श्योर वो किसी ने चैट ने बोला था वेरीफाई करना पड़ेगा बट मे बी दिस इज ट्रू यहाँ पे क्या खेला डिड ही प्ले b4 बिशप कैप्चर ऑन d6 e कैप्चर ऑन d6 king to b6 okay हाँ because he wants the bishop on c6 in some cases okay got it this is a nice angle B4, I really like this c captures on b4 bishop capture on b4 भाई इतना ये सब हो गया भाई यहाँ पे हाँ ये तो अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ होगा यार ये तो ड्रॉ ही होगा this is a nice angle यार like this
चारों बोर्ड वाह है ना, वाह, ये है चारों ना बोर्ड भाई दिख रहे हैं। एंगल, अब आया ना मजा। हाँ, द बेस्ट एंगल भाई। अब वॉचिंग देखो भाई, 50 कलोल 50 किलो। स्ट्रेट स्ट्रेट भाई, नाइट क्लब वाला सिस्टम एग्जैक्टली। बट दिस इज वियर्ड मैन, लाइक हमें हमें भी जाना है यार बर्मुडा पार्टी में। हाँ, एंट्री क्या फी ही ओनली होता फॉर होगा, मेन। ऐसा क्या फन कर लेते होंगे भाई। आई डोंट नो, मतलब मैंने सुना है कि काफी कुछ क्रेजी होता है, ज्यादा रिवील नहीं करना चाहिए, बट अपेरेंटली मेरे को तो बता दे भाई बैक एंड में। ओहो क्या एंगल है भाई साहब, यार ये एंगल कहाँ था तब से? ये आज ही आया भाई, नया आज नया ही यार, ब्रांड इसमें न्यू। बेस्ट एंगल, चारों बोर्ड दिख रहे हैं along with the board, oh my god। यस, ब्यूटीफुल निहाल भाई। भी सोचा ये एंगल कहाँ था भाई? एक बंदा लिख रहा है चैट में, मैं लेडीज हूँ, मेरे को एंट्री दे दो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम्स भाई। इंडिया 3 का देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, we can keep this angle क्या, and we can go to the game directly। क्या लग रहा है प्लीज भाई? या वी कैन कीप है ना, द ये एंगल रखते हैं, बेटर रहेगा, and we can look at the हाँ। games। हाँ, बोर्ड थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, आई थिंक ऊपर की तरफ हल्का सा शायद, that will make it a bit more visible। Let's look at the game, please, bye। Yes, let's go. भाई सूर्या भाई खेल रहे हैं white pieces and he started with e4, c5, Sicilian is on the board, knight f3, knight c6, d4, c capture on d4, classical एकदम variation, and e5 खेल दिया है, knight को यहाँ दिया है e2 पे। Very interesting, I think ये knight let's see where the knight goes। I have never seen somebody playing this। या कुछ interesting नया idea लग रहा है, I mean, I have not seen this। Yeah, maybe a preparation भाई। Bishop to c5, knight to g3, d6, knight to c3, and ये है अभी position भाई बोर्ड भाई, काफी crazy। Yeah, the knight is ready to go to f5 यार, जब भी मौका मिले। And because black has played e5, आप f5 मारना नहीं चाहते, because कल को bishop c5 आएगा ना, bishop c4 from white, and then suddenly ये light squares बहुत weak हो जाएंगे। अगर ये black का pawn e6 पे होता तो it would be awesome, but the pawn is on e5, so knight f5 के बाद I don't want to take on f5। So this looks very interesting so far। Opening idea कुछ नया लाया है, I think सूर्या भाई ने। Let's see how the opponent tackles it। let's है ना, let's go to the next board। एंड चैट में किसी ने लिखा है कि भाई ये है भाई, क्या कहते हैं, बरमुडा पार्टी की वीडियोस है भाई, डालिए एक भाई उसमें, सागर भाई ने। हाँ भाई भाई, सागर भाई आज सारे सीक्रेट रिवील कर देंगे यार, मुझे लग रहा है। भाई मैं तो कह रहा भाई उधर चेस बेस इंडिया क्लिप से सब आ जाएगा रे, तुम इतना फोमो में मत रहो भाई, सब उधर डाल देगी भाई अमृता। अरे यार, फिर लोग कितना निराश हो जाएंगे यार, बरमुडा पार्टी का जो एक्सक्लूसिविटी है वो चली जाएगी। एनीवेज, और सबको ऐसा लगता है कि बरमुडा पार्टी क्रेजी है, देखने के बाद लगे हाँ ये तो नॉर्मली पार्टी है भाई, कब बता रहा भाई तुमको भाई, पर चेस नॉर्मल पार्टी चेस प्लेयर्स के लिए खतरनाक पार्टी होती है रे। ठीक है, समझ गया भाई, मैं समझ गया। वो नहीं होता जैसे आज तो 4 गोलगप्पे खा लिए, बहुत क्रेजी कर लिया, वैसा वाला सीन है इनका। बाकी पता नहीं, क्या पता भाई, who knows। I mean, we have all seen, what Carlson can turn into on his stream. So कई चीजें possible है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। Bishop to b4, a3, bishop capture on c3 with check, b capture on c3, c5, f3, d6, e4, knight c6, sorry e4, knight c6, knight to e2, b6, bishop to g5, s6, bishop h4, castles, queen to c2, and this is the position on the board. What do you think? मेरे लिए काफी complicated। Yeah, it is complicated। White के पास center बहुत खतरनाक है, but somehow I think White ने time बहुत ले लिया है ऐसे queen c2 ये सब खेलने में। So black should be fine। The only thing is how do you counter in the center? It's not clear because d5 पे e5 आ रहा है। So it's probably हम ही खेल देंगे ना पहले e5। I think e5 के बाद center पूरा closed है, so you have to be a bit careful। कल को फिर knight g3, knight f5 कल को आ सकता है and so on। But I think it can be played, e5 can be played। Okay। और e5 का प्रॉब्लम है कि d5 स्क्वायर भी जा रहा है, so वो भी एक स्ट्रेस थोड़ा बहुत रहता है कई बार, because knight on f6 is also pinned। बेसिकली चेस प्लेयर्स का नाइट क्लब विद डांस एंड स्टफ। एंड बाय द वे, अपने आप को मैग्नस से तो कंपेयर मत ही करो बाकी सब चेस प्लेयर भाई। मैग्नस कुछ भी करता है भाई, बाकी सब कोई कुछ नहीं करता भाई, सब बैठे रहते हैं घर पे। crazy। Yeah, but we might see that Carlson today, no? Who knows? वाह 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 वाह। वैसे आज है पार्टी क्या, पर कल होना चाहिए ना, कल है 4 तारीख। नहीं, आज ही है, कल रेस्ट डे है और आज शाम को पार्टी है, ताकि कल लोग सुबह उठे तो देख, इवन इफ दे हैव अ अगर वो द बेस्ट थिंग इज चैट कि तुम लोग वहां जा सकते हो सारे, अगर प्लेयर्स को फुल ऐसे पिलाओ उलाओ भाई कि अरे सर आप ही तो ग्रेट है सबको, क्योंकि अपने जो वो बच्चे वाले सेक्शन के हैं इंडिया भी में, वो लोग तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग फुल डे प्रिपेयर करेंगे, कुछ तो करेंगे वो लोग, ठीक है, और बाकी सब ऐसे पी के टून है भाई, मालूम चला।
भाई लेकिन ये ना कल रेस्ट रखा इसलिए कि भाई लोग कोई आराम दिक्कत से उठ नहीं पाए। भाई, पर अपने पास ज्यादा टाइम रहेगा ना, बाकी कल हैंगओवर में उठ रहे हैं भाई, सर दुख रहा है, क्या ही याद रहने वाला है भाई किसी को भाई। हाँ वो तो है, वो तो है। सही है भाई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम, दैट इज ऑफ अभिजीत गुप्ता भाई। लेट्स गो। भाई जो भी जा सकता है तुम लोग भी पहुंचो भाई, बता रहा मैं। अरे 25 रुपए की एंट्री किसी लड़की को भेजो, फ्री है भाई। ये क्या 25 तो बढ़ेंगे बचेंगे भाई। मैं लेडीज हूँ करके वहां चले जाओ यार तुम लोग। चलो लेट्स गो। हाँ अभिजीत गुप्ता जी का गेम देखते हैं। ही इज हैविंग द व्हाइट पीसेस। ही स्टार्टेड विद d4 knight f6 c4 e6 knight to c3 d5 c capture on d5 e capture on d5 bishop to g5 c6 queen to c2 s6। आगे तक मूव्स ही नहीं आ रहे, अब तो मूव्स आना ही बंद हो गए। हेलो आ जाओ। s6 bishop to h4 bishop to e7 e3 castles bishop to d3 rook e8 knight ge2 a5 castles knight a6 a3 knight a7 rook ad1 knight to e6 king to h1 and b5। king to h1 क्यों खेला, इनको पुश करना है क्या? वही वही आई थिंक याद है हमने सिमिलर प्लान देखा था व्हेन अर्जुन प्लेड f3 e4 वाला प्लान। हाँ सो किंग h1 साइड है, जब भी f4 पुश करोगे तो वो डायगोनल ओपन हो सकता है। एंड ब्लैक ने भी यहाँ b5 खेला है, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन दैट गेम आल्सो। सो ब्लैक क्वीन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहा है, व्हाइट किंग साइड पे या सेंटर में खेलने की कोशिश कर रहा है। रूक इज ऑपोजिट द क्वीन बाय द वे। जब भी हम f3 e4 खेलेंगे तो वो d5 खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड उस मोमेंट में रूक विल बी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड। So looks very decent for Abhijit bhai. I think he plays f3, makes a lot of sense. And यहाँ पे e4 g4 दोनों प्लान्स रहेंगे हमारे पास। ओके e4 भी खेल सकते हैं, g4 भी खेल सकते हैं, दोनों प्लान से भाई। g4 खेल दे तो ऐसे मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे फिर कुछ ऐसे दे नहीं, g4 खेलने में ऐसा लगता है क्या क्रेजी हो रहा है कुछ तो, ओ माय गॉड। e4 में हाँ ठीक है चलो कुछ तो हो रहा है क्रेजी, बट g4 खेल दिया तब तो क्रेजी क्रेजी। हाँ बट वो कम चांसेस भी है ना g4 खेलने के, लेकिन तो वो भी चक्कर है। दैट्स आल्सो ट्रू भाई। तो फिर g4 knight g3 knight f5 ऐसे खेल सकते हो। फिलहाल के लिए तो कुछ टैक्टिक्स भी हो सकती हैं, बट ओके विल सी व्हाट हैपेंस। ओके सो नाउ गो टू प्रोनेस गेम। प्रोने की थोड़ा शक्ल चेंज हो गया यार, प्रोने की आई थिंक अच्छा ओके थोड़ा टाइम लगता है भाई लोड होने में। निरंजन भाई बाबू के चैनल वाले इमोट्स ऐड कर, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई। तुम लोग चेस बोर्ड वोर्ड सब ले आए भाई अपने कलर का भाई, अभी ये भी चाहिए तुमको? बंदा भी उठा ले आया वही। knight f3 knight f6 c4 c5। अरे भाई कॉपी कर रहे हैं दोनों मूव्स। knight c3 एंड फाइनली कॉपी करना बंद। e6 g3 b6 bishop to g2 bishop to b7 castles bishop to e7 d4 c capture on d4 queen capture on d4 d6 bishop to g5 a6 bishop capture on f6 bishop capture on f6 queen to f4 castles by black rook fd1 bishop to e7 knight to e4 bishop capture on e4 queen capture on e4 and rook a7। So we are already have opposite color bishops here, तो उससे drawing के निशान already I don't like black's position यार उतना much। हाँ ये मतलब बहुत ही awkward place रुक है, ये knight का निकलना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। रुक तो I think c7 पे आ जाएगा, but I'm more worried कि ये light squares थोड़ी weak है। और लाइट स्क्वायर के इसके पास ये भी है ना भाई। हाँ Though for now black seems fine. I think white के पास space थोड़ी ज्यादा है, like c4 pawn की वजह से you can't play d5 b5. So if we can break through with b5 at some point, that might help. That would really help a lot. So that should be black's plan at some point कि b pawn के बदले c pawn exchange जाए, ताकि हम d5 खेल पाए। एक बार d5 खेल देंगे तो bishop g2 block हो जाएगा अपने आप, and suddenly हमारा bishop on e7 will come into the game. Got it. एंड अब क्विकली एक बार चलते हैं फटाक से वुमेन सेक्शन में, सारे गेम्स देख ले एक बार क्या चल रहा है, बिकॉज़ इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग भाई। नाइस एंगल। ओके एंड वी हैव द गेम्स ओपन ओवर हियर एंड वी कैन यू सी शी सेइंग अभी भी घूरी रही है भाई। है ना, अभी घूरी रही है ओपन को तान्या। लाइक दिस इज वेरी कॉमन। खेल क्यों नहीं रही है, खेलना दिस इज वेरी कॉमन फॉर चेस प्लेयर्स। Why do they do that भाई, ऐसे डराते हैं क्या? चैट तुम में से कोई ओटीबी खेला है क्या कभी? लाइक हैव यू प्लेड ओटीबी चेस एंड तुमने कभी घूरा है क्या? अपने का ओपोनेंट घूरा हो तुम्हें? ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ तो बहुत हुआ है भाई, बहुत लोग घूरते हैं भाई। मैं कभी घूरा नहीं किसी को, बट मेनी प्लेयर्स डू इट। यो वीके भाई क्या हाल है? लेट्स गो भाई, पहला मैच हम्पी वर्सेस नाना। नाना कब बच जाएगा बाजा, ऐसा कुछ होगा क्या? बोल रहे हो भाई? नाना ही है ना नाम भाई उनका? हाँ भाई, बट CSL2 आने वाला यार। अरे CSL2 का आने वाला तो ठीक है ना भाई।
D4 नाइट F6 अपने को क्या उसमें भाई CSL में अपना कोई रोल नहीं है अपने को क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने भाई ओके D4 नाइट F6 अरे वो उसी पे रहता है ना स्क्रीन पे कितना मस्त बोला सारे कैंप्स हाँ ये इस पे देखते हैं ना भाई तो सबसे पहले टॉप से शुरू कर रहे हैं भाई टॉप लेफ्ट में हम्पी जी देख सकते हैं आप लोग खेल रही हैं लेट्स सी व्हाट इज द पोजीशन D4 नाइट F6 C4 E6 knight to C3 C5 D5 E captures on D5 C capture on D5 G6 knight to F3 D6 bishop to F4 A6 A4 bishop to G7 S3 castles by black E3 knight E8 bishop E2 knight to D7 castles B6 knight D2 knight E5 and queen to B3 भाई ये ऐसा ओपनिंग तो मैंने आज तक कभी खेला ही नहीं भाई ये बेनोनी हो गया ना बस B5 प्रिवेंट कर दिया A4 से एंड नाउ व्हाइट्स प्लान शुड बी लाइक इन E5 नाइट थोड़ा स्ट्रांग है वी कैन एक्सचेंज विद नाइट C4 एट सम पॉइंट बट व्हाइट को ध्यान रखना है B5 ना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट B5 आएगा तो ब्लैक विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन द क्वीन साइड and slowly but surely the plan long term has to be E4 F4 and ये सारे pawns advance करना and H3 के बाद हमने avoid कर दिया है bishop G4 आना any moment so black cannot play bishop G4 bishop takes F3 हमने H3 starting में खेल दिया था and now the knight goes to D2 so इसके दो plan है एक तो exchange करना avoid कर दिया we do not exchange knights so now we can sometimes even put the bishop back and push this knight away with F4 तो ये भी खेल सकते हैं so ये probability भी हो सकती है. So I think this is Benoni and time-wise, I think Nana has more time on the clock, 6 more minutes. So she does seem to be familiar with the position. Let's see how Humpy plays because Humpy has struggled a little bit in some games in this tournament. So I hope she can kind of come back basically and show her true class. Yeah, she's the strongest player in the entire tournament, by the way. Women's section में she's top seed in among all the teams. So वो बस element missing है अभी. चैट भी क्या क्या लिखती है भाई नाना हारने के बाद ठीक है भाई चलो लेट्स गो भाई नेक्स्ट इज हरिका वर्सेस नीनो अरे ये सबका नाम ऐसा ही है क्या नाना नीनो अरे यार अच्छा नाम है यार ऐसा कुछ अच्छा हाँ अरे ऐसे एक ऐसा नहीं है थोड़ा सा नाना नीनो ऐसा ठीक है एनीवेज लेट्स गो भाई D4 से ओपन किया है नीनो ने D5 से रिप्लाई किया है हरिका जी ने भाई C4 E6 knight to C3 knight F6 C capture on D5 E capture on D5 bishop to G5 bishop to E7 queen to C2 castles E3 S6 bishop to H4 C6 bishop to D3 unpinning rook E8 knight GE2 knight B to D7 F3 B5 castles and bishop to B7 भाई क्या ही हूँ मैं एमिनेम बन गया भाई मैं लेकिन ये गेम हमने देखी थी ना अभी कहीं वेरी सिमिलर टू अभिजीत गेम देखा था है ना बस बिशप इज ऑन B7 एंड रुक इज नॉट ऑन D1 येट बट वेरी वेरी सिमिलर अदरवाइज है ना यस करेक्ट ठीक है सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम बस इतना ही हाँ मतलब एग्जैक्ट सेम पोजीशन है ना द बिशप इज ऑन B7 एंड आई थिंक कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं प्लान वही है E4 का प्लान है लेट्स लुक एट दिस गेम फ्रॉम टॉप विशाली's गेम ओके लैला ठीक है भाई Laila versus Vaishali bhai. Vaishali opens with E4, E5, knight F3, knight to C6, bishop B5, knight F6, castle, knight capture E4, rook to E1. What? Capturing is not good, right? Can't be good. It is all opening theory bhai, all opening theory. मैं तो मेरे को लगता था हमेशा गलत है ये. ठीक है नहीं it is fine. Knight capture E5, bishop to E7, bishop to F1, knight capture E5, rook capture E5, castles D4, bishop to F6 attaching the rook to E1, rook to E8, D5, rook captures on E1, queen captures on E1, B6, A4, bishop to B7, C4 and bishop to A6. ये सब भी थ्योरी है. Sahil, hello, Sahil. Sahil कौन है भाई? Who is Sahil? I was checking. बोला भाई मैं. I was checking कि मतलब वो ऑडियो डिस्टर्बेंस तो नहीं कोई आ रही, स्टैटिक नॉइज लोग कह रहे हैं. चार कोई आवाज आ रही है क्या? स्टैटिक नॉइज लगती है. अगर हॉल से आ रही है तो कैन म्यूट निरंजन भाई, if you can check once and update us. And यहाँ पे ये वाला पॉन बचाएंगे कैसे भाई? I think it's possible to save. But yeah, it is. But क्या knight D2, knight A3 सब possible है. Knight G2 खेल के, okay.
बट ये पॉन कभी पुश नहीं कर पा रहे हम लोग, क्या करेंगे? so रुक कहाँ से निकालेंगे? for example, let's say one plan could be knight d2, rook a3, rook f3, and then b3. Yeah, for example, ऐसे कुछ that would be possible. And I think this position is also equal. But I think the only question is कि कौन अपने पीस जल्दी untangle कर पाएगा? Like, can white quickly get the rook on a1 into the game? या फिर black will play queen f8, rook e8 and be absolutely fine. So also the knight on d6 is kind of misplaced. यहाँ पे कह रहा है इंजन में knight to a3 खेलने instead of knight to d2. Also looks logical. I think then the only question is कि what's your next move? Is it knight b5 का plan है? That's a bit interesting to see what the plan is actually उसके बाद. But I think knight also blocks the bishop. That's obviously one drawback there. Okay. Chato, आवाज हट गई ना? मुझे बता देना यार if the static is gone. And let's go. हाँ, Solly कह रहा है भाई it's fixed भाई. Awesome. Okay, let's go to the next game. That is Tanya Sachdev भाई. बीस भाई ने एक बंदे को immediately hide कर दिया भाई. भाई साहब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भाई. जीरो टॉलरेंस भाई. फ्यूचर में बताएंगे भाई उसको. आने दो भाई, आएगा उधर ही, मेरे चैनल पे ही आएगा ना. बताता हूँ भाई. Anyways guys, let's go भाई. e4, e5, knight to f3, knight to c6, bishop to b5, a6, bishop to a4, knight to f6, castles, bishop to e7. Everything is very standard in this game भाई. ये सब तो मैं भी खेलता हूँ. rook e1, b5, bishop to b3, castles, a4. कुछ तो आवाजें आ रही है मेरे को. हाँ कुछ तो आ रही है. Okay. Bishop to b7, d3, I think hall में कोई टीवी देख रहा है. knight a5, bishop a2, c5, knight bd2 and queen to c7. भाई आपसे ही आ रहा होगा निरंजन भाई. मेरे को आ रहा था ना, क्योंकि हॉल की मेरे को थोड़ी आवाज आएगी भाई. नहीं अरे होता हॉल में टीवी देख रहे हो यार. इट इज पॉसिबल. हाँ तो ये है भाई पोजीशन. देखो यहाँ तक तो ये मूव नंबर 7 तक तो मैं भी खेला हूँ भाई. हाँ तो this is very very normal. I think time switching क्या है? So Tanya has more time on the clock as well, no? Yes, Tanya knows this very well. Maybe her opening preparation. या फिर उसको पहले से आता है. क्या हंस क्या रहा है भाई? क्या हंस क्यों रहा है भाई? क्या हो गया भाई तेरे को आज? कुछ नहीं भाई. उसको पहले से आता है. क्या गलत क्या है भाई? Nice. ठीक है. So queen goes to c7 now and rooks connect कर दिए तानिया ने. And I think white's plan usually has to be d4 at some moment, but right now it's like कि पहले knight को I think they might even transfer it to g3. That's usually very normal, and then white can decide. So normal position लग रही है. I think nothing spectacular. I'm surprised they've used this much time. Usually इतना time use करते नहीं opening में. 12 move हुए अब तक. नहीं 7 मिनट में खेल दिया भाई तानिया ने. नहीं ओपन की बात कर रहा हूँ. ओपन यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? 24 मिनट्स यूज कर चुके हैं. उसने उसको तो करने दो, अच्छी बात है. करो तुम यूज करो भाई. पूरा टाइम वेस्ट कर दो. 1 घंटे खेलो अकेले. चलो भाई नेक्स्ट किसका देखना है गेम? बताया भाई. टीम बी में किसका गेम? एक बार निरंजन भाई आप एक करके शुरू करोगे क्या? And what is this move? Knight f1. Yeah, she played knight f1. Yeah, makes sense. Okay, knight f1 से आइडिया क्या था? यहाँ आने का. हाँ. Okay. Let's go भाई. This is Padmini Raut from India B. Let's begin by A. Okay, end game ही आ गया है, खत्म हो गया. Hey, what? Vantika is not playing. ना ये कल की गेम है. ये नहीं. कल का गेम है. कल का गेम है. Yes. हाँ ये कल का गेम है. Like what? इतना जल्दी गेम खत्म. 56 moves played. इनका 1 घंटे पहले गेम शुरू हो गया था, ऐसा लग रहा था. उनको टीवी देखा था ना यार. ये भी क्या? She's looking at the camera right now. Really? इतना जल्दी खत्म हो गया? उसको भी नहीं पता. Okay, let's go. Knight f3, ready opening. b5, g3. What? g3. Okay, bishop to g2. Knight to d7, d4, e6, s3, bishop to h5. Castles, bishop to e7, c4, c6, c capture on d5, e capture on d5, knight to c3, knight gf6, knight to e5, knight capture on e5, d capture on e5, knight to d7 and f4. ये अच्छा तो लग रहा है, पर
Yeah, so हम थोड़ा इसको खतरनाक e4 भी भी लग खेलेंगे रहा ना, like ideally I want to put the king on h2 and then है। also play e4 at some point, ताकि मेरे पास ही central pawn रहे. So it does हाँ, seem to be better for white, clearly. yeah, it is But clearly better for white, but isn't it double-edged हाँ, kind of double edge thing? तो है, double edge तो है, because Yeah, black also has play on this diagonal, yeah, हाँ, g1, a7 and so on. So yes, yes. double edge तो है. बट यहाँ पे जैसे आएगा किंग h2 पे, इट्स प्रीटी मच वेरी सेफ एक्चुअली। प्रतीक भाई कह रहे हैं बुलेट खेले वो. प्रतीक भाई, लेट मी रिआइटरेट, द मैच इज गोइंग इन चेन्नई, कश्मीर में नहीं है. देखो, इंडिया बी टुक रिवेंज ऑफ इंडिया सी, नाउ इंडिया ए वुमेन्स हैव टू टेक रिवेंज ऑफ बी एंड सी. भाई लेना पड़ेगा यार, आई थिंक लेना तो पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक अदरवाइज व्हाट्स हैपनिंग इज जॉर्जिया ना लाइक सारी टीम को उड़ा देगी भाई, एक ही टक 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 करके तीनों लाइन से. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए यार, वी रियली नीड टू विन टुडे एट ऑल कॉस्ट. एंड पीछे निरंजन भाई भी हंसते हुए, क्या क्यूटी. प्रकाश श्रीवास्तव सिंह, सब्सक्राइबर वाली मोड क्यों कर रखा है, बार बार अनसब्सक्राइब करना पड़ता है, ये क्या है भाई? What does that mean? Saga bhai said, sorry, please bhai. सागर Some वही chess, मैं पढ़ रहा, मैं भी वही अच्छा, पढ़ रहा था पढ़ो भाई. भाई, पढ़ो भाई. Sagar bhai said some chess players don't bath during the tourney for superstitious reasons. Is this true? Absolutely true. Even players like me are not like having a bath so that India keeps winning by India भी. तो 5 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ guys, ठीक है. Finally बरमुडा पार्टी के टाइम नहाऊंगा, ठीक है. honestly भाई, अगर भाई देखो यार, हाँ, of course you would win if you don't take a bath. आसपास के सारे लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे ना. So I think this is not really superstition, it's practicality if you don't take a bath. But usually I think नहाना चाहिए. I think it makes sense. भाई अपने आसपास वालों का ख्याल करें भाई, अपनी बंदी को इतना दूर ना भेजे कि दूसरों की बाहों में चली जाए वो. It's very important. ये क्या है भाई, बंदी बाहो आओ. आप चेस भाई प्लेयर of हो course भाई, भाई, you are imagine forever करो तो alone. मैच जीत के आओ भाई, तुम इतने खुश हो, your girlfriend like, oh my god honey you won today, yes I won, and देख स्लो मोशन में दौड़ रहे हैं भाई, गले मिले, उसको बदबू आया, उसे धक्का मार के तुम्हें भाग गई, तो it becomes a problem. I think it's better to take a bath. फाइन भाई, इनकी सुपरस्टिशियस गर्लफ्रेंड्स भाई. सॉरी क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं, इमेजिनरी गर्लफ्रेंड भाई. आज हम सारे, मुझे लग रहा है हम बरमूडा पार्टी पहले ही मना चुके हैं. तीनों हाई लग रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है 20 में और नहीं, तीनों हाई लग रहे हैं भाई आज मुझे. निरंजन भाई भी ब्रैकेट में हंस देते हैं भाई, कुछ बात लिटरली भाई. उन्होंने भी एक गेम खत्म कर दी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. 20 भाई भी अलग ही धुन में है भाई, हम अपनी बरमूडा पार्टी मना चुके हैं मुझे लग रहा है. गए पर चाय पार्टी. यस भाई निरंजन भाई. अब भाई हमने अभी तक, मतलब मैंने तो शेव नहीं किया भाई, आज मैं सोचा शेव कर दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, इंडिया भी जब तक जीत रही है तब तक नहीं करते भाई. ये लो भाई, ये आ गए अलग. And that is true, ये आ गए अलग भाई, मतलब इनके शेप, इनके चेहरे से बाल नहीं गिरेंगे तो भाई वहां निहाल सरीन पेलेगा भाई. बताओ लॉजिक क्या है भाई, बताओ भाई चैट, क्या लॉजिक है? इनके चेहरे पे 4 बार एक्स्ट्रा रहेंगे. होपफुली चेहरे की बात कर रहे थे तो भाई वहां से वो निहाल सरीन पेलेगा. व्हाट इज द लिंक, व्हाट इज द लिंक? तुमको नहीं समझेगा भाई. चलो एनीवेज भाई, तुमको समझ में आता है, तुम ग्रैंड मास्टर नहीं होते क्या? लेट्स गो भाई. मैं ग्रैंड मास्टर बनूंगा ना भाई, मेडिटेशन की वीडियो देखी ना आज. एनीवेज भक्ति के बाद नेक्स्ट गेम किसका है भाई निरंजन भाई? कैन वी मूव ऑन टू दैट गेम भाई? भाई इस पर डिस्कशन कर लिया क्या हमने? कर ही लिया होगा. नहीं भाई, आई थिंक दिस इज स्टिल द ओपनिंग पार्ट. ब्लैक ने टिपिकल सिसिलियन खेला है, एंड नाइट इज गॉन टू f6 एंड नाउ शी विल प्ले d6, बिशप e7, b6, बिशप b7, टिपिकल शेविंग स्ट्रक्चर, एंड बिशप e3, क्वीन d2, f3. ऐसे बहुत लॉन्ग गेम है, बहुत लॉन्ग गेम चलेगी. ठीक है, बहुत ही लंबी गेम चलने वाली है. एंड लेट्स सी टू द नेक्स्ट गेम, मैरियान गोमेज भाई. शी इज इन इनक्रेडिबल फॉर्म, एंड लेट्स सी भाई. गोम्स है क्या? सॉरी गोमेज कौन है भाई? सेलिना गोमेज फैन इन द चैट. बाय द वे, हर पोजीशन लुक्स अ बिट वर्स दो, स्लाइटली वर्स. हुआ क्या भाई ऐसा? I think space advantage took करें. Again रेटी से ओपन किया है भाई. knight f3, knight f6, c4, c5, knight to c3, g6, e4, d6, d4, c capture on d4, knight capture on d4, bishop to g7, bishop to e2, castles, bishop to e3, bishop to d7, castles, knight to c6, s3, knight capture on d4, bishop capture on d4, bishop to c6, queen to c2, and rook c8. भाई एकदम ही सेम देखा नहीं लग रहा है ये सब. अभी कहीं हुआ है क्या ये गेम? नहीं, ये नहीं हुआ. ये नहीं हुआ भाई. बात कर रहे हो भाई. rook a1, knight to d7, bishop to g7, king capture on g7 and b4 and b6. भाई ये हुआ है ना जस्ट, अब किसी का तो देखा हमने ये गेम ऐसा ही सिमिलर. अभिमन्यु पुराणिक. यस करेक्ट. यस
अच्छा, ओके 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 ओके। वही मैं सोचूं यार, सर टिक्कू ध्यान दे यार, क्या कर रहा है? भाई मैंने तो बाल काट दिए ना अपने दाढ़ी के, ये अनफॉर्चुनेटली। नेशनल मास्टर है, इनको याद रहने चाहिए कम से कम 1000 गेम या उल्टा मेरे को याद रह रहे हैं भाई। भाई मैं पार्टी बना के आ रहा हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली, आई हाँ अपोलोजाइज। भाई, कोई बात नहीं भाई। भाई इस पोजीशन के बारे में बताया भाई, साहिल भाई आपको कैसा लग रहा है ये पोजीशन? आई थिंक दिस इज अ गुड वर्जन फॉर वाइट किया, बिकॉज पूरा इन्होंने स्पेस गेन कर लिया है, एंड बिशप भी एक्सचेंज कर लिया है G7 का। ब्लैक किंग इज आल्सो अ बिट वीकर, एंड व्हाइट ने B4 C4 सब खेल दिया है। सो ऑल्दो ये पोजीशन यूजुअली बेटर फॉर व्हाइट होती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू कन्वर्ट। मतलब ब्लैक विल ऑलवेज बी एब्सोल्युटली सॉलिड। सो आई थिंक लॉन्ग गेम वेर मोस्ट लाइकली अ ड्रॉ। And एक बंदे ने पूछा, will changing Nihil's name to Nihal on the board affect his performance negatively? It might guys. We'll find out today कि negatively होगा positively होगा, but I think it will affect his performance changing the name. What do you think? Beast भाई तो ऑन स्ट्रीम शेव करेगा, सुपर चैट लेगा, उसके बाद शेव करेगा। अरे ये क्या है भाई, सब पढ़ लेना है भाई जबरदस्ती। भाई पता है, मैं एक चीज तो यार देखो, जब मैं स्ट्रीम पे होता हूँ ना, कभी मान लो जैसे मैंने आज स्ट्रीम करा, कोई सुपर चैट नहीं आई, अगले दिन स्ट्रीम करा तो कोई भी नहीं आया, तो लगता है कोई तो आ जाए। तो मैं ऐसे ऐसे ना सटल में बोलता हूँ कि मतलब ऐसे, अरे यार सही में भाई चेस में तो गरीब ही होते हैं भाई। BeastStats लाइक, अरे भाई कौन 50 सब दे रहा है भाई, कोई तो दो। अभी क्या भाई, दो सिल्वर फिक्स चैट में है क्या, तुम दो यार। बिल्कुल क्लियरिटी है भाई एटलीस्ट चैट में भाई। भाई मेरा चैट का रिलेशनशिप अलग है ना, वो उनको भी कुछ चाहिए रहता, पिज्जा चाहिए रहता, मेरे मांगते मैं दे देता हूँ, उनको बीच भाई चाहिए रहता है मैं दे देता हूँ, मेरे को जब चाहिए रहता है मैं मांग लेता हूँ। तो एक क्लैरिटी है, हमारा एक रिश्ता अलग है भाई, आप नहीं समझोगे। फिर साबुन भी पहुंच जाती है घर पे भाई। साबुन भी पहुंच जाती है, परफ्यूम भी पहुंच जाती है, सब पहुंच जाता है भाई, अलग रिश्ता अलग चलता है अपनों का लेवल का भाई, यू विल नॉट अंडरस्टैंड भाई। ये लो भाई, ये लो कर लो भाई, रोस्ट ही कर लो भाई। जस्ट बिकॉज आई एम स्लीपी डजंट मीन 1000 गेम याद नहीं है, 900 याद है मुझे। 900 ही याद है भाई आपको, पर जो इम्पोर्टेंट 100 है वही भूल गए भाई आप। आपको बस प्रखर और बस से समय रहना है कि गेम्स याद है भाई। भाई जीते ना भाई, जहां भी खेले जीते ना, बस वही इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, E4, E5, knight F3, knight to C6, bishop to B5, A6, bishop to A4, knight to F6, D3, B5, bishop to B3, bishop to C5, C3, bishop to B6, castles D6, H3 and H6 and bishop to E3 भाई, ये खेला गया अभी तक भाई। मेरे पर ये आई डोंट लाइक दिस, यहाँ पे बिशप को C2 पे होना चाहिए आई फील। क्यों C2 बेटर क्यों है? ये जब भी पुश करेंगे हम लोग, ये जब भी खुलेगा तो ये ऐसे डायगोनल भी है मस्त, इधर आके बकचोदी कर सकते हैं। क्या कर सकता है? Can we repeat please? We can do, विज भाई आवाज नहीं है, कैन वी रिपीट? क्या कर सकते हैं? we can like, वो क्या कर सकते हैं? वी कैन लाइक, ठीक है आगे बढ़ते हैं यार गाइस। निरंजन भाई यार मेरे को फायर मत करना यार, आई लव यू भाई, गलती से कुछ तो निकल ही जाता है यार, आई एम सॉरी। चलो लेट्स गो भाई, आगे आगे इन्होंने रुक क्या लाया, चेस नहीं होने वाली। कैसल इस साइड ही होगा भाई, कैसल की साइड ही होगा भाई। Suddenly BeastStats is very interested in analysis. Niranjan bhai, over to you. I will be back in 5 minutes bhai. I think I need a break. Yeah, thank you bhai. 20 भाई अब जाके ना बाथरूम में जाके शीशे में कम से कम 20-25 गालियां देख के आएंगे भाई। भाई साहब। Anyways, so I think Divya's game looks very interesting. Black is of course, white is hoping कि black will take on E3 and F takes आएगा भाई, and then the F file will open up and the bishop will B3 is also pointed towards F7, so looks very decent. So can we go to the next game? आज डन हो गया ना, so let's go to the open section now again and देखते हैं कि एक सी बाकी है ना, देखो CC कैटेगरी ना। बाबू रिकवरिंग फ्रॉम यस्टरडेज बर्मुडा पार्टी हैंगओवर। भाई वो तो बर्मुडा पार्टी का वो था ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, छोटा बर्मुडा पार्टी, असली तो आज है। मेरे मुंह से निकल गई। ईशा करावडे अगेंस्ट यानोवा यूलिया। ओके, सो they've actually reached the end game and to be honest, बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है यार, एंड ऑल्दो व्हाइट शुड बी टाइम इट बेटर आई थिंक, बिकॉज रुक D1 पे ऑलरेडी है,
the a5 pawn can be a weakness, but overall I think should be equal. I think because सारे piece rook can go to d8 now at any moment and it should be equal. Waiting for 1b3 by AD. भाई वो नहीं होगा यार. अक्षत भाई का बदला incoming and टिक्कू बोला सुपर चैट नहीं आती. अरे ये क्या है भाई, मजाक कर रहा हो यार. How is Anish and Magnus doing? We'll check those games as well. Nanita, by the way, the hero of Team C, she's playing Heather Richards from Australia, and the position seems to be it was a French defense. Bishop d3 played. Very interesting choice. यहाँ bishop f3 डालते हैं usually, and then you say to black कि भाई तुम्हारा diagonal पे मेरा bishop है. बाबू doing? अरे नहीं भाई, I don't think so. बाबू उतने wild है भाई. बाबू आई थिंक शीशे में गए और 50 गाने देख के आए भाई. सारी वो अंदर की वो फीलिंग्स उन्होंने निकाल दिया भाई अभी. Rukesh game please. Yes, we'll go to Rukesh game very quickly. So I think now Rook is coming to d1 and black का सिर्फ एक पर्पस है, bishop on c8 डेवलप करना है. एक बार वो bishop डेवलप हो जाएगा ना, then black will be fine. But for that reason I think white is at least trying to put pressure. But the issue is कि I can take your bishop pair at any point as black. Bishop f3 is in my reach. I can grasp it and take it. So वो एक stress तो है. But otherwise, एक बार bishop डेवलप, black will be fine. So Heather Richards well trying to equalize for now. Let's go to the next game. खुद को थप्पड़ मार रहे होंगे. हाँ भाई. और ये तो कल की थी आई थिंक. पैसा काटो. पैसा नहीं काटना भाई. आई थिंक थोड़ा वो होता है ना, ऐसे डांट पड़ती है भाई, रिप्रिमेंड करते हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार, दिस इज नॉट डन. कारुआना इज क्रशिंग परम. ओ माय गॉड, कारुआना में किसकी आत्मा आ गया दोबारा? कारुआना की आ गई क्या? Okay, Vishnawala is playing against Nguyen Thu Giang. Okay, and we have this position here. Vishnawala. Okay, we have the Catalan opening. Takes on c4, queen a4, picks up c4. Babu calculating his downfall in net worth after this statement. नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा यार. बाबू ओपी भाई, बाबू ओपी. My secret sources tell me Babu is reading chat and waiting for people to forget. Don't worry, yaar. Aisa to, of course, we will not let chat forget. And by the way, I think white does seem to be slightly better, right? Because c5 for control mein hai. I can also play knight d2, knight b3, knight c5. And ye bishop on c6 thoda sa na, awkward sa hai. It's waiting for the knight to come to e5, exchange stuff off of g2. But for now, black is not. The knight on b8 and the queen on c1 attacks the bishop. So you can't even develop it until you move the bishop. So I think thoda sa slightly better for Vishwa here. And hopefully she can strike. I think एक game pending है सहिती की, I think. क्या अभी देखेंगे भाई? अभी देखेंगे. Sahiti is playing Fan Nguyen Maichi. Okay. So Rook e8 played by Sahiti, and we have this typical opening where white has the bishop pair and black has this solid structure. However, the bishop on d2 is not doing much as of now, so it will take one more move for it to develop on a good square. Maybe g5, f4, one of these squares it will go to. And right now, threat is knight takes c5, winning a pawn. So yeah, white has to decide: do I defend with the bishop to f4? Do I take on d7? Or do I risk it with f4, which is of course very double-edged? Babu unemployed again, and yeah, Babu is always employed. Babu is back, bhai. Babu is back. I'm back, guys. Yo. Nothing happened, भाई. सब कुछ भूल जाए भाई. कुछ नहीं हुआ यहाँ पे. Let's go भाई. अभी next game किसका भाई? साहित्य के गेम में क्या चल रहा है बेटे? डबल एज मैंने सुना. यार लेकिन यार असली मजा तो पहले ही आया था यार. वो तो मानना पड़ेगा भाई. ये क्या भाई? सबको लाइक कर दे यार स्ट्रीम को फटाफट भाई. Let's reach to 200 लाइक पहुंच गए. मैं पहला गिव अवे क्वेश्चन पूछते हैं भाई आज का भाई. हाँ, so let's do one thing. हाँ, 2 मिनट करते हैं. We will have to go to the open section now soon, yeah. And Arjun by the way कहाँ देख रहा है? Isn't sitting like this? वो कहाँ देख रहा है भाई वो? I don't know. सोच रहे हैं वो. Can we have the full screen for a moment? I'm curious. What is? निरंजन भाई 2 मिनट में आ रहे हैं. उसके बाद फुल स्क्रीन हो सकता है. तब तक हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा बाकी सारे गेम्स भाई. हाँ, डिस्कस तो बहुत कुछ करना है यार. हाँ बताओ, ओपन सेक्शन में किसका मैच देखने का मन है आपको? ओपन में जाओ भाई. We can go start from A section again. Let's go to Hari Krishna's game. Okay, let's go to Hari भाई का गेम. मुझे हंसी आ जा रही है यार. अरे रुको यार. I can't control it. तुम फंसाओगे यार मेरे को. It's as if you know जैसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही वैसे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ किसी से. यार मैं थोड़ा फ्लो में आ गया था यार, एकदम मजे में भाई.
हरी भाई का गेम मिल नहीं रहा है मेरे को। मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया। ये रहा भाई, हरे कृष्णा और अबू सतारो भाई। ओ ये क्या पोजीशन है भाई? थोड़ा सा कैन पीछे वी करते हैं। फ्लिप द बोर्ड एंड सी इट जहां तक हम देखा था? यस। सॉली यहाँ पे भाई शांति नाइट रखो, मुझे मॉड बना दो यार यहाँ पे। नाइट B2D2, नाइट टू अच्छा G6 मॉड हूँ। खेला है, D4, नाइट टू H5, D capture on E5, and this is the position on the board भाई। So the bar says it's completely winning for Hari, yeah? Yeah, and Let the me have move a here to play is G4 actually. let me open Hari's game on chess.com once, ताकि I can have a better look. अच्छा। Yeah, so I think I wanted to see कि पीछे हुआ कैसे. Can we go back once and see how this happened? Because I think वो चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं है. Okay, let's go और पीछे भाई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक पता था आपको? हाँ यहाँ तक सही है, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही था। कैसल किया इन्होंने, A5 खेल दिया था, C3 खेल दिया था, ये देख चुके हैं हम लोग। बिशप टू A7 ड्रॉप हो गया था, एंड हियर ही प्लेड A4 भाई। यहाँ पे G5 खेला, बिशप को पीछे भगाना है कि क्या करना है आप डिसाइड कर लो। तो डिसाइडेड बिशप टू G3 खेलने का, एंड नाइट टू E7 प्लानिंग टू प्ले नाइट टू G6। तो क्वीन B3 खेल दिया इन्होंने, डबल अटैकिंग द पॉन ऑन F7। यहाँ पे फिर इन्होंने कैसल कर दिया भाई, रुक से प्रोटेक्ट कर लिया उस पॉन को और किंग से भी। एंड नाइट B2D2, नाइट G6 एज प्लान्ड, D4 एंड नाइट टू H5 भाई, अटैकिंग दिस बिशप भाई। And यहाँ पे खेला D capture on E5, and this is clearly winning for Hari Krishna. All he has to do is play G4. But G4 के बाद what if knight E1? What's the idea? Yes, I will show you. Don't worry. Knight to E1 अगर खेला उन्होंने, then there is D captures on E5 simply. And ये बिशप का कुछ फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अब इसके बाद आप क्या खेल सकते हैं? Any logical moves that you have? I know you don't have, so I will give you one. Knight to D3. ठीक है। एंड यहाँ पे स्टनिंग नाइट कैप्चर ऑन G3 भाई, बिशप पेयर से वो कर दिया भाई कि खत्म ही है। अब बताओ आप किस कौन से लेना पसंद करोगे? एज टुवर्ड द सेंटर, एज कौन से भाई? F pinned है भाई। यस, करेक्ट जवाब साहिल भाई। यू आर पेइंग अटेंशन व्हिच इज वेरी गुड। ओके, तो एच पॉन से मारा इन्होंने, एंड नाउ वी कैन जस्ट प्ले दिस स्टनिंग मूव H5 H4, ओपन अप द पोजीशन, क्वीन आ जाएगा, नाइट आ जाएगा, एंड दिस इज लुकिंग वेरी बैड फॉर अब्दुल सत्तारो, एंड दिस इज एब्सोल्युटली विनिंग फॉर हरि कृष्णा गाइस। Okay, so what did he actually so लेकिन आपने नोटिस किया चैट, अब्दुल सत्तारोव पूरा कॉन्फिडेंस से आके बैठा रे. I think he knows he's screwed up, but he's trying to act confident. Like मतलब he's like ठीक है भाई, एक्टिंग कर लेंगे, एक्टिंग स्कूल में थोड़ा सीखा था. If I act as if कुछ हुआ नहीं, शायद कुछ ना हो. पर ऐसा होता नहीं है चेस में गाइस, as we know, and this is terrible for Abdul Sattarov. This game is over, guys. This game is over. Hari Krishna is not messing this up. Let's go to the next game. That is of Vidit Gujarati versus Yakubo. Yakubo भी है ना इनका नाम? हाँ, याकूबोव, yes. याकोवो नोदरबेक। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। रुक इवन खेला यहाँ पे विदित गुजराती ने, बिशप टू G4, बिशप टू E3, E कैप्चर्स ऑन D4, नाइट कैप्चर्स ऑन D4, सेइंग कि एक्सचेंज करोगे क्या आप बिशप्स, एंड ही ऑब्लाइजेस, बिशप कैप्चर्स ऑन E2, क्वीन कैप्चर्स ऑन E2, रुक टू E8। इस लाइन में ले आया है रुक को कि कभी कुछ हो तो हो। ठीक है, यहाँ पे F3 खेल दिया है, प्रोटेक्टिंग द पॉन ऑन E4, C6, रुक AD1, नाइट टू D7, नाइट टू D7 का आइडिया कुछ भी नहीं पता किसी को, नाइट टू C2, बिशप कैप्चर ऑन C3, B कैप्चर ऑन C3, डबलिंग अप द पॉन्स ऑफ द व्हाइट, एंड क्वीन टू E7 इज प्लेड, एंड रुक टू D4। रुक टू D4 क्यों खेला भाई? आई थिंक आप बता सकते हैं, आप बहुत सही बता रहे हैं अभी। रुक टू D4 इसलिए खेला है कि ये डबल अप करेंगे, and then we will attack this pawn. तो रुक D2 क्यों नहीं खेला? लेकिन रुक D2 में भी डबल कर सकते थे। डबल तो कर सकते थे, पर फिर फील नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा, फील कैसे? रुक D4 में फील कैसे आ रहा है? लेकिन रुक D4 अब देखो तो यार, क्या क्रेजी मूव है भाई। बट बिशप ब्लॉक हो रहा है, नाइट का स्क्वायर जा रहा है। आई वुड रादर प्ले द रुक ऑन D2 नो, एंड देन ताकि मेरा D4 स्क्वायर अवेलेबल रहे। आपको अगर इतना समझ में आता, GM नहीं बन जाते आप। ये क्या है बनना साहिल भाई? समझ नहीं रहा, तभी तो पूछ रहा हूँ भाई।
ये वाला पॉन भी बचा रहे हैं ना फिर हम C4 वाला। बट C4 पे अटैक नहीं है भाई, अरे क्वीन से अभी बचा अटैक हुआ आ जाएगा ना यार, ये नाइट खेल देंगे तो क्या करेंगे फिर हम लोग, नाइट वो B6। ऑलरेडी क्वीन से बचा हुआ है भाई। बीस भाई बताओ ना यार, रुक D4 why is it better? ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा भाई। ठीक है भाई, कर लो भाई। भाई यहाँ पे एक अच्छा रुक लिफ्ट है ना यार, वाइट बट टू रुक लेफ्ट लिफ्ट और टू राइट तो जा ही D4। नहीं सकता, लिफ्ट क्या करेगा वो? लिफ्ट तो कर ही नहीं सकता ना, दैट इज द इश्यू। आपको नहीं समझ में आएगा भाई, रहने दो भाई। बाद में वीडी इज 20 मिनट्स, आई थिंक वीडी जब चेस अच्छा खेलता है तो टाइम पे हमेशा पीछे रह जाता है यार समहाउ। यहाँ अभी 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 तो बता दो अब रुक D4 क्यों है भाई, ये क्या है? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता यार, आई एम नॉट किडिंग। ठीक है भाई, आई एम नॉट सो श्योर। I think maybe it was preparation for 95 की C4 attack, but C4 for now is defended. So I'm not really sure what the plan is. I think because the engine says rook D4, that's why he played. अच्छा, engine says rook D4 क्या, मैंने देखा नहीं। Yes, it says. It definitely doesn't say rook D2 तो भाई। Yeah, but rook D2 looks more logical to me. Like it looks somehow normal. Rook D4 also feels logical. The idea is कि मतलब black does not have a piece to attack this rook. So if you can't attack my rook, then maybe putting it on D4 is better because, as mentioned, C4 point defend करता है, and also gives me the option of tripling up pieces like rook D1, queen D2. Now I can triple up pieces on the D6 pawn. E4 pawn hanging. E4 pawn is not hanging, but it is protected by the F3 pawn, bro. ठीक है, let's move on to the next game. Next game किसका है भाई? Next is the game of Arjun. Arjun तब से ऊपर हवा में ही देख रहे हैं। लगता है कोई मक्खी वक्खी दिख गई है कि आज तो मार के ही रगड़ूंगा। Okay, this is the position right now. अटैक कर सकते हैं D6 with queen to D2 also. Yes, correct. एकदम ही सही जवाब दिया भाई आपने, बहुत ही उम्दा जवाब, मजा आ गया श्रीनाथ भाई। Why India isn't playing at the designated spot? I think they have removed that designated spot. Earlier it was like a fixed spot रहेगा उनका, उन्होंने हटा दिया वो chat. They have removed it now. हरी lost advantages. क्या बात कर रहे हो तुम यार? 20 भाई ने गारंटी दी है he will not mess it up. एक सेकंड, नहीं ठीक है, हरी still better. हरी still better, right? Okay. हाँ. So can we look at the game quick? अच्छा, okay, knight C7 आ चुका है, and I don't like the king on E7 as such, and I also feel C6 pawn is a bit weak. But I think because queens are not on the board, it should be okay. But यहाँ पे chat एक प्रॉब्लम तो है, black का double pawns. जो F6 F7 है ना, ये पूरी game में white will have a queen side majority. So it automatically becomes more likely कि he will be the one to create a pass pawn. Any sort of pawn in the game is already lost. So black को थोड़ा compensation के लिए खेलना पड़ेगा. Like you cannot exchange everything. So white is tiny bit better clearly, yeah, and long-term advantage. It's not a short-term advantage. Long-term advantage रहेगी पूरे end तक. So Arjun के जीतने के chances are very, very minimal here. So I think I expect a draw in this position. I expect Hari to win. And video game, of course, it's very complicated as of now. Looks equal. So फिलहाल I think 2-1 चल रहा है India के favor में. Let's go to Sasikiran's game. Let's go, भाई. Petition to replace the FIDE logo on top with Tickoo's beautiful face. Thank you, yaar. Okay, let's go to this game, भाई. इस गेम में क्या हुआ अभी तक? Bishop has gone to H2 now. Okay, we can play Queen C7, Queen E2, B6, Bishop F4, Bishop B7, Bishop H2. And usually वही है, White has put his pawns on E4 and C4. And अगर मेरा बस चलता मैं D5 या B5 खेल के I would break through basically. But अभी दोनों रोक के बैठा है White. So there is no way for me to liberate my pieces yet. So what I can do is develop my pieces. That's why rook C8 makes a lot of sense. Now White can play one of his rooks to C1 or D1, and then Black will play rook E8 or rook D8, and you will develop as many pieces as possible. And then slowly I can even move the queen to B8 and then 8, and then I can play D5. Even that maneuver is possible. So there are many plans here. Let's see कौन सा वाला black choose करते हैं. Let's see, भाई. Sasikiran, of course, Sasikiran has the white pieces, by the way, so we want the white to win. I think हमें white से analyze करना चाहिए, and
Yeah, I think पहले rook develop करने चाहिए. Rook has to come to c1. I think automatically looks logical because queen is on c7. हाँ. और कुछ है? नहीं, और तो I think looks very. अभी तो piece develop करने हैं. And Okay, then let's quickly go to the game of Gukesh. And Gukesh का गेम यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? Gukesh looks very focused. Bhai, he is on the verge of doing 6-6 by. Yeah, and the game looks very sharp. It looks very, very sharp right now. So it looks like a result will happen in this game, chat. It's not the kind of position जहाँ पे लोग हाथ शेक करके या कुछ भी शेक करके ड्रॉ कर लेते हैं. This is like a very sharp position. Both sides attacking. Black ने pawn b4 खेल दिया है. White already has opened up the g file, and the rook is pointed towards g7 straight. White also has the rook on d1, opposite the queen on d8. So tactical possibilities भी हैं. The bishop can come to c4, and यहाँ पे rook double भी हो सकते हैं. Rook g2, rook g1 या rook g5, rook g1. So यहाँ बहुत प्रेशर है दोनों पोजीशन पे. White का king भी c1 पे काफी ओपन लग रहा है. मेरे को ये लग रहा था भाई, एकदम लॉजिकल मूव बाय नाइट. हाँ, looks logical indeed because you want to. Black का defender है chat. ये exact position similar, I think. Actually मेरे course में भी almost similar position. You play knight e4 to basically exchange this knights तक, क्योंकि knight defender है king का, and they can start to launch an attack basically. Yes, but correct. the problem is white king on c1 is also a bit, it's a bit open right now. So we will have to spend a tempo or two time to safeten up the king. But then black will also play bishop e6 and attack a2. So it is not a one-way street. Like bishop e6, rook b8, b3, and suddenly the king opens up. So यहाँ पे एक tempo important है. One move could mean the difference between a win and a loss. मैग्नस ब्लंडर चल रहा है चैट में भाई. मैग्नस मैं चेक करता हूँ मैग्नस का. अभी इसी गेम पे देखते हैं. Gukesh looks. This is a nice camera angle. I like this. I think we can have the board. है ना? हाँ, we have the board as well. And awesome. let's see भाई कि क्या होता है भाई. I want to see इनका opponent क्या खेलेंगे. Will he capture with the knight or will he play something else? नहीं, मैग्नस गेम इक्वली है भाई. इक्वली है. चैट बस मजे ले रही है. Okay. Player cam equal to audio issue. Apparently player cam के टाइम पे कुछ audio issue आ रहा है. Interesting. By the way, मैं सोच रहा था कि क्वीन कैप्चर करूं. ठीक है, क्वीन से कैप्चर करो, बट द इंजन से इसकी क्वीन से मत कैप्चर करो. यू कैप्चर विद f4. Yeah, so once we take with the pawn, I think एक तो you have this e5 threat also now, always. So ये rook on d1, that is one tactical possibilities. That's the first thing. And also queen takes के बाद ना, this queen can be harassed. For example, मैंने पहले ही बोला कि rook b8 and this is black's plan. Yeah, rook b8, bishop e6, b3 and so on. So black will probably play rook b8, save his rook. अगर queen से मारोगे तो, and then he will have bishop b7 to attack your queen, yeah, whatever it is, and ये queen e4 पे will be harassed. Rook e8 भी है black के पास to attack the queen. So it's like instead we can take with the pawn, and this also frees up our second f pawn to move off the board. कल को f4 e5 we can use these pawns, yeah. So I think it's better to take with the f pawn, and हमारा bishop on e2 भी खुल गया, so it can also be used at some point. Okay, got it भाई. मुकेश, what a beauty लिख रहे हैं भाई chat में. ये भी सही है भाई. Let's go to the next game. गुकेश के बाद किसका है भाई? निहाल सर next पीछे ही बैठे हैं. अनिशा रॉय saying what? क्या हो गया भाई अनिशा? भाई आर्मेनिया के चेस खेलना कंपलसरी होता है. It is included in every child's curriculum. Oh wow, that's awesome if that's true. Oh wow. ओलंपियाड इसलिए वो 3 बार जीते हैं ना? जीते हैं क्या? I'm not really sure about this. I have heard. तो कल कोई चैट में बोल रहा था कि 3 बार जीत चुकी है आर्मेनिया की टीम. By the way, Nihal's position, chat, I think opponent has double pawns. That's clearly in Nihal's favor. No, but you don't think it is actually there on the board? Yeah, but the issue is the c6 pawn, and that is a very, very weak pawn. So if black can somehow put his bishop on d4, let's say, and play the move c5, that would give black a slight edge. I feel like ऐसा कुछ हो जाए तो slight edge मिल सकती है. But I don't think कि with the active rook on e6 and this, the game should be equal. So and they have a lot of time on the clock as well. So I expect a draw. सीधे ये rook c8 इसको protect कर लिया फिर. हाँ, so even if you play rook c8, let's say, आपने rook c8 pawn defend किया. Now I think I have my second rook. I'm not sure if I double up or do I play rook d1. Both look tempting. Okay. The idea being to come to d7 now. And with the active pieces, it's like, matlab,
like even though white has these double pawns, it's only a slight inaccuracy, right? It's not a big deal. And pieces are active hain. So I think, and now I can't play this bishop d4 idea. So clearly I think white is fine and it should be equal. So I expect a draw in this game. Oh. Okay. अच्छा, Magnus ने blunder किया इसलिए. Magnus blunder करता है तो it's headlines यार. So you know when you say Magnus blundered, you better be sure because ऐसा बहुत rare case है भाई. You know it's like मतलब 20 से गाली निकलने के साथ चांस है और मैच blunder करने का है भाई. ठीक है भाई. Okay, let's go to the game of next. Yeah, we can go to board 3. Adiban. Adiban the beast, guys. Okay, so Adiban has the white pieces and he has just played the queen now to f3. Now, obviously intentions are clear, king side pe khelna hai, but I mean, like black will always have knight e4 ideas here. And if black has knight e4 ideas, he should be absolutely fine. So I don't think Adiban will succeed in any sort of attack here. But yeah, I mean, it will be a long game though. I think it will be a long game. The bishop on d2 not making a great impression also. Black still hasn't developed the knight on b8 and it's not easy to develop that knight because d5 pawn is also attacked. So agar knight c6 kheloge to d5 pawn can be. Yes, he sacrifices an exchange on b4 with rook c4, rook takes b4 someday. And in that case, the a pawn can run. But otherwise, these pawns are held together. a4, b5, rook gaye. And white's extra pawn on d6 means something. So only white is pushing here. But on the other hand, it's like, you know, black has control over both the open files, E and C. जैसे ही rook खेलोगे मैं trade कर लूंगा. And once the rooks are traded off, it's a dead draw because I'll put my king on c6 and you can't do anything here. So that's why I think this should be a draw. 99% it should be a draw. Got it, man. Got it. I think कुछ lag हुआ था यार. Lag थी बहुत तगड़ी. Lag हुई थी हमारी watching off हो गई भाई, कोई बात नहीं. Oh, no worries, no worries. So I think this should be I think a draw. So far team B में this looks like a dead draw to me. Adiban also equal. Then you have you know, Nihal also equal. So two draws, one game equal, and then first board pick, you know, Guki is the one who has to strike. Yeah. Seems like, by seems like. And Hari Krishna का Hari Krishna game चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या चल रहा है. Oh, he has played. Oh, this happened. No, this not happened. Okay. He has directly captured on g3, h captured on g3, and now he has d captured on e5, and almost, but वही idea वही I think, but the move का order अलग है. Like. And just यहाँ पे ये push करना है भाई इनको, according to the Indians by. Because right now the threat is g4 and the knight on d2 is hanging, right? So it's like, you know, g4 is a real threat. Like मतलब piece ही जाएगा सीधा. And somehow is a queen on b3 है, what is it really doing? Not much. Like कर क्या रही है वो, ऐसे अटैक किया था वो, तुम्हें रुक से बचा लिया भाई, अब क्या आइडिया है? हमने बिशप डेवलप ही नहीं किया तो तुम अटैक क्या कर रहे हो भाई? तो वही है ना, बिशप यहीं से डेवलप्ड ही एक तरह से देखा जाए तो. हाँ, exactly, वो एक ही मूव में कहीं भी जा सकता है. So exactly, so vice position is very awkward. Fine now. Okay, thank you, Lakshya bhai. So this is good for Hari, it seems like. And if Hari wins, I think that should be, you know, great sign for Team India, right? Because this was the guy who was the most dangerous guy. And if Hari wins, तो मजा आ जाएगा भाई. Hari be like भाई गुकेश ने वीडियो क्रॉस कर दिया भाई, मुझे भी ना कर ले. जल्दी से रेटिंग बढ़ा लेता हूँ भाई. नहीं, ये तो दिमाग में नहीं रहता होगा यार किसी का. रहता होगा यार, हल्का फुल्का सबकॉन्शियस रहता होगा ना. Like they also want to make sure कि like अगर आप इंडिया नंबर 2 रहे हो, 3 रहे हो जमाने से, you want to maintain that somehow. I feel like personal competition रहता होगा थोड़ा कहीं ना कहीं subconsciously. I'm not sure, but yeah. Okay. अगर इंडिया A versus इंडिया B हो, can a team give them a walkover or is it against the rules? Against the rules, भाई, of course. Cheating होगी ना, ये तो manipulation होगी ना रिजल्ट्स की. But वो तो मैं खेल के भी हार सकता हूँ. हाँ, but the thing is वो नहीं हारेंगे ना. The thing is India A and B इतनी strong teams हैं कि there will be no situation when they have no chance for a medal. है ना? So even if कोई ऐसे लोग होते जो खेल रहे होते, like they would not lose. And वो it's against the rules, man. It's simply against the rules. पकड़े गए तो भाई ban. क्यों? मैं डिसाइड नहीं कर सकते मेरे को हारना है या जीतना है गेम में. नहीं कर सकते हो, but you can't, like they will not do it. No, they are ambitious players. मतलब वो देश के लिए खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनना आते हैं भाई. And Rakesh bhai is in the chat, he's saying go Hari bhai, let's go bhai. Go Hari, let's go.
The beauty is in repetition भाई कह रहा है भाई नहीं अभी तो winning है भाई अभी क्यों repetition करेंगे भाई ये क्या है? VD का क्या हाल? Can we look at VD's game now? Yes, Vidit का game देखते हैं. And maybe we can have the player cam full screen and the board. That will be awesome to see. VD black ही है भाई अभी क्या ही commentary कर रहा हूँ मैं. Okay, he put the bishop on c1. Yes. साहिल तू भी लिख रहा है भाई. Fine now कह रहा है बंदा. Are we back chat? Yes, we are back. Are we back? हाँ. Okay, guys. नहीं नाक खुजाने के टाइम पे कैसे वापस आते हैं भाई? Vidit has played the bishop to c1. What do you think about this? हाँ, so bishop c1 is a very good maneuver because हमें d6 attack करना है, and the bishop can now also go to a3 first of all to put pressure on d6, and also the knight can now come to e3. That's also a possibility. So very interesting maneuver by VD. At least it will pose some practical problems to black now. ये हमेशा uncomfortable रहेगा, like regardless queen e7 पे है, bishop a3 पे है, same diagonal पे है. But still, yeah man, black is fine. Black is fine. साहिल कोई फायदा नहीं है, लैग हो रहा है. अच्छा लैग हो रहा है क्या? अभी फिर ठीक हो गया. हेलो क्या हम ऑनलाइन हैं? हेलो क्या हम ऑनलाइन हैं या फिर लैग है? Are we online guys? Yes, we are back. Oh, we are back क्या? अच्छा. बरमुडा पार्टी के दिन अजीब चीजें हो रही है, वही तो मुझे भी लग रहा है भाई. अभी भी लैग हो रहा है भाई. Interesting. The lagging keeps on giving. मैं भी मत तो lag. To be lag. I think we are back. I'm not sure if we are back or not. Are we back or it's still lagging? Back. We are back. We are back. अब front भी दिखाते हैं. चलो. Okay, guys. So this bishop to c1 maneuver is very pretty with it because now bishop can come to e3, putting pressure on the d6 pawn, and also now this e3 square is open for a knight, right? And it's a very nice maneuver with it. What do you think, Sahil? यही तो मैंने बोला अभी literally. अच्छा, you were thinking the same. Okay, भाई कॉपी पेस्ट मार के मुझसे ही पूछ रहे हो भाई कैसा लगता है? What do you think? भाई ये क्या है भाई? भाई लिटरली कॉपी पेस्ट मार के मुझसे ही पूछ रहा है बंदा कि भाई what do you think? भाई मतलब भाई ठीक है भाई मतलब ब्रदर सॉरी भाई लिटरली मतलब बॉस ये वो बॉस है भाई जो अपने बंदे का काम जूनियर का काम लेके उसी को पूछता है भाई व्हाट डू यू थिंक? भाई शर्म नहीं आती है? मैंने तो कभी नहीं ये सब सुना भाई, पहली बार मैं बोल रहा ये सब अपने थॉट्स. आई हैव नॉट हर्ड यू, सॉरी. ओके ठीक है भाई. Okay, I think we can check out Arjun's game. I think VD is still pushing. I think he should be better slightly still. Okay, bye. Okay, so Arjun is playing 96, and to be honest, if White takes, I think we can expect a draw very soon. So White, if he wants takes, so you have to undouble हो गया ना? क्यों ही लेगा? Undouble, even he'll take with the bishop. I think it should be still equal because I think this is just bishops may it's easier to play for black, and I can undouble, of course. I'll most likely undouble. True. So I think this should be if White has to play on, he has to go back to e2 now. Otherwise, so this should be dead equal. Dead equal. There's no hope. Khali bishops may pawn structure symmetrical. There's no hope. Giveaway, man. Can we do a giveaway, Sahil bhai, in the meantime? So we can do a giveaway. Let me ask you a question, chat. तैयार हो क्या chat? सवाल के लिए तैयार हो chat? क्या बोलते हो giveaway के लिए? Are you ready? वो 30 सेकंड बाद बताएंगे आपको रेडी है कि नहीं भाई. चलो. Are you ready? सवाल है. हाँ. Which move in chess can never be a capture? ये क्या है भाई? बस भाई ऐसे ही सवाल है भाई. जादूगर वाला सवाल. Which move in chess can never be a capture? क्या बोला आपने? Which move in chess can never be a capture? अच्छा मैंने कुछ और सुना भाई. ये क्या है? Which ये क्या है? क्या बोल रहे हो भाई आप? आप क्या सुन रहे हो भाई? ये क्या है भाई? बीस भाई क्या हो गया यार? Spoiled. Which move in chess can never be a capture? Interesting.
Which move in chess can never be a capture? कैसल भाई लिखा है मेहुल झुंझुनवाला ने. Exact. I think that's correct, right? That should be correct. Why it can? मतलब ठीक है, castle cannot be a capture. ठीक है, but a6, a5, h3, h4. भाई never लिखा है ना. h3, h4 can never be a capture. अरे पीस की मूव भाई, मतलब पॉन की मूव कैन बी अ कैप्चर, क्वीन की मूव कैन बी अ कैप्चर, बट कैसल कैन नेवर बी अ कैप्चर. नो, राजमहल लिख रहा है एक बंदा. पॉन फॉरवर्ड नहीं भाई, पॉन कैन बी कैप्चर, डायगोनल कैप्चर करता है ना, इट्स पॉसिबल. प्रमोशन कैन नेवर बी अ कैप्चर. ओके, दैट्स आल्सो ट्रू एक्चुअली. सही आंसर, बट आई थिंक पहले बंदे ने कैसलिंग बोला था, दैट शुड बी करेक्ट. तो क्या है नाम उस बंदे का, बता तो. झुंझुनवाला जी. झुंझुनवाला जी को मिल रहा है भाई मेंबरशिप. कांग्रेचुलेशंस भाई. यू कैन कांटेक्ट टू निरंजन भाई एंड कांटेक्ट ओनली निरंजन भाई ओनली भाई. डोंट कांटेक्ट मी, ठीक है. हाँ भाई, डोंट कांटेक्ट मी गाइस प्लीज. मैं कुछ रिप्लाई भी नहीं करूंगा, हेल्प भी नहीं करूंगा भाई, ठीक है. झुंझुनवाला जी, कांग्रेचुलेशन. यू कैन गेट इट फ्रॉम 7 to 14 days. प्लीज कांटेक्ट निरंजन भाई ऑन झुंझुनवाला जी कह रहे हैं इंस्टाग्राम. क्या मिल रहा है जल्दी बताओ. ये देखो भाई, बिना पता हुए गिव अवे जीत गए भाई बंदे. क्रेजी लोग भाई, क्रेजी लोग, ठीक है. लेट्स मूव बैक टू हरि कृष्णा गेम. आई वांट टू सी, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ हो सकता है ना भाई कभी भी क्रेजी, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई एम वाचिंग इट. जब दैट उसके पास टाइम भी नहीं है भाई ओपोनेंट के पास. ओपोनेंट इज स्टिल थिंकिंग भाई कि क्या करना है. इज देयर एनी वे आउट? बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे आउट भाई. यू आर जस्ट लॉस्ट. यू कैन रिजाइन एंड गो. अब्दुल सत्तारो. हेलो अमरीश भाई, क्या हाल है? यो अमरीश. एंड लेट्स गो टू भाई शशि किरण का गेम. भाई शशि किरण इज वेरी लो ऑन टाइम, 39 मिनट्स ओनली. भाई ऐसा क्या हो गया इस पोजीशन में भाई? ऐसा क्या 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 थॉट में होंगे वो? आई थिंक उनको प्लान नहीं मिल रहा है, बिकॉज ब्लैक्स प्लान हियर इज क्वाइट सिंपल. लाइक मतलब नाइट c6 आता है, रुक d8. उनको एक क्लियर प्लान नहीं मिल पा रहा है. आई थिंक दैट माइट बी द इशू. सो एंड ही नोज कि ही इज द गाय हु हैज टू विन, राइट? सो उनके प्रेशर बहुत होगा अभी, एंड आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ प्लान. एंड sometimes it's better to have a slightly worse position and have a clear plan rather than have an equal position with no plan, because basically you will not be able to understand what to do then. That's the main issue. भाई यहाँ पे बहुत ही weird move दिखा रहा है इंडियन, which I personally don't like, and that is b3 by. Yeah, that's very very uncomfortable because you're permanently locking your bishop outside. Yes. And not a human move, I have to say. Not a human move. Not at all bhai, not at all. Let's check some human move bhai. I'm a human. Let me suggest a move. Okay. And मैं होता तो भाई सीधे बिशप पीछे लाके फिर पुश कर देता भाई. या फिर why not push a3 and then b4? You could do it. You could do it. I think that's possible. But still, like the thing is, black will not take on b4. He will just keep it like that, and he will simply play knight c6, and you can't even play b4. a3 knight c6. What do you do then? So it's like कोई clear plan नहीं मिल पा रहा है white को. Even I can't find a clear plan. Okay. Like e5 is something, but when you play e5, then bishop opens up to b7. So that's another problem. So it's like कोई clear plan नहीं है हमारे पास. Got it, right? Got it. And let's go back to Gukesh का game. कुछ खेला नहीं क्या ओपोनेंट ने भाई? 35 मिनट है उसके पास भाई. गुकी जीतने वाला है क्या? ओके, he took on e4. f captures on e4. Okay. Hey, please move, please यार, please move. Don't do this. अच्छा, अभी खेला नहीं है क्या उसने? मैंने खेल दिया है. Okay. f capture on e4. Okay. Queen to e7, attacking that pawn, trying to put pressure, and he plays f4 here simply. Chat, I have to admit, it definitely looks better for Gukesh. Yeah, at least practically. Maybe I'm missing something, but it does. I mean, the thing is, black के पास भी play तो बहुत है. Like black has a lot of play. There's no doubt. Yes, for sure. But अब देखो ना, मतलब ये फिर भी थोड़ा सा सेफ है यार. किंग इसका देख रहे हो, यहाँ पे अटैक सब खुला पड़ा है भाई. इधर अटैक करना शुरू कर दूंगा मैं तो. ये ले आओ,
ये भी पुश करके इसको बंद कर सकते हैं, ये बिशप को भी इस डायगोनल पे ले आओ, मतलब एवरीथिंग इज कमिंग भाई। एंड जिनको नहीं समझ में आया क्वीन क्यों हटाई है भाई, क्वीन हटाई सिर्फ इसको अटैक करने के लिए, प्लस ये भी था कि नेक्स्ट अटैक ये हो रहा था भाई, बिशप टू b4 कैप्चर्स, एंड यू कैन नॉट रिकैप्चर बिकॉज क्वीन मर जाती, इसलिए क्वीन को हटा ही दिया भाई इस लाइन से, है ना भाई। Looks very इंटरेस्टिंग। हरी हैज अ वेरी गुड पोजीशन, ये सबको पता चल गया होगा। नाउ अदर्स कैन गो फॉर अ ड्रॉ आफ्टर चेकिंग देयर हरीज पोजीशन, मतलब दे कैन ऐसे ड्रॉ के लिए सिर्फ सीधे जा नहीं सकते ना, यू हैव टू फोर्स इट राइट। Yeah, मतलब the thing is, and many times it happens ना, when you go for a draw you end up losing. हाँ, exactly. USA क्या हाल है? Can you have a look at the US team fall for boards 1 by 1? क्या चल रहा है? Yes, बस एक बार देख ले, इन्होंने खेला A5. A5 खेल दिया है, okay. And this is not a good move. Not that good move, but not that great. It's a slight inaccuracy. I think the thing is, black के पास ना यहाँ white के plan should be simpler. Like E5 makes sense. Yes. Doubling up rooks, bishop D3. Like white's moves are a lot more simpler to play here. Yes. Black has a couple of options. Like, matlab, do you push the A pawn? Do you put the bishop on E6? Do you play rook B8? Do you play B3? Like, काफी options है. And I don't think each and every one of them is good. At least as good as the best one. So, I think Ukesh is doing pretty well. And after A5, यहाँ पे I think the obvious move is E5, right? I think it should be so obvious. E5 लग रहा है. F4 का plan वही था कि E5 and bishop has only one square coming to C5 now. And now I think we want to activate our pieces. So I think bishop can come to D3, pointed towards black's king side, and हम weakness create करने का force कर सकते हैं. Also, we can try to. Sorry, bishop can come to D3. How can it come to D3? D3 by D3. That can come by. है ना? So that is one possibility, because the idea being, कल को when I move the Dasco bishop, the queen can also come to G2 quickly. Yeah, then and bishop D3 के बाद let's say black plays H6. ठीक है, ब्लैक ने H6 खेला मान लो, ठीक है, लेट्स से बिशप D3, ब्लैक प्लेज H6, तो G6 पे आई थिंक ऑलरेडी H4 या F5 आइडियाज है, H6 ले लो, एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू बेसिकली डबल अप रुक्स, या लेट्स से रुक आई डोंट नो G3 में भी, एंड bring second rook to G3 as G1 as well, and कैसे डिफेंड करोगे लॉन्ग टर्म? इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट because you can't play G6 anymore. I will sacrifice on G6, bishop B7, let's say bishop B7 खेलते हो आप, but now rook D G1, I think it's over. You resign now. You resign, right? Because there's no defense. If you play G6 now, I think I'll take on G6 quickly. एक second में मार दूंगा बिना सोचे समझे. You clearly see that this is very difficult. This is not an easy position for black to play. Black के पास भी options हैं, but black's options are very limited now, and Gukesh should win this game. Chad, Gukesh, ये तो मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा आ जाएगा भाई. Anyone in class 12th? Yes, I am. फेल होने वाला मैं. And this will soon lead to a mate, right? हाँ, of course. Queen G7 is not possible. King H8, I think simply Queen H6. Queen H7 के बाद, I guess we just come back with the Queen, and slowly I think it should be mate at some point. Round up. I think फिलहाल तो it's too early. Slowly क्यों भाई, यहाँ से सीधा mate है भाई, खत्म. अच्छा हाँ, सीधा mate ही है, my bad. True, indeed. Okay, and he has played E5. He played E5. Awesome. Guki trying to win again. भाई फिर से ना जीत जाए यार. Chat अगर आज भी जीत गया ना, तो that will be insane. Yes, 6 out of 6 भाई, and very close to becoming India number 2 भाई. पर quickly एक बार देख ले actual India number 2 का मैच भाई. हरि कृष्णा भाई के क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है क्या? Which is going very interesting भाई. कहाँ है हरि कृष्णा भाई का मैच ये रहा? What about India team C? We'll go to India's team C very soon. Yes. I think team और B में इतना कुछ critical चल रहा है अभी कि I think उसी गेम फोकस करते हैं ज्यादा, है ना? I think that makes more sense. Correct. And यहाँ पे खेल दिया Rook D1 भाई. Okay, now Rook D1 has been played, but we can Queen हटाना होगा. हाँ, मतलब Queen हटा सकते हैं. Anyways तुमको Queen अपना F6 पे लाना ही है, तो ले आओ ना. हाँ, true. That looks very logical. है ना? And then you can plan the push on G4, H5, H4. Come on, Guki. Come on, sorry, Hari Krishna, Guki is both winning. Yeah, both winning. Maybe India will win and we see India versus US tomorrow. That will be crazy. भाई मजा आ जाएगा यार, ऐसा होगा तो यार. एक बार क्विकली यूएस का देखिए क्या, मेरे को यूएस का देखने का मन कर रहा है. हाँ, लेट्स गो यूएस भाई, क्या चल रहा है इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल. सॉरी, वुमेन्स टीम में जाएंगे चैट, बहुत जल्दी जाएंगे चैट. कोई भी डाउट सो यू कैन आस्क BeastStats. We have an expert here, please. Don't shy. Don't be shy.
आदित्य करुआना वर्सेस मकसूदलू भाई, मकसूदलू कंप्लीटली डोमिनेटिंग। जस्ट किडिंग भाई, अभी तक देखा नहीं मैंने इंजन। Honesty is the best policy का next level भाई. I think it does seem to be slightly better for white though, because I think दो बिशप हैं and queen side pawn weak है. यहाँ पे what do you play? I mean, I do want to bring the knight to f4 soon. I think that should be the plan. Knight to f4. Yeah, knight to f4. I also want to come. Because that should be the plan. No, this point क्या knight h5 करके रहा है. So that tempting लग रहा है, थोड़ा मार भी दूं मेरे को, ऐसा मन है, क्योंकि ये chat I challenge you. कोई सवाल पूछो, BeastStats की इंट्यूशन के पास जवाब होगा. Yes. चाहे वो चेस का हो, चाहे वो स्ट्रिंग थ्योरी का हो, कुछ भी पूछ के देखो भाई, कुछ भी, हर चीज का सवाल है भाई. सॉरी, जवाब है भाई, सवाल नहीं. हर चीज का सवाल. नाइट टू f4 में खेला उसने. Why can't he directly? अच्छा नहीं. Now the rook is stuck, right? अगर मारोगे तो बिशप पेयर एडवांटेज चली जाएगी. Yes, बिशप पेयर एडवांटेज चली जाएगी. That's what I'm thinking कि क्या कर सकते हैं इधर. I think US में इतना फोकस नहीं करते. Let's look at the evaluation. It looks slightly better for Caruana. And let's quickly look at all the 4 boards कि क्या चल रहा है. And then let's go back to Indian team, है ना? Okay, बोलो भाई. So let's look board 2 now, where I think we have Aronian. इतना भी सच नहीं बोलना था प्रतीक भाई. प्रतीक ने क्या बोल दिया भाई? Nobody really cares about Netherlands. We do care about Anish Giri though. Levon, अच्छा कल की गेम है भाई, कल की गेम है. मेरे को लगा ड्रॉ हो गया भाई जल्दी. Oh, sorry about that, guys. BeastStats टिक्की का शादी कब होगा? ये सब क्या बातें चल रही है भाई चैट में? जब वो मिलेगी भाई. What? कहीं ना कहीं तो होगी. I was seriously saying that. तबाही ने तबाह कर दिया या तबाह हो गए भाई, अभी पता चल जाएगा चैट. डोंट वरी. बाहर जब तक ऊपर आता नहीं है. Okay, now it seems like slightly better for white. Exactly. Plus 0.17. What do you think? Yeah, 0.7 looks appropriate. Yeah. I think जो pawn है ना king side पे, if somehow black can bring the queen into the game, like queen c8, something, queen h3, then suddenly ये pawn एक करके उड़ गए तो then suddenly white is completely lost. But if you can go off into some sort of end game and you can maintain these pawns, तो ये space advantage देते हैं बहुत ज़्यादा white को, and that's why he should be slightly better. And the bishop on h8 is kind of stuck. एक ही diagonal पे खेल रहा है वो. So it's very double-edged, and Tabai has half the time of Aronian almost. That's the issue. But he's playing some great chess so far. Very ambitious chess, putting the pawns on all the way to h6. उनके घर तक गोद में छोड़ा है अपने प्यादे भाई वो. So I think Aronian is definitely not in the best of positions here, and it's very difficult for him to win this. I feel तबाह होने वाला है, तबाही. So let's see क्या होता है. Let's go to next board. So far, 2 equal games roughly, slightly better for one side each. Let's go to the board 3, where we have Wesley So playing against Idani Poya. Idani Poya has also visited India, I remember, and we have something similar to the London system, not exactly London. And again, very equalish opening. I think the black has exchanged the bad bishop, which is not locked behind the behind the pawn structure. So black should be okay. Knight a5, knight c4 incoming. So I think chat again, Wesley So not better at all. Equal position. He has the bishop pair, but black also has a good c4 square here. So equal game. Let's go to board 4. And let's go to board 4, bhai, which is, I think today's Dominguez is playing against some IM, yeah. Yeah, but Dominguez है क्यों नहीं? Okay, let me just search his name. Tabahi, हाँ, Ashta, his name is Tabahi, yes. Tabahi. Hi. Tabahi. क्या उसमें नहीं था हवा हवाई तो Tabahi. क्या पोजीशन है भाई? Okay. And in this, white looks slightly better. Yeah, black is not castled भाई. IM 2700 के साथ भाई ठीक पोजीशन लेके बैठा है यार. So I think US is not clear at all that they're winning this. Doesn't look clear at all, chat. I think look at the queen on b4. It cuts off the black king from castling. Queenside castling is very risky because white has already played a4. He's ready for a5, a6. Rook file is also open. So I think black को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कैसल करना पड़ेगा जल्दी से. Otherwise, white can also gain the edge. So far, Dominguez जी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है एडवांटेज लेने का. And what if he castles queen side?
But then a5, and then suddenly knight b3, knight c5, and bishop b a6 पे ready है. So it's a bit risky, I would say. So I think US के भी चारों game roughly balanced and nobody has a clear edge on any of the boards. Can we go back to team, I think, B and check out Gukesh's game? Yes, bhai. Let's go back. Niranjan bhai crying behind the scenes. भाई तुम्हें भाई आज रोने का नहीं, आज हाई होने का दिन है भाई. अरे ये क्या है भाई? आज रोने का दिन नहीं है भाई. Niranjan bhai, can you hear us? Bishop c5 played now by black. What did Gukesh play now? Niranjan bhai, do you love us? Yes, बोल रहा भाई. चलो let's go भाई. भाई बीस भाई ने पूछा निरंजन भाई डू यू लव अस. निरंजन भाई इज यस या भाई ओ माय गॉड इतना बड़ा रिजेक्शन मैंने कभी देखा ही नहीं है भाई लाइफ में. रिजेक्शन क्या है इसमें भाई? हाँ यस तो बोल दिया, अब क्या सुनना है भाई. एक होता है यस आई डू, एक होता है या यस ऑफ कोर्स. ये क्या है भाई? तेरे साथ ही होता है भाई. तेरे को भी भाई सब रिजेक्ट करते हैं भाई, मेरे को तो नहीं रिजेक्शन मिलता भाई. नहीं भाई ये तो रिजेक्ट कर दिया निरंजन भाई, देख लो यार. एंड बिशप टू c5 खेल दिया है भाई ओपोनेंट ने. एंड हियर Gukesh is thinking, what should he go? Should he go to rook to g5 or bishop to d3? Both look logical, भाई. हाँ मतलब वीकनेस करनी है यार. वी वांट अ वीकनेस ऑन द किंग साइड. फिलहाल तीनों चार जो किंग साइड पे क्या होता है, तीनों पॉन होते हैं ना 7th रैंक पे, दे आर इन द बेस्ट फॉर्मेशन. जैसे एक पॉन भी आगे आता है ना, मान लो अगर f पॉन आया तो डायगोनल वीक, अगर g6 आया तो डार्क स्क्वायर्स वीक, f6 g7 h6 और सडनली h4 h5, h6 आया तो लाइट स्क्वायर्स वीक. तो you can't play g6 now because bishop g6 आएगा. So every pawn push creates a weakness and that's what Gukesh needs. Gukesh is yes correct chat, completely better. और खास बात ये है कि उसके प्लान्स थोड़े इजी हैं. देखो मेरे को भी दिख रहे हैं कि ये बिशप को यहाँ लाऊंगा, रुक को यहाँ लाऊंगा, रुक दूसरे डेवलप करूंगा इस फाइल पे, ठीक है. बट इसके जो ब्लैक है उसको इट्स स्टिल नॉट सो क्लियर, राइट. हाँ खेलना कहाँ है बिशप कुछ पता नहीं है क्लियरली, एंड उसका टाइम भी तो नहीं देना ना व्हाइट. अब व्हाइट ने क्या किया, इसमें खेला टेम्पो के साथ, बिशप को मूव करना पड़ा. अब बिशप d3 टेम्पो के साथ तो पॉन मूव करना पड़ेगा. नाउ रुक g3, सो ही ओनली गेट्स वन मूव. एक मूव मिलती है उनको भाई कि जो करना है अभी कर लो भाई, बाद में खाना नहीं मिलेगा भाई, सूर्य ग्रहण लगने वाला है फिर. यस Gukesh will also win today, hopefully भाई, hopefully. लग तो वही रहा है, चांसेस वही है. एंड किसी ने बोला है वैशाली इज विनिंग. मैं जस्ट वांट टू क्विकली वॉच वैशाली's गेम देन. बिल्कुल इंडिया 2 रॉकिंग एज यूजुअल. अरे इंडिया 2 तो क्या टीम है यार. माय गॉड व्हाट अ टीम. आई मीन इट्स लाइक यू नो. सलमान खान क्यों बन रहे भाई आप? सलमान खान हो गया क्या मैं सही में? यस भाई देखना पड़ेगा भाई सब कैसे देख रहे हैं. ओह ओके. इसका इवैल्यूएशन अगर मैं बताऊं, अगर मैं अपने इंट्यूशन से, तो +1.44 है भाई. भाई इतना बढ़िया इंट्यूशन कहां से लेके आया यार? यार इतना बढ़िया इंट्यूशन कहां से? सालों की प्रैक्टिस एंड तपस्या भाई ऑन द हिमालयस. भाई तपस्या हिमालय पे क्यों, तो वहीं से इंडिया के लिए खेल भी लेते ना फिर. उधर इंटरनेट तो नहीं रहता ना यार. अरे तो ओटीपी खेल लो भाई, अब तो सीओ भी लाइव होने वाला है. हिमालय पे नहीं हो रहा ना भाई मैचेस, दिक्कत वही है यार. अच्छा हिमालय स्ट्रीम कर रहे हो क्या अभी? हाँ देख रहे हो. अभी तो कहते इंटरनेट नहीं है वहाँ पे. अभी तो कहते इंटरनेट नहीं है वहाँ पे, अब कैसे आ गया? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है. भाई दिमाग लगाना जैसे काम होता है भाई. साहिल ठीक है, लेट्स गो भाई. एनीवेज वैशाली इज लाइक सर में दर्द हो रहा है, मैं चुप करो भाई दोनों. हाँ तो आई थिंक यहाँ पे लॉजिकल मूव b4. Yeah, b4 looks logical. I think b5 bishop trap हो रहा है, so makes a lot of sense. And I don't like the knight on b7, so I think Vaishali is completely winning here. The knight on b7 makes a horrible impression on me. b4 के बाद knight c5 भी नहीं है. Chad, I think Vaishali might just win this. She's low on the clock though. Exchange sack had temporary, but I think it might be worth it. So Vaishali is doing fine. And if she can play b4, have the guts to play b4, sack and exchange temporarily, I think she might just dominate this game. So can we go to Hari Krishna's game एक बार, क्या चल रहा है? चैट आज के लिए 3 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया ए ओपन, इंडिया बी ओपन एंड इंडिया ए वुमेन, बिकॉज they are playing important teams, like critical matches there, and it might just decide the medal. So it's very very important. ज़्यादा focus उस पे करेंगे थोड़ा सा. And of course you have to also follow the US team and so on. Padmini lost queen. क्या बात करो? Let me check on my own. 20 भाई क्या लग रहा है यार? 32 minutes for Gukesh's opponent. Will he make it 6-on-6? हाँ 6-on-6 होने वाला है. लग रहा है मेरे को 6-on-6 हो रहा है भाई. भाई इतना अच्छा पोजीशन है यार, देखो ना आप. Even I can play जब तो he तो can play only ना. वो पद्मिनी का ट्रांसमिशन रह रहा है, कोई नहीं गई.
So I think if Gukesh can win this, come on Gukesh bhai, let's go bishop Let's d3. go गुक्की भाई, ऐसे नारे भी लगा सकते हो भाई अच्छे। बोलो उसका नाम भी वैसा ना, गुक्की 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 गुक्की। बहुत ही बुरा हो जाएगा कहानी फटेंगे भाई। हरिकृष्णा गेम पे आ गए भाई, फाइनली हम लोग को मिल गया मौका आने का। और यहाँ पे देखो खेल दिया है भाई, क्वीन टू f6 इज प्लेइंग द बेस्ट मूव्स भाई, वन आफ्टर अदर भाई। हरिकृष्णा इज विनिंग। एक्चुअली नहीं, ऐसे नहीं खेला है, g4 खेला है इन्होंने पहले। Okay, also winning, yeah, knight takes yes, एक ही बात है। Knight to h2 and queen to g5 now. Oh, rook f1 is played and I think h5 h4, let's go h5 पे क्या खेलेगा? I don't know honestly. To play on कुछ तो खेलना पड़ेगा। Knight f1 maybe in कौन सा वाला knight? This one? No, the other one, h2 one I was thinking. Other one? Okay, and then I will play h4 maybe, or even I can play Chat, come on, क्या लग रहा है भाई? Will Harikrishna and h4 ना? Gukesh try today? Yeah, h4 looks very strong. It looks very strong. And the thing is, अगर आप मारते हो, for example, gh4, I let's say take with the queen. Knight e3 is not possible. Knight e3 is not possible. And threat पता क्या है? King g7, rook h8. ना सीधे मार दूंगा। सीधे मार देंगे, exactly. And threat is King g7, rook h8, game over. So यहाँ पे h5 open होने का वही प्लान है, King g7, rook h8 and queen h1 mate. So यहाँ बहुत सारे plans है black के पास. It looks very dangerous, chat. Looks very, very dangerous. So Harikrishna is defeating the guy who defeated Caruana. भाई मुझे इंडिया के चांसेस अच्छे लग रहे हैं भाई। yes. इमेजिन करो अगर इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी फाइनल डे फाइनल राउंड, भाई साहब गोल्ड के लिए एक टीम को सिल्वर एक को गोल्ड। That can't happen. That can happen. It can happen. No. In the final rounds we don't. फाइनल में नहीं होगा, maybe second last round, yeah, like just to decide. Yeah. But this is very interesting, भाई, very interesting game. Can we go? ये live position है क्या? Sorry, yeah, this is the live position. Yeah. So I think if for example Harikrishna wins, it would be a great deal for Team India. And rook f1 के बाद I think h5 looks very logical, yeah. Yes, very logical. h4 very logical, yeah. Not wasting any time basically. And वो King g7 rook h8 का प्लान बहुत strong है, because rook h8 आएगा तो h5 खुलेगी. And यार यहाँ प्रॉब्लम ये है कि white के सारे pieces उधर है queen side पे. If we look at the rectangle, चार king side का rectangle देखो. Just draw the rectangle एक बार, king side का जो half है. मतलब वो रेक्टेंगल पूरा जो है ना, लाइक मतलब h1 e1 e8 h8 हैप्पी h1 e1 h1 हाँ h1 से लेके e1 h1 से लेके e1 हाँ देन e8 एंड h8. अगर आप ये हाफ देखोगे बोर्ड का, e8 पूरा आगे तक ये हाँ भाई रेक्टेंगल तो समझो यार। सॉरी रेक्टेंगल भाई रेक्टेंगल समझाओ बीस बाबू को, कोई कौन समझाएगा भाई रेक्टेंगल इनको? निरंजन भाई आप क्या खुश हो रहे हो भाई? खुद तो भाई अब तो लिटरली रिवीज भाई मतलब रेक्टेंगल ही भूल चुके हैं भाई। एलिमेंट्री स्कूल एनीवेज। सो इस रेक्टेंगल में पीस देखो, ब्लैक के पास क्वीन है, नाइट है, रुक है, f2 पे बिशप अटैक कर रहा है, बिशप ऑन c8 आल्सो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द गेम, बट यू लुक एट व्हाइट पीस किंग और नाइट और एक रुक, दैट्स इट. सो क्लियरली ब्लैक के पास जो एक्स्ट्रा क्वीन है ना, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो वो क्वीन बीच में कुछ नहीं कर रही भाई. आर गर्ल्स राइट फर्स्ट, रियली अजीब लड़कियां हैं फिर तो यार. सर में फाइनल्स में ए वर्सेस बी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सेम कंट्री का सेम स्टेट का कभी होता नहीं है, बिकॉज दे कैन समटाइम्स फिक्स गेम्स, समटाइम्स इट गिव्स. ऐसा होता है कि मतलब अगर नेशनल चैंपियनशिप है, दो स्टेट के आपस में खेलेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना कि एक स्टेट से बंदा जीतेगा. सो समटाइम्स इफ इट्स पॉसिबल दे अवॉइड द पेयरिंग. नेकेड भाई ओपी बाहर है, सिविल इंजीनियर भाई. राकेश भाई इन बाबू को बुलाया कमेंट. अरे ये क्या है भाई? ओके सो लेट्स गो टू अधिबान्स गेम. क्या चल रहा है अधिबान गेम में भाई? ओके ही टुक ऑन आई थिंक एक्सचेंज ऑफ फ्यू पॉन्स, बट टू बी ऑनेस्ट लुक एट दिस पोजीशन यार. दोनों c5 d5 पॉन थोड़े वीक भी हैं, बट ये थोड़ा सा अटैक भी कर रहे हैं. कल को d4 ऑन अ गुड डे कैन रियली क्रिएट सम प्रेशर, राइट? या d4 तो नहीं आ रहा, पर अभी नहीं आ रहा, बट कभी आ सकता है फॉर श्योर. सो अधिबान आई थिंक स्टिल बैलेंस्ड. आई वुड रादर, आई एम नॉट श्योर हु विल हैव बेटर चांसेस, बट वेरी बैलेंस्ड. लेट्स गो टू द फोर्थ बोर्ड. एक सेकंड.
ये रहा बोर्ड रौनक. All squares are rectangle though. ये लो भाई, ये आ गए भाई हीरो. Okay, this looks a bit dangerous, I would say. Probably black can hold because I like the bishop on d7, जहां पे pawn को हमेशा lock and key में रखा हुआ था. Now it's like bishop को दो काम करने हैं, d7 भी रोकना है और g6 भी रोकना है. For example, d7 is a possible move here. Rook g6 is a possible move. It's not, yeah, it's technically not possible rook c1 check की वजह से, but still आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा ये सब move. So I think white tiny bit better, I would say. Like if anybody can win, it's white. And as you can see from body language, it does seem that way as well. Ronak knows he cannot win this. The best he can do is hold this game, and I think that should be good enough for Team India. Because board 4 pe black pieces hain, that's good enough. And board 1 pe bhai Gukesh is already crushing. So one brief look at Gukesh's game. Board 1 pe, if he can have first. Nihal dekh le kya? Nihal ek bhi baar nahi dekha. Nihal not seen. Nihal ke game mein hua kya hai? All rectangles are squares. Okay. भाई BeastStats को बताइए सब. Bishop to d4, rook captures c6, rook f8, and trying to exchange the rooks. It seems he played my move, no? Bishop d4 जो मैंने कहा था, but now yeah, he's going for counterplay basically. He's saying कि तुमने प्यादा मार दिया, but अगर तुम rook trade करते हो, I will capture back with the rook, and I will basically say कि rook endgame should be an easy draw at least. And अगर तुम ज़्यादा ड्रामा करोगे तो मैं rook c2 ले आऊँगा, and then f2 is also falling. So I think this is going to be a draw, chat. It's going to be a draw. क्या है भाई? ड्रामा करोगे तो ठीक है भाई, नहीं करेंगे भाई ड्रामा. So let's go back to Mukesh's game, chat एक बार. By the way, I must admit, I think Adiban ke there are certain chances to lose. It is possible. It's a 3-result game, so we have to be very wary of that, and hopefully Mukesh can convert this game. बाबू चैट नहीं पढ़ता क्या? बाबू चैट पढ़ो भाई. लेट्स गो भाई, चैट पढ़ो बाबू. लेट्स गो. क्या पढ़ना है बाबू? चैट नहीं पढ़ता क्या? पढ़ता हूँ भाई. हो गया भाई, पढ़ लिया. लेट्स गो. Enough यार. enough for today. इतने सारे गेम चल रहे हैं भाई, सब कुछ देखना है भाई. हरी का गेम में एडवांटेज है क्या? हाँ भाई, हरी इज कंप्लीटली विनिंग एज ऑफ नाउ. ना रे, all squares are rectangles. भाई चैट खुद confused है. All rectangles are squares या all squares are rectangles? All squares are rectangle यार chat. Exactly chat. क्या यार chat? What is this? चलो भाई. King to g7 is played by Hari. भाई. Oh, he played the best move in the position. That is the best move in the position. Is it the best move? Yes, it is. G7. Yes. Oh. So Hari Krishna knows what he is doing. Of course he knows भाई. तभी तो इतना खेला ना. ये without knowing कैसे खेलेंगे भाई? टिक्कू अपने चैनल पर आओ, बताता हूँ. अभी यही बता दो यार, हम सुन लेंगे. Okay. आनंद जी का बहुत अच्छा सवाल है चैट. BeastStats भाई. आनंद अयंगर जी का, क्या पढ़ सकते हैं? बाबू क्यों नहीं खेल रहा ओलंपियाड? I was busy, a little busy with chess.com commentary. Actually, basically, यार Vishy Anand ने नहीं खेला. So Babu said, I think I will also join Vishy Anand, and then he also withdrew. Yeah, he had to बहुत पैसे ऑफर किए थे. I also thought यार कि youngsters खेलेंगे तो सही रहेगा. Yes. Exactly. वो लोग ऐसे मेरे से क्या half age के भाई ऐसे. So I'm like fine, let them play. पन्ना भाई कह रहे क्या ही दिन आ गए चेस.com इंडिया के लेजेंडरी कमेंट्री पैनल. थैंक यू भाई. I will totally ignore the sarcasm there. Thank you भाई. I'd like to compliment. All squares are rectangles. भाई yeah, I think that's true. That's probably true. Yes. Finally किसी ने मैथ सही लगा बढ़िया भाई. Hare Krishna seems to be better chat. White के लगे पड़े हैं. Can we go to VD's game briefly? VD also looks a bit tense for some reason. Can we have a look at VD's game? All pyramids are triangles. भाई आपको पता है बीस भाई, Egyptians ने जो pyramids बनाए हैं, like they had no like technology, no like you know machines to make it. And जब आप उसको starting में लगाते हो baseline, अगर आधे सेंटीमीटर या इनसे भी एक वो स्लैब अलग होगा ना, आपको टॉप पे पता लगेगा कि भाई मैंने गलत कर दिया है. Yeah, I know that. It's crazy कि how did they manage to make it so perfect ना? It's insane. It's insane भाई. कुछ तो होगा भाई. पर यहाँ पे पर अभी तक विदित ने खेला है. विदित is still thinking because opponents have played knight to e6.
VD का ना कल भी ये हुआ, he was slightly better but could not convert. परसों भी like he's finding these slightly better positions but not able to convert. It must be playing on his mind. So he's trying to come up with a plan जहां पे he can win the game. आज चेस का मन नहीं है, वीडी को बोलो व्लॉग्स बनाने को, वीडी फॉर व्लॉग्स. भाई यार देखो ना यार, अब ना इंडिया नंबर 3 की रेस आ चुकी है भाई. इंडिया नंबर 3 में चैट कौन कौन है, इसमें क्या लगता है तुम्हें भाई? Who all are in the race for India number 2 and 3? I think the players are VD, Hari Krishna, Erigasi Arjun, Nihal Sareen, Prag, Sahil Tickoo, Jukesh D. Then you have maybe Ronak as well coming up soon. So बहुत सारे talented players बीच में mix में है. Let's see कौन पहुंचता है. And एक बंदे ने भाई लिखा है pyramids were built before Newton was born, so gravity wasn't a problem then, and that's how they built it. वाह उमेर भाई, वाह वाह वाह, क्या ख्यालात है भाई. नाइस. टीम सी और वुमेन्स के गेम्स दिखाओ. We'll have a look at those games very soon, very soon. Actually अब मुझे लग रहा है कि यार I really want to look at those games, but I'm very curious कि क्या होगा यहाँ पे यार, कि सस्पेंस हो रहा है कि भाई क्या होगा इन दोनों गेम्स में, क्या हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसे वो हो रहा है यार. Today my rating surges from 1150 से 1250. भाई ये कोविड के केसेस थोड़ी ना सर्ज होंगे भाई. इंक्रीज बोलो भाई, इंक्रीज द करेक्ट वर्ड. VD for India number 1, VD for India number 3. भाई विशी आनंद, जस्टिस फॉर विशी आनंद भाई. मतलब पिछले कितने, मतलब आई थिंक जितने साल का मैं हूं नहीं तब से वो इंडिया नंबर 1 लेके बैठे हैं भाई. विशी का नाम ही भूल गए लोग, बताओ भाई. या साहिल टिक्कू भी. ओ I also say Sahil Tickoo, really? अच्छा, ओ गलती से निकल गया यार. Anyways, आर्बिट्रेजी टाइम नोट करते हुए भाई. VD for ranking of India number 1. Nice. मतलब न्यूटन ने ग्रेविटी बनाई. I thought he discovered it, learning new things. Yeah, Anand bhai, even I am. Hari Krishna क्या मस्त पोज. Look at the pose of Hari Krishna. He's like रुको भाई, मेरा गेम तो हो गया है. मेरा हो चुका है. बहारों फूल बरसाओ, हरे कृष्णा का G4 आया है. क्या पोज बना के बैठा है, मस्त है भाई. ऑपोनेंट बेचारा सदमे में आ गया होगा भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ. एक सेकंड, एलेक्सा जाग गई है भाई. कितना जागेगी भाई. एलेक्सा की आदत है यार, कभी भी जाग जाती हो. नहीं, हरी इज नॉट ब्लंट. हरी इज कंप्लीटली, आई वुड नॉट से लाइक क्रिस्टल क्लियर विनिंग, बट completely in control of the position, at least you can say that, right? Because तुम देखो ना यार चैट, तुम भी देखो, तुमको भी समझ में आएगा प्लान क्या हो. तुम बताओ भाई चैट. Don't use an engine or anything. What do you think you will do in this position? You are having the black pieces. मान लो कि उसने कुछ खेला भाई, क्या मान ले, रुक E2 खेला भाई, ये लो. Does Prakhar still play chess? So Prakhar plays 2 kinds of chess now. One is strip chess with somebody you know, and second is with Sandeep Maheshwari. उसका नाम भी डिसाइड किया नहीं है. अब तो बस फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहा हूँ फील्ड्स. या अब तो लिटरली अलग पोज है भाई. ऐसे हाथ है एंड शक्ल उधर है भाई. मस्त पोज है यार. है ना, ऐसे भाई लिटरली. He's like, I am done. अब्दुल सत्तार जल्दी खत्म करो ब्रो. हाथ ऐसे लगा बस ऐसे रिजाइन का ऑफर करने ही वाला है. क्या देखो चैट भी कह रही है भाई. इसके बाद चैट बोल रही है रुक H8 खेल सकते हैं, ठीक है, बट आई स्टिल फील भाई H4 जाने का टाइम. पहले H5 देन रुक H8 लास्ट में अगर ऑप्शन देगा. हां एंड देन H4 हम उसके बाद जाएंगे. इट्स लाइक नाउ इट्स ओपन. ये कभी भी मैं स्विंग कर सकता है इधर. बाय द वे, रुक E2 प्लेयर राइट. He plays rook E2 and now he plays rook E2 only. Wow. And now let's see what happens. And he will play H5. He will quickly play H5. I think he has removed the entire game in his mind. संदीप के साथ ही शिफ्ट से भाई एक दूसरे कपड़े नहीं निकाल रहे भाई. वो फ्लैग निकाल रहे. अरे मतलब झंडे के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी होगी मैंने पहली बार लाइफ में देखा था भाई, आजादी के बाद. भाई आप अभी इतना बोल रहे हो ना तो आप पे हो जाएगा. रुक जाओ भाई थोड़ा. भाई सुना है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं भाई. सब्सक्राइबर छोड़ो भाई. करना क्या, यूएस जाना है बस. इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा. I am using this background while making pudding. Very soothing. Nice. Rook E2. I feel like H5 is incoming by. And he's thinking, but I am pretty sure he would have thought about it, right? Just he's recalculating, है ना? Today I found out chess isn't the only thing Sahil is terrible at. Singing is also one of them. Luckily, my career does not depend on it. Luckily.
Tickoo sir, if a 100 player win with the 13 player, how much rating will he start with? Very hard to say, man. पूछना पड़ेगा यार. 20 भाई जब आपने प्रखर को हराया तो कितनी रेटिंग आई थी आपकी? क्या? मैंने प्रखर को हराया तो कितनी रेटिंग आई थी भाई? किस चीज में भाई? ऑनलाइन में? पता नहीं यार, 5-6 मिली थी. अच्छा. लोअर रेटेड है मेरे से वो 200 ब्लिट्स भाई में. वेक का मुझे फोन आया उस दिन 2-3 दिन पहले, कहता है मैं 1900 पहुंच गया हूँ. यस नहीं, 1950 or something ना. सही है भाई. But I don't feel like रैपिड में तो पहुंच सकते हो यार आप, but blitz is just bit tough. Current India number one going to next FIDE election. Yeah, that is. I think Vishy has reached that phase of his life, no, jahan pe he also wants to involve himself in other things. So if he can get into elections, he can probably direct the course of chess, which is better for players. So I think it might be a good thing, although hard to say. We'll have to see. But ऐसा हो सकता है क्या वो हमें FIDE का प्रेसिडेंट रहे, and he's still playing? Is it possible? Of course. Why don't you go for IM title? I think I mentioned the answer in my stream. वहाँ दे सकते हो भाई. Vek की memory is epic. Yeah, but I mean that is true, man. I think we have to agree here. Vek Desai's memory is epic. He repeats the same queen blunder in every single game. Memory is epic, bhai. Every single game he repeats the same queen blunder. कुछ कह रहे हैं मेरे को? हाँ मतलब, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता यार. मेरे को रैपिड इज इजियर ऑन chess.com. नॉट इन मतलब ऐसे और OTB या FIDE वाला बात नहीं कर रहा, बट रैपिड 2000 रेटिंग इज इजियर देन रीचिंग इन ब्लिट्स 2000. हाँ, of course, rapid is easier. You have more time, no? So yeah. So I think maybe we can switch to the game of Gukesh maybe briefly, because यहाँ गुकेश की गेम चल रही है ऊपर. ठीक है, गुकेश की गेम लगा कर. Yeah, both the games, right? I'm just हाँ, ये दो गेम्स हमें देखनी है actually. I really want to see the next couple of moves in both games, because that will tell us ये क्या होने वाला है exactly. उसी स्क्रीन पर हो यार, उसी स्क्रीन पर हरि कृष्णा whenever he plays we can see that also. हाँ, वही रहने दो. बढ़िया. we can see that also. निरंजन भाई तो ओपी है यार, क्या मतलब स्मार्ट. Blitz is easier in general. Okay. Blitz is easier in general. I don't think so. It's like way tougher to get a rating in Blitz. भाई ये येलो शर्ट में कौन है यार? कोई आर्बिटर होगा यार मोस्ट लाइकली. आई डोंट थिंक कोई और अलाउड है. ये ब्लू शर्ट में कौन है भाई? ब्लू उसमें सूट में ऐसे खड़ा है ना, ये ऐसे हाथ करके. ये ओपोनेंट ही है क्या विजित का? Yeah. है ना, ओपोनेंट ही है. Opponent. Yes. He looks in an angry mood somehow. You know, it's the most irritating thing as a chess player if your opponent stands in front of you. क्यों? हाँ, बहुत दिमाग खराब होता है. I think people in the chat who have played OTB chess will back me on this. If your opponent is standing, no, इतना irritate होता है ना बंदा. I'm like, भाई बैठ ना भाई, तू क्या कहाँ दर्द हो रहा है भाई? चैट मुझे बैक करना है इसमें. This is like the most irritating thing, because I'll tell you what you see basically. मैं दिखाता हूँ. You see this, and then he's dancing. ठीक है, he's doing this, and then this is like. Okay, distracting a little. It's the most irritating shit you ever see. तो मतलब बहुत दिमाग खराब होता है भाई OTB में. As an introvert, I back you. भाई मैं वही कह रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब होता है. भाई let's go भाई, हरी play H4 H5. Sorry, H5 let's go. भाई दोनों गेम्स में इतना क्रिटिकल मोमेंट है भाई, दोनों गेम्स. Some opponents go behind you to see from your perspective. Yeah, even that is very irritating भाई. बहुत दिमाग खराब. Opponent ना ऐसे पीछे खड़ा हो जाएगा, ऐसे स्टॉकल की तरह भाई, ऐसे पीछे खड़ा हो जाएगा तुम्हारे. And you constantly like भाई चाहता क्या है भाई, क्या चाहिए भाई, ये ले 10 रुपए, आगे आ जा भाई. बहुत दिमाग खराब होता है भाई उसमें. Okay, this is interesting. एक क्वेश्चन था मेरा. ठीक है, यहाँ मैं होता तो नॉर्मली बिशप D3 खेलता. ठीक है, just attacking this pawn. ठीक है, Indian says why not play H4 and give up this pawn. But of course I understand you cannot directly capture because फिर ये रुक आ रहा है, and then a lot of trouble on this file capture, and then this pawn शुरू हो जाएगा. ठीक है, but H4 would you have like H4 क्यों खेलेंगे पर हम? हाँ मतलब H4 का ये है कि मतलब I just feel bishop D3 is more forcing. Like forcing moves में option कम है black के पास. So I think I would love to see कि black क्या खेलने वाला है पहले. Will you play G6 or H6? After that I can plan my pieces accordingly. No, if he plays G6 then H4 gains in strength. If he plays H6 then H4 is not that great. ऐसा मुझे feeling आ रहा है. So I think I would first like to see which pawn would he push,
and then I would push the pawns. By the way, Hari's game, something has happened. He played, I think, knight to f1, and we can see on the board itself. ऐसे ही रन देते हैं, knight to f1 खेला उसके opponent ने. भाई 1 सेकंड के लिए स्विच मार के वापस भी आ सकता है ना, वैसा टाइम थोड़ी लगेगा. 1 सेकंड के लिए मार लो. ये कौन सी गेम है भाई? हाँ, I think he played something, right? ये इसमें क्यों नहीं ओपन हो रहा है? ये क्या सॉरी भाई, कुछ भी. हरि कृष्णा भी लाइक जल्दी रात को बरमूडा पार्टी भी जाना है. अच्छा, ऑलरेडी ओपन हो गया क्या? थैंक यू भाई. आई थिंक बरमूडा पार्टी की जल्दी है लोगों को भाई. ओके, नाउ ही हैज प्लेड he played h5 first bro. हाँ, मेक सेंस. h5, हाँ, knight d to f1, ठीक है. Oh, and then he played h4 as well भाई. Oh, h4 played. Oh, maybe h4 the bar doesn't like it for some reason, right? Yeah, bar doesn't like it that much. It was suggesting to play c6 first. But very difficult to play c6 here, right? I mean, you really want to continue with the plan. मतलब I think what कुछ है नहीं, c6 का मतलब नहीं. Basically ये कह रहा है कि white ने hold कर लिया फिलहाल के लिए. So let's play c6, prevent like rook d5 ideas, bishop d5, and then wait for the correct moment to basically challenge him like on this. India now हो सकता है, but I think कम chances. उसके लिए Indian team को हारना पड़ेगा, and I really don't want that to happen. So I think we can go back to the Gukesh game on the board. Hari has just played this. Let's see how white reacts. Gukesh game में h4 खेला है कि नहीं, ये तो हमने दिखाया था. And he has played rook to g5, planning to come to here. Oh, he plays rook g5 first. Very interesting, chat. Very, very interesting. Has he played it though? I don't think so, right? Yeah, he has played rook g5. Okay. Look on the board now. दिख रहा है उधर. नहीं दिख रहा है, sorry. गुकेश का एक बार बोर्ड देखने मिलेगा क्या? Hari trying to break Mudhibek's streak. Yeah, I hope so. Yeah, Vaishali is winning. We saw it. Vaishali was winning Patel. We saw it. Maybe we can have a brief look at Gukesh and then we go to other boards as well briefly. Is there any chance India match against Norway? बहुत कम chance है. Hari has pre-moved the game in his mind already. I hope he's pre-moved till mate. कुछ miss ना कर दिया भाई. That's the only issue. Like as a chess player also, do you like pura entire game like 20 moves ahead, do you think, or just like 4 or 5 moves ahead and 2-3 variation of that? I think it depends on what the position is, right? मतलब अगर थोड़ी complex है तो थोड़ा सा deep जाना पड़ता है. Simple position में तो I think कोई भी इतना सोचता नहीं है. यहाँ ऐसे ये complex position है, so that's why Vaishali has a lot less time on the clock and she has found some amazing a piece play. यहाँ पे a6 pawn है, she took the bishop on a6, she took the bishop on a1, and it does seem like she is completely winning this. And if Vaishali can win, that would be awesome, and we can finally gain some revenge against Georgia. Black क्या सोच रहा है भाई? pawn नहीं मारेगा क्या? मारेगा ना, सीधे मार दो. मार भी लेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है? 2 पीस मिल गया ना मेरे रुक के लिए, ये बेटर. So I just wanted to थोड़ा पीछे जाकर मेरे को देखना था कि कैसे हुआ है पूरा. Okay, they played what we discussed, right? B4, रुक मारा, ये मारा, queen से अटैक किया, and then pushed. यहाँ पे c5, knight to c5, takes, and now you have to take only. और तो कुछ मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि क्या ही करोगे. मिल गया मेरे को pieces जो चाहिए थे. So Vaishali is winning. अब आ ही गए तो let's look at all the 3 games of women's section A. अगर वैशाली winning है तो बाकी गेम में क्या चल रहा है? Can we go to Humpy's game now? Yes भाई, 1 सेकंड मेरे को दे दोगे आप ना, तो मैं सबके गेम आपको दिखा दूंगा भाई. हम्पी जी का गेम ही क्यों गायब हो जाता है सेलेक्टेड? नीतीश एंड पांडे join for commentary. क्या कह रहे हैं मिस्टर अक्ष दुबे जी? We can call them if they're free. नीतीश अरे भाई क्या मजा चल रहा है भाई. नीतीश भाई ऐसे ही बोलता है स्टार्टिंग में ना. It feels like यहाँ पे ना ये b4 move usually white खेलता है. You fix the pawn on b5. So Humpy has I would say a decent position. It should be equalish. But I like the pawn on b4. It creates weakness on b5. Knight on c7 has a defensive job. It also puts pressure on d5. And f5 के बाद black ने e4 prevent कर दिया है. So this position is very, very interesting, and it will be, I think, एक time pressure में कुछ ना कुछ गलती कोई ना कोई करेगा. So also knight d4 can be a plan at some point to head to e6, e6, and so on. So both sides having their chances. Very double-edged position. Equal मानते हैं अभी. Let's go to Harika's game. Okay भाई. Yo, exactly. Yo, Beast भाई क्या हाल है भाई?
Yeah, there If you go, Nitesh Harika and ji. Pandey join this stream, this commentary will reach next level. I know, man. It's already next level. मैं आई थिंक ऑन द ऐसा कुछ बहुत ऐसे क्रूशियल डेज पे बुला सकते हैं यार कभी कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए ऐसे चिल करने के लिए, लाइक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ हाँ, जब विनिंग सम जीतने वाले, मेडल्स हाँ, एंड देन दैट वुड बी फन. So यहाँ पे if you look at the game, white is an extra pawn on d5, but I think ये मरेगा कभी ना कभी. Clearly सारे black ने pieces अपने लगा रखे हैं. So I think if Harika can hold this game, that would be awesome. I think in fact once you capture d5 pawn, only black can be better because I think black ne fully developed pieces. So I think Harika is fine. She will draw this game, and she's playing for Team India, doing a great job there. I think Humpy is the one who struggled a little bit, but she's also trying to hold there. So if Harika can draw, Humpy can draw. Vaishali is winning. So what's happening in Tanya's game? That becomes very important. Tanya, the champion, she's winning. I hope so. Tanya has 14 less minutes on the clock. She's playing Melia Salom from Ukraine, I think, and she's just taken on b5. Ukraine, sorry, Georgia. And now the d3 pawn will also fall. Material seems to be even. Tanya has the bishop pair, but there will be a weakness on b5 to attack. And the knight on a5 so far not having too much influence, but should be also again equalish. I think I don't think zyada moves here. Kitne moves hain इस बार इस game में? Only 16 moves, right? Seems like that. It's not you know been a very long game so far. Queen capture on d3 simply, or kya? Can't she play just quickly? Yeah, she took on b5. She took on b5. She took on d3 also. And what now? So far it looks 2.5, 1.5 in favor of India. 3 position equal hai. Ek mein Vaishali is completely winning. And if Vaishali is winning, that means other boards will automatically, start pushing for Georgia now. They will know ki matlab they have to win because I think third pe Vaishali is winning. So can we come back to open section again? Or do you want to look at other women section? Please, bhai. No, मेरे को तो भाई गुकेश और हरिका Let's go to Gukesh then. कुछ हुआ नहीं अभी तक यहाँ पे अपडेट. हरिके गेम में देखे. Can we have the cameras also? That would be awesome. He played h4 and white has still not played anything. Yeah, अच्छा है. White played rook to d3. Oh, he played rook to d3. Wow, really? Yeah, he played rook to d3. That's a blunder. That's a blunder. Because what was happening, chat difference क्या है? If you take on h4 directly, can we go back one move? एक second. Yeah. पता नहीं अभी काम नहीं कर. You take on h4. Let's say black takes with the queen, let's say for now. Patience, okay. This now बोल रहा मैं. Niranjan by reminding me of patience, okay. So basically white can चलने की जरूरत नहीं है. Basically white can play g3 with tempo. So knight f4 is not possible, I think. And once you play rook d3, now when I take on g3, now g3 comes with tempo. If you go back to what's in the real game right now, after rook d3, so now when I take on g3, let's say you take with the, I don't know which piece you take with, actually just say rook takes, after rook d3 खेला so rook से मारोगे, I guess. Now the knight can come to f4 with tempo. So you can see now clearly, lot of influence. Although white is also having some chances. Yeah, black का king और queen एक ही line में. कल कोई g pawn गायब हो गया तो भाई लग जाएंगे. But for now, it does seem to be like it's a very interesting position where black should be better. Interesting. मैं तो अभी तो मजा आने वाला है गेम में बहुत. अभी इसका प्लान क्या था? ये जैसे मैं मारूंगा रुक से लेगा. हाँ, I think उसे मारना चाहिए. Chad Harish should be better. I think there'll be some curious counterplay though. I'll show you one line. So after rook takes e3, let's say h takes g3. Why not say knight f4 भाई? हाँ, knight f4 ही खेलना है मैं डायरेक्टली. एंड नाइट f4 के बाद अच्छा ये कैसे आ गया भाई? हाँ ठीक है. सो यहाँ पे खेलो. आई थिंक नाइट टेक्स g4 इज अ पॉसिबल मूव अपेरेंटली. नाइट टेक्स g4. हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन सा पोजीशन है? कहाँ है g टेक्स? कहाँ है g4 पर? h टेक्स g3, rook takes g3, knight f4. हाँ, knight f4 ना. हाँ, knight f4 and now knight takes g4. अच्छा ये हाँ. Knight takes g4 and then once you play knight takes g4, black will of course take with the bishop. Knight takes e2 ना. अच्छा bishop take मार से सीधे तुम. हाँ, bishop takes g4. e2 तो है ही ना. And now comes knight to h2. So basically white wants to take on g4 and win your queen.
Oh. So first we take on e2 with check. Knight takes e2. Bishop takes e2. And yeah, bishop to gaya. Basically, it's gone, right? Yes. So now we have queen to c1 check. वही मैं भी सोचा, queen to c1 check. And luckily for black, I think queen d1 here is the best move. So luckily, queen d1, bishop d1, and simply rook f d8, preparing king f8 ideas. And I think black is completely winning this. White will have some compensation, maybe tiny bit, but I think he doesn't have the two bishops. So I think there is only one rook on the board. So I think black should be completely winning. Rook is coming to d2, and Hari is completely winning this game. So Hari has to find all of this. Not an easy position to find. There are a lot of tactics here. Let's see what happens. And time दोनों के पास थोड़ा कम हो रहा है अब. So you will be an exchange up, and then you have to like win, grind and win, na? Yeah, and the thing is, हमारा rook d2 पे आ चुका है. So b2 is falling, f2 is attacked, सब कुछ attacked है ना? So you can't save everything here. It's over. So I think if Hari Krishna can find all this, is completely winning. So it looks good for Team India so far. Aronian there, looking at the games, what's happening in Hari Krishna's game. And can we go to Gukesh's game? Yes, right. Bishop a6 has been played by black. Yes, bishop a6 is played by black. I guess doubling up rooks now. Rook dg1, है ना? Because bishop dg1 से जाऊंगा मैं. हाँ. क्योंकि मार तो सकता ही नहीं, वो तो पहले मैं मार के चेक दूंगा ना. हाँ, check and then queen and mate. Check and then mate है. हाँ. तो वो तो कुछ करेगा ही नहीं, तो सीधे जाऊंगा मैं. पर फिर ये अटैक कर देगा तो rook g7 तब भी. हाँ, फिर रुक. अच्छा हाँ, सॉरी इधर नहीं. हाँ, इधर से बंद करना पड़ेगा उसको ना. The way Adibal looking at opposition. I go here. What will he play? Let's see ना. देखते हैं ना खेल के सीधा. You have to play g6, right? G6 only move. Only move. And now what do you do? Now the question is, do I just take on a6 or do I play something else? I think everything is possible. So now h4 h5 looks very strong to me. That looks strong now. हाँ, h4 h5 is strong now. Yeah. But ये अपने को तो लेना पड़ेगा ना, पहले तो कुछ तो करना पड़ेगा बिशप के साथ. I think most probably capture. Okay, let's assume captures for now. But rook is coming to c6. That's something I don't like. Like rook is coming to g6 and c6. So if possible, can we do something else? Because rook g6 आ जाएगा तो draw हो जाएगी ना. Bishop to d3. Not g6 really, but you get the point. फिर क्या करेंगे? ये भी कर सकते हैं. ये भी कर सकते हैं. Bishop h5 makes no sense. Bishop c4 makes more sense. Yes. Okay, let's check on a6 for now. Let's check on a6. Rook takes a6. Okay. And now play a move like f5 maybe. f5? The idea being to break open on the king side. So if queen e5, for example, now it's lost after f takes g6 because queen attacked hai, pawn attacked hai, king khulne wala hai. So that's not possible. So I don't even know what black plays. Like it's not easy. Hey, they have played rook dg1. He has played, and he has played g6. G6 खेल दिया. ये चार अभी तक क्या खेलने वाला है? Gukesh Philip played bishop a6. Let's go. भाई गुकी 2720 के आसपास पहुंच सकता है आज यार. Wow. Close to that 2719. Hello Dev Patel bhai, hello Shyam Vatika, hello Sachin bhai, hello Nishan bhai. Please हमारे साथ जुड़े रहो. सब like कर दे stream को. What a move. Rook d2 g1 attacking the black king bhai. बहुत interesting है. g6 only move is also played. And अब देखते हैं भाई क्या होगा. टाइम बिल्कुल बराबर है दोनों के पास. Yes. भाई मेरे को देखना है भाई. बिशप कैप्चर में a6 बेस्ट मूव भी दिखा रहा है या फिर बिशप c4 बोल रहा है खेलना. हाँ, मतलब बेसिकली I would rather play bishop c4. I think bishop a6 rook a6 ना, that rook c6 plan for black is a bit irritating for me at least. But I think वो भी possible होगा. दोनों possible है. ठीक है. हेलो शजेब, हेलो मनोज भाई, हेलो संकेत भाई. ये तो उठ के चल दिया भाई. इसको स्ट्रेस नहीं हो रहा क्या भाई? ओपोनेंट बोल रहा है बिशप टू e1. आई डोंट लाइक बिशप e1 बिकॉज़ अगर तुम कैप्चर करोगे तो फिर अनडबल करना पड़ेगा ना मेरे को. रुक, मैंने नहीं, बिशप के बिशप e3 आ रहा है ना. बिशप e1 बिशप e3 चेक. अच्छा सॉरी, बिशप e1 ये बोल रहा है. मुझे नहीं तो नहीं बोल, सीधे कैप्चर को चेक भाई. ये मर ही रहा है भाई. बिशप e1 इज तो टेरिबल भाई. निहाल पीछे देखो ना कैसे ही. Like I think Nihal is having a lot of draws nowadays. I think he's
like that's why he's lagged behind a little bit on the ratings. Like मतलब बाकी लोग थोड़ा आगे निकल गए rating से. Gukesh, I think even Prag is slightly ahead. I'm not sure exactly, but I think it's like मतलब he has had a lot of draws like against even low-rated players in open tournaments. So I'm sure he must be feeling under say कि maybe I'm he was the one to first to reach to Pfizer, right? He was the leading player among all the youngsters, and now he's lagging behind a little bit. Arjun is ahead, Gukesh is ahead. So he's not able to convert those games kahin na kahin. What about Bishop H5? Bishop H5 does nothing. हाँ वो ना मतलब it's like मतलब वो मतलब you just because you can play doesn't mean you should play वैसा वाला. हाँ exactly. But ये show off का move है, I feel like. नहीं भाई. अच्छा तुम चैट में क्यों बोलते हो भाई? Zoom chat तो घंटा देखी भाई हमने, आज तक नहीं देखी. भाई आज तक नहीं देखी. आप इधर क्यों डालते हो? आप डाल दिया करो भाई. क्यों नहीं डालते हो? हाँ भाई. निरंजन भाई क्या क्रेजी है भाई. Zoom chat पे हम लोग सब कुछ सारे चीजें लिख रहे थे, ये करना है ना. We never read the Zoom chat. आज तक मैंने Zoom chat लाइफ में नहीं पढ़ी भाई. हाँ. And let's reach to 400 likes भाई. We'll do the next giveaway and finally और poll में question है भाई, उसका आंसर कर दे फटाक से भाई. What do you think? Have you played OTB? Yes, no भाई. 40% have played yes and 60% said no. काफी अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन भाई. मेरे को नहीं लगता था OTB बहुत लोगों ने खेला है. खेला होगा यार, ऑफ कोर्स. कोई ना कोई टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट कहीं ना कहीं तो खेला होगा किसने. 1 point difference between Nihal and Prag. Yeah, मतलब I just feel कि मतलब निहाल बहुत पहले आ गया था यार 2650 पे. And then he's played so well in online chess, but OT में वो चीज same, he's not able to show the same performance. Like he's playing very well, but I think other youngsters have gone ahead now. Yeah, even Prag is greater than other youngsters. I don't think so यार. सबको ये बहुत अच्छा खेल रहा है. Arjun, look at Arjun, कितना अच्छा खेल रहा है brother. And then even one yesterday, even like I think Prag defeated Magnus twice, bro. मतलब क्या बोल रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं है. I don't think so. All the youngsters are playing incredible chess. भाई 26 मिनट है गुकेश के पास. He has to do it quicker. And the thing is, ऐसी पूछे टाइम बहुत मैटर करता है यार. At some point matters. You will have to really be fast because otherwise क्या होगा कि you will have a great position, but then you will not have enough time to calculate everything, and then you will make a one move mistake and spoil the entire game. So he has to manage his clock also very well. जितना मैं सोच रहा हूँ, I am liking this move now. Bishop C4 जो तू सही. हाँ, because it also develops the queen, right? Capture, हाँ, develops the queen और ये pawn pin हो रहा है ना. हाँ. When I push H4 H5 and if I capture, तो he has to capture back with this और ये भी मरेगा. Exactly. So now I'm liking this. जितना सोच रहा हूँ. Exactly. Can we just quickly go to Hari Krishna and see? Yeah, बिल्कुल. Two very important games at Hari Krishna and Gukesh. बहुत important games हैं. No moves are played yet. Can we have his cam? Hari Krishna. Hari Krishna is still thinking, I think. Yeah, he's thinking still. He has not played, right? Not played yet. I think he something did not expect. He did not expect DC. That's why he's thinking a lot. But he's just like making sure it's winning. ठीक है. It doesn't matter. वो एक प्लान में मिल गया ना कि ये विनिंग है, चाहे वो 50 मूव के बाद ही विनिंग है. समझ रहा? He will grind it through that. ये तो है यार. 50 मूव तक दुनिया में दो ही लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हरि कृष्णा और एक BeastStats. अरे नहीं, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा कि 50 मूव तक कैलकुलेशन नहीं. इट्स लाइक कि ये गेम लंबा चलेगा. इट्स एन एंड गेम. ठीक है, बट मैं इसमें विनिंग ही रहूंगा, वैसा वाला बात भाई. Hari Krishna winning, but Pentala is just better. Nice. भाई अब तो सिर्फ यार, लेकिन honestly, like he's always been this guy जो कभी-कभी ऐसा खेलता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो कार्लसन को भी हरा दे. And suddenly then he will lose a few games because even though he's the world rapid champion, he's not been invited to any top tournaments. He's not been there. He's not played at the top level like regularly. So kahin na kahin he's lacking behind. Yeah, matlab just like this. For example, let's say if Carlsen has a 5/5 score, he will play well the entire tournament. But यहाँ पे Abu Saraf clearly has a lost position already. So I think वो consistency का issue है. I think Abu Saraf को. I think that's kind of obvious.
और ये भी तो होता है ना यार, अब्दुल सत्तारोव इज मे बी लाइक इवांचुक, on a good day he can beat anybody, on हाँ a bad day he हाँ। can lose to a 2200, वैसा सीन। थैंक यू भाई यार, एज अ 2200 आई अप्रिशिएट इट। Not to you, but ये other क्या है भाई, other बोल तो दिया भाई, 2200 सो पे, यू कांट टेक इट other बैक, यू सेड other भाई। 2200 पे, not निरंजन you। भाई भी आई थिंक 2223 से ही है, तो ही आल्सो विल थैंक यू। या निरंजन भाई से हार सकते हैं मतलब, बट ये नॉट यू क्या है भाई। भाई, मैंने कौन से पाप करे भाई। यार हरकतें नहीं है तुम्हारी यार जीतने लायक भाई। बाबू कैन कैलकुलेट 100 मूव्स डीप, इंट्यूशन ओपी, थैंक यू सॉली भाई। भाई मोस्टली तो मैं पता है सोचता भी नहीं मूव खेलने से पहले, जब मैं स्ट्रीम में खेलता हूँ ना, आई डोंट थिंक व्हाइल प्लेइंग, बस आई थिंक दैट्स खेल ट्रू देता हूँ। फॉर ऑल प्लेयर्स। आई थिंक ब्लिट्स में तो बहुत कम सोचने का टाइम मिलता है, स्पेशली व्हेन यू आर स्ट्रीमिंग। तो चैट भी पढ़नी है, आपको अपना ओबीएस भी देखना है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, यू नो, तो बहुत चीज होती है। चैट क्लासिकल जैसी यही खासियत है भाई, कई बार ना यू हैव दिस मोमेंट जहां पे पता है कि भाई कुछ फटने वाला है, बस फट नहीं रहा है, इंतजार कर रहे हैं फटने का भाई। यस यस यस। एक बार क्विकली गुकेश पे जाते हैं, हैज ही प्लेड एनीथिंग येट? कार्ड लूज टू साहिल बाबू को he अफसोस has जा रहा है। played by bishop ओही, capture on a6 he has done, rook ओके, capture on a6, and now he played f5, what you suggested ओ भाई? वाओ, चैट यहाँ Yes, पे आग बबूले हो रहे हैं भाई। लेट्स गो टू दैट गेम नाउ एंड wow, सी व्हाट्स हैपनिंग। ही मूव्स फ्रॉम द बोर्ड, oh this is Nihal's board I think, which नहीं, yeah, so we have Gukesh's game on the board। हाँ ये f5 खेल दिया, अब क्या करेगा भाई ये? क्वीन से ये तो मारेगा, तो तुमने पहले ही बता दिया कि ये तो खत्म, ये लॉस्ट है, राइट? हाँ। एंड और क्या कर सकता है फिर ये? मेरे को और मूव सोचने हैं, क्या खेल सकता है? Honestly, I think Rook C6 was my stress. I think that was the move I was worried about because यहाँ पे मेरा king थोड़ा सा uncomfortable है, so Rook C6 makes a lot of sense to me. Just kind of preparing some threats. At least कुछ डराओ तो white को। कई बार क्या होता है ना, white के पास एक opponent के पास free hand है, वो बड़ी घटिया पोजीशन होती है बिकॉज opponent को कोई डर ही नहीं है। अगर मान लो अपने बचपन में जाके टॉफी चोरी कर ली मार्केट से, आपको पनिश नहीं हुए, तो आपको डर नहीं रहेगा, आप अगली बार गाड़ी चलाओगे चोरी, अगली बार आप क्या पता वहां किसी की बंदी चुरा लो। सो आई थिंक बड़े ध्यान से रखना है। एंड रुक C6 के बाद यू हैव टू बी केयरफुल, एंड किंग B1 के लिए थोड़ा डराओ व्हाइट को, कि डराना चाहिए उसको। ऐसे क्या होता है। साहिल बाबू को फ्लॉन्ट ही नहीं करने देता भाई, फ्लॉन्ट तो हम तब भी करें, करने दे ना करे भाई। भाई भाई पर जब भी गुकेश ने जब इतना टाइम लिया है, व्हाटएवर 5-10 मिनट्स, ठीक है, एंड व्हेन ही कैप्चर्ड ऑन a6, उनको तो श्योरली पता होगा ना कि ये रिकैप्चर होकर c6 पे आ रहा है। हाँ, would have thought about this, right? for sure I think as a pattern recognition होती है ना, you can see your king on c1, queen on c2, तो पहले आपकी आंखें ना ट्रेंड होती हैं देखने के लिए कोई भी पीस इस फाइल पे नहीं आना चाहिए भाई। बेसिक जैसे ही कोई आने वाला है ना, दिमाग में वो स्पाइडी सेंस टिंगल करने लगती है भाई, ओ कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। And once it comes, I feel like कि किंग को सीधे मूव कर दो यार। I won't once it was what, एक बार रुक c6 आ जाए तो मेरे को सीधे किंग को मूव करना है यार मेरे को। king B1 looks very logical, yes. Even though the Indian is saying that क्या है ये, queen to c4, queen c4, wow, yeah, I but think I would play that king is B1. very bold ना। That's very bold. I think king B1 looks very logical, man, because I don't want to put the queen on a4, that's going in the wrong direction, right? मुझे एक a फाइल खोलनी नहीं है, मुझे किंग साइड पे खेलना है, तो king B1 looks very logical, human move. And अब मेरा थ्रेट है भाई h4 h5 या takes on g6 या even e6 can be an idea, because e6 f takes and f takes g6 and opens up the king side completely. Got it. I think कि जीतेगा चैट। I think he might just, उसकी आंखों में जुनून दिख रहा है भाई, 6 out of 6 हो जाएगा तो भाई क्या क्रेजी हो जाएगा यार। He will go from 2698 to 2720 almost. Crazy man. Crazy है भाई। And Padmini has blundered भाई, चैट कह रहे भाई। Can we have a brief look? I think Padmini का transmission error था यार, I saw it. It was a transmission error. The game is not. Padmini had transmission error ना, जिसमें उनका हाँ वो queen के चक्कर में था। Yes. Chat, by the way, तुम लोगों की फेवरेट ओपनिंग कौन सी है भाई? कौन सी? फटाफट पहले तो 400 लाख पहुंचा दे, एंड अपनी फेवरेट ओपनिंग बताए भाई, कौन सी आपकी फेवरेट ओपनिंग? आपकी कौन सी है साहिल भाई? ये पूछने का सवाल है क्या? लंदन, वर्स्ट ओपनिंग इन द वर्ल्ड। हाँ, क्रेजी भाई, क्रेजी। टिक्कू भाई यार, मुझे लगता था आपको मल्लिका शेरावत से शादी करनी चाहिए यार, तुम्हें तो बहुत चीजें लगती हैं, सारी सही नहीं होती यार।
भाई 400 लाइक पर हम लोग करेंगे अपना अगला गिव अवे, तो फटाक से करते, वी आर ओनली 34 अवे आई थिंक, राइट, नॉट मच। सो फटाक से लाइक कर दे ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के अपना गिव अवे दे सके भाई। एंड यहाँ पे पद्मनी के पास एक क्वीन नहीं है, विच इज मिसिंग। वो एरर है यार, वो एरर है। लेट्स गो बैक टू द गेम। आई थिंक मुकेश गेम है, दिस इज एन एरर, ट्रांसमिशन एरर है। ओके लेट्स गो बैक टू इटालियन, लंडन, इटालियन, 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 सब इटालियन बोल रहे हैं। अरे इतना फेमस इटालियन यार। इटालियन, व्हाई इज इटालियन सो फेमस भाई? आई डोंट नो, मुझे तो फ्रेंच ज्यादा पसंद है यार यूजुअली। आई लाइक द रूई लोपेस, I like French things are awesome. very solid, and sometimes you can Very have intense. हाँ बहुत डायनामिक गेम्स भी आते हैं भाई उसमें। डायनामिक तो फ्रेंच भी एक्चुअली। हाँ फ्रेंच भी है। बहुत डायनामिक है। ये देखो भाई कैसा बेशर्म आदमी है। बेशर्म, गुकेश को बेशर्म बोल रहे हैं यार। भाई ये देखो हो गया भाई, moves I played on हरिकृष्ण बोर्ड, H captures। Okay, फिर on G3, rook capture on G3, knight to F4। Oh, it's happening, Chad. It's happening. It's happening, and this is incoming, guys. This is incoming. We will show it to you. Captures. He cannot capture here for now. एक second. इसके बाद क्या था? Oh, Nice two. Captures. This check. यहाँ पे block किया. Capture. Rook to D2. Capture here. You come here, and this will be a game, bhai. I hate that French bishop, but that bishop is the bishop. Once you exchange it off, it provides you a lot of pleasure, man. So I think हरि कृष्णा का भी देखेंगे क्या खेलेंगे वो। I think he looks confident. I think he's seen all of it. And अब तो उसका टाइम बहुत कम है। So thing is ये complications जो है ना निकालने के लिए he will have to think for a long while. And अगर वो ऐसे करेंगे तो टाइम भी बहुत कम जाएगा उनके पास। And how many moves have they played? They've played like 22 moves, right? So 18-19 मूव खेलने बाकी है, बहुत टाइम पेंडिंग, ज्यादा नहीं है। आदिमान की कुछ लोग मूव्स देखने चाहते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू आदिमान आल्सो, लेट्स चेक इट आउट। ओके आदिमान क्या खेल रहे हैं। एंड आई आल्सो वांट टू सी व्हाट मैग्नस इज डूइंग यार, काफी टाइम से नहीं देखा है। हाँ वो भी देखेंगे। आदिमान अभी ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है गेम, मतलब 5-5 मिनट, इवन दो द गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट 5 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं सबको मूव खेलने। आदिमान की क्वीन F3 से अब C2 आ चुकी है, and it does seem to be slightly better for black now because queen is very vulnerable on C2. Yeah. And black has a center, and I think black is better. So Ter Sakhiya ji Adiban पे पूरा प्रेशर डालते हुए, and this does not look great. Chat. As white, मैं चाहूंगा, मेरे को पता है, मैं चाहूंगा इस पोजीशन में that I exchange stuff. हाँ, but क्या बिशप देके नाइट लेना नहीं है? That would be horrible. हाँ, that is horrible. Usually. That is the problem. So it's not. I want to do it, but मेरे को समझ नहीं आया किस तरह से exchanges करूँ favorable भी हो जो। नहीं, the first thing is like what happens if I like it's black to play, right? Abhi. So my threat is like something like I don't know, like मतलब threat is bishop f6 and then knight takes d5, right? So I have to do something about that also. So I think d4 from black might be an interesting try. d4 खेल के पूरा open up करने का सब कुछ. Yes. And usually ये hanging pawns का plan यही होता है, एक pawn को push करना and disturb the coordination among the pieces. And after e takes d4, then I can play a move like bishop to g4. Bishop to g4. हाँ. The idea is to basically pin everything. सब कुछ pin कर दिया भाई. Now knight takes f4 is a threat. C takes d4 is a threat. And यहाँ बहुत कुछ pinned है. Bishop takes e2 can be a threat sometimes. And ये बहुत dangerous लग रहा है मुझे. So Adiban is struggling if black can find this move like d4. And he played d4. He played it. Oh, wow. Chad, Adiban is struggling. Adiban is struggling clearly. I think Adiban, I am not sure he'll survive this. It looks very, very difficult for Adiban to survive this, chat. So we have to be careful here. Adiban might just lose with the white pieces. Can we go to all the remaining 3 boards of my one bar? Let's go to the game of Ronak. Nepotism करके इस चैनल पे मॉड बना, तो मैं खुद मॉड नहीं हूं मैं अभी यार. Can we go to the game of Ronak? Is he drawing the game? Yeah, he is still, right? He is, I think, still drawing the game. I don't see anything changing too much. D7 is coming soon, but should be possible. Should be okay. So looks equal, I think. Ronak's game should be equal. So that's half, 1.5 in their favor. Can we go to the game of Nihal now? So Nihal's position is still here, kya? Has he not played anything? Yeah, he's still thinking. No, we have a few moves. We have rook takes c8 hasn't played. Rook capture c8 with check. Rook capture c8. Rook c1. A5. King to f1. A4.
A3 and king to F7 भाई. अभी तक इतने गेम होते हैं. But Nihal cannot win this. So chat, this is not looking good, right? Because Nihal ka at best draw hai. Then Ronak ka at best draw hai. That's one each. But Adiban is losing. So if Adiban loses, that will be 2-1 in the favor of the opponents, Armenia. So Gukesh has to absolutely strike today. There is no other choice for him. If Gukesh doesn't strike today, then India will lose. It could lose, like Adiban does not come up with some crazy ideas. And Adiban does not look confident here. On the other hand, let's see now Vidit की game में क्या चल रहा है. We have not seen Vidit for long. Okay, let's go to team A now. Briefly, एक बार उनका भी score check करते हैं. कैसा चल रहा है सब कुछ. And all the 4 boards one by one. Okay, so first game we have VD here. VD has the white pieces chat, and the bishop has finally come to A3. Yes. So there's pressure on D6, but the knight on F7 defends everything really well. And I think this should be equal. BeastStats, क्या लग रहा है? हाँ, but इसके पास बहुत कुछ है ना. ये भी अटैक कर सकते हैं अभी हम लोग नाइट हटा के. हाँ, but just A6 from black, and it's not easy. It's not easy. फिर यहाँ लाके ये भी अटैक कर सकते हैं, डबल अप कर सकते हैं. ठीक है, पता नहीं. It looks equal. Double pawn है ना? हाँ, ये तो है, but जो भी play, very easy play for white यार. It can keep. हाँ, but white is like he can roam around forever. But the thing is, जीतने के लिए it's not easy. Where do you break through? It's not easy. And looks equal. Let's assume half each. Let's go to the game of Gukesh. Arjun now, sorry. Yes, Arjun is here. ये थोड़ा सा risky हो रहा है यार. Arjun is playing against Sindarov, and it seems like Sindarov is better. Because वो double pawn, अगर यही pawn E5 पे होता, so certainly black would play F5 and gain a lot of space. But Sindarov seems to be slightly better. He's put the rook on A1, and we can't challenge the rook because A8 square is controlled. And जो C3 पे weakness है, उन्होंने defend कर दिया knight on E2 से very comfortably. So I think Arjun also under pressure. Oh my. This is slightly worse for Arjun. He's also 10 minutes behind. So for now, it looks like Arjun under pressure. VD drawing, right? So we go to the game of Sasikiran now. That is the all-important game. Can we go there? Yes. So far, if you assume the worst, it's half, 1.5 in their favor. And we go to the game of Sasikiran. Let me also open it up. And Sasikiran is playing the, I would say, the weakest team technically, but he seems to be slightly worse. He seems to be worse, Chad, because after queen takes F3, which is, I think, the logical move, I think black has the bishop pair. He has a very solid center. And I just don't see any problems. He can play D5 after moving the queen as well. 2 bishops, clear 2 bishop advantage. Yeah, I just don't see any issues at all. Yes, and 2 powerful bishop, भाई. Yeah, very strong bishops. पूरा हाफ में काट दिया बोर्ड भाई. ये इधर से हाफ में काट दिया बोर्ड भाई पूरा. और जब वो क्वीन हटेंगे और D5 खेलेंगे तो वो किंग की तरफ पॉइंट करेगा. तो so Sasikiran also slightly worse. Wow. Oh my God, this is not looking good for both teams. Can we go to Hari Krishna's game? Yes. Hari Krishna absolutely has to strike now. There is no other choice for him. He has to strike. He has to strike. यार जो equal नहीं है, it's slightly worse. और top level पे क्या होता है ना, ये slightly worse पे they create pressure, more pressure, and it becomes very difficult at one point. एक बार हिकारू ने कहा था भाई कि हम लोग ऐसे मोस्टली वी डोंट लूज ऑन ऐसे कि एक पीस ब्लंडर कर दिए. एक हारते हैं वैसे भी, पर मोस्टली वी डोंट लूज लाइक दैट. मोस्टली वी लूज लाइक कि ऐसे 50 मूव के बाद हमारा किंग का पोजीशन यहाँ पे वहां था, H8 पे था, H7 की जगह, इसलिए हार गए. Something like that. Exactly. So I think it's looking not that great. Hari Krishna seems to be better though. I just don't feel that this is easy. And but the thing is, दो boards पे A session में India is slightly worse, and एक पे they are completely winning. So it's like, very scary. Like it could happen कि Hari Krishna wins and जो worst वाले हैं वो defend कर ले and India wins. It could happen कि somehow even if Hari Krishna wins, दो हार गए third and fourth board and India loses. So it's not clear at all क्या रहेगा. Welcome back, Anisha. Anisha, can we have a look at the game of Carlsen once? And then we'll come to Gukesh.
भाई एक सेकंड ना, मैं बस देखना चाहता कि क्या खेला है इसमें अभी तक. He played, I think, bishop a7, yeah? Yeah, he has played bishop to a7. And now I think king b1, I guess. Just king b1. Now everything is fine. Now I can again concentrate on my attack, है ना? Exactly. Did he play it or is it just bishop a7 right now? No, he has played bishop a7. Okay. But king b1 is not played yet. Maybe he's thinking. Bishop a7 does not feel that great though. I mean, rook c6 was better somehow. It's like, मतलब bishop को मैं बाद में decide करता कहाँ खेलना है. Rook c6 is what I actually want to play, right? So first play the obvious move, and then decide where to put the bishop. Thank you. You are my true friend, of course. Magnus, let's see Magnus का क्या सीन है भाई. कैमरा अगर यही रहने देना हम, and we can look at Carlsen's game side में. Yes. ये भाई Magnus की गेम भाई अभी. हाँ, he's playing Anton Smirnov from Australia. And the pawn on f3 is a very interesting pawn because white has apparently allowed it to be there, but white is attacking on the king side. And as the bar suggests, the game is roughly equal. And जो bishop on c5 है ना, chat ध्यान से देखो, it has cut off the black king from coming to the center now. So अगर king side खुल गई, तो Carlsen's king can get assaulted on the king side because king के पास escape का रास्ता ही नहीं है. So this is not comfortable for either side. Both sides trying to put pressure. कोई पता नहीं कौन जीतेगा. So Carlsen not really better so far. ये स्मिर्नोव इतना छोटा बच्चा है कि सिर्फ फोटो लगाई भाई. नहीं इतना छोटा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा बड़ा हो चुका है वो. But हाँ, I think he's young. He's younger. एक सेकंड, क्या आया है भाई निरंजन भाई ने. So I think क्या होता है अब देखते हैं इसमें. And King f7's comment. मुझे भी नहीं पता. समझा नहीं भाई, आप सीधे मुंह से बोलो ना यार, मैं समझ जाऊंगा यार. आप क्या टाइप क्या भेज रहे हो व्हाट्सएप पे मैसेज भाई. Okay, I think Niranjan भाई is in the back end भाई. वो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं भाई. We can go to the game of what is their favorite world champion. Chat बताओ भाई. What is your favorite world champion भाई? Who is your favorite world champion? अच्छी chemistry है. Thank you भाई. Sahil Tickoo. My favorite world champion. I would say Carlsen, man. I think I have to say it. Carlsen, Kasparov, both. But I think if I had to analyze somebody's games, I would say Kasparov because I really lack in that skill, of attacking play. So I would learn more from that. But I think overall, I think Carlsen, yeah. I think we can see him play live. So clearly Carlsen. Yeah, Smirnov in the early 20s. Yeah. Early 20s. I think. But I think then Magnus is winning this game by. I'm not sure. Yeah, looks very dangerous both sides. Yeah, it looks very dangerous. What he will do, I know. He will keep on grinding. Time pressure पे लाएगा and time pressure पे एक move थोड़ा mistake करेगा and Magnus Carlsen will win. हाँ, वो तो है. वो तो हर बार होता है भाई. वो तो. और यही होना है. और especially जो ऐसे कम एज के रहते हैं ना, ठीक है, उनके साथ यही करता है Magnus. I have seen this so many times. उसके इतने सारे गेम में. एक नहीं था, he was like invited to play this guy. I forgot his name यार. बहुत ही तगड़ा खेल रहा था वो. ठीक है. I forgot his name. एक इवेंट के लिए बुलाया गया था उसको और मैग्नस ने उसको इसी तरह से हराया भाई हर बार जब भी खेला. तो विशी आनंद सर, विशी जुड़ित. अनीशा ने विशी और कार्लसन सेकंड पे बोला है. नाइस डिस्प्ले ऑफ पेट्रियोटिज्म आउट ऑफ कंपल्शन. Then we have Vishi Anand, Tal Anand, Magnus, Manuel Lasker. I think Bobby Fischer was my favorite guy. But he was also like a guy who would like वो मुंह पे गाली दे देगा भाई, literally हल्का सा irritate किया तो. Of course, I'm not saying, but the guy, समझो ना यार, एक बंदे ने ना, he revolutionized chess वैसे उस सीन में. वो तो है. समझ रहे हो? उसने पेमेंट सबकी इंक्रीज कर दिया सब. Played e6. Can you go to the game quickly? Yes भाई, मेरा कमेंट इंपॉर्टेंट थोड़ी है भाई. Let's go. नहीं वो इम्पोर्टेंट है बट गेम चेंज हो गया भाई. Just एक सेकंड, मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई. गुकेश की गेम. सागर भाई saying it is not easy to find so many only moves for Hari. Yeah, it is not easy, but I think he has to find it. He's not the choice now. No choice because we are struggling on two boards. एक कल तुम लोग बोल रहे थे चैट्स की सागर भाई ने बोला कि only moves are easy to find. आज कह रहे हो it's not so easy to find. सागर भाई फ्लिप मार. Oh, Nihal is game finished. Can we check? I think draw होगा यार. Oh, Nihal's game is draw. Nihal game is draw. Can we look at the game once and then we come back to this game? Yes, they agreed to a draw, chat. They have agreed to a draw in this position, it seems like. नहीं आगे खेला है भाई इन्होंने. I think they have repeated the moves. Okay.
So Nihal, okay, this is of course makes sense. Okay. This makes sense to draw. By the way, Abdul Salam ने खेल दिया knight g4. He played that move, yeah. Okay, एक बार ये देखने लगे गुकेश ने क्या खेला है. तो गुकेश ही देखेंगे of course. I just want to say कि उसने खेल दिया है. Let's look at the game. E6. He played E6, just opening up everything. He's like अभी कोई threat नहीं है direct. So let me play this, है ना? So this is rather not the best move in the position. King b1 was the best actually. Makes a lot of sense. Lekin e6 practically makes perfect sense because you want to open up the black king side. Practically it's a good move, but objectively maybe king b1 first would have been better. ताकि पहले हम थोड़ा अपना king save कर लें, बाद में हम risk free advantage से खेलेंगे. थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें. Rook c6, queen d6, rook c6 कुछ आ ना जाए तो चक्कर है उसमें. Smirnov age 21. I know man. Smirnov नाम मैंने बहुत बार सुना यार. पिया नहीं है, but सुना है. Of course you did, bhai. Of course you have. So let's see what black does now. Black के पास 15 minute chat. 14 minutes for black now. 20 for Gukesh. Very interesting game, bhai. बहुत interesting, bhai. I think the fact that he's 5-on-5 and there is like he's not lacking in ambition, bro. He's like जीतना है. Yes, correct. He जीतना है भाई, कुछ भी हो जाए. 5-5 क्या होता है भाई, जीतना है भाई. By the way, Hare Krishna has going to see this plan, yeah, knight g4, bishop g4 now. I think Hare Krishna will find it all. Yes, for sure. No, bishop capture तो करेगा ही ना यार. करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं. हाँ. जब बिशप अब तो सतारव ये तो खेलेगा ही ना, नहीं तो ये मारेगा कैसे बिशप. हाँ, ये नाइट हटने वाला, क्वीन मर रही है, तो करेंगे क्या हम? और ऑप्शन नहीं है. और कोई ऑप्शन नहीं, तो ये दोनों तो हो रहा है. He takes it. Yes, he takes it. देखो ये तो मतलब तो ये तो खेलना ही है यार. It is kind of forcing, to be honest. हाँ, it is forcing. इसके बाद तुम ये तो खेलोगे ना यार, ये नहीं मारोगे. रुक मिल जाए तो मारना ही पड़ेगा. हाँ, like ओई चेक के साथ. He played knight e3. को चेंज किया उसने कुछ. He played knight e3. हाँ, and now it's completely lost. It's -9. Bishop e3. It's over. Hari is winning. Bishop e3 is the only move though. He played knight to e3. Only move bishop e3. Now knight e2 doesn't work. It's winning for white then. So because knight can come to f5 also, he has to find bishop e3 now. Only move. क्या है? I can't see it. Bishop e3 now. Bishop e3. Bishop to e3. हाँ, basically you take with the rook now. Rook e3. ठीक है? ऐसे rook से मारा. You have to capture it with the rook. हाँ, of course कहेंगे. And now the best move is king to f6. नहीं भाई, this is इसीलिए खेला उसने अब्दुल सत्तारों ने शायद इसलिए. Just to make it more complicated. हाँ, maybe. Wow, भाई ये chess player बहुत तेज होते हैं भाई. But he has to take on e3 now. He has no other choice. बाकी सब कुछ में either he's lost or equal. He needs to find bishop e3 right now. भाई ये chess player क्या crazy होते हैं भाई. Like he knows कि उस तरफ तो मैं हारूंगा, पर इसमें इसको complicate करता हूँ, try करता हूँ. हाँ, वहाँ थोड़ा forcing है. हाँ, yeah, let me try this. So let's go to the game of. Can we go to the game of Gukesh again? Yes, sure, भाई. Oh, this happened, yeah. Pranali is in the chat. Yeah, hi Pranali, how are you? Hey, Pranali. I didn't see you commentating for a long time. Lakshya कह रहा है Pranali को. Yes, we will have Pranali someday, maybe if she's free. And if Sahil allows. ये क्या है भाई? ये क्या लॉजिक है भाई? मैं क्या हाथ थोड़ी बांध के रखे Pranali के. Anyways, e6 played now. Let's go. गुकेश के ओपोनेंट प्रेशर में 12 मिनट है उसके पास चैट. 12 मिनट. I think he might just, crumble under pressure. 17 moves has to be played in 11 minutes भाई. 17 moves के 30 seconds भी जोड़ ले, 16 मान लेते हैं just to round up, तो मतलब हो गए 8 मिनट एक्स्ट्रा. तो 20 मिनट में इनको 17 moves खेलने एक तरह से मान सकते हैं आप. बिल्कुल. Looks very difficult. हमने कितने गिव अवे करे आज? आज हमने एक ही किया ना अभी तक. एक किया ना, एक और की बारी. चैट करे गिव अवे फिर क्या बोलते हो चैट? Yes, let's go for the video guys. Let's do one more. एक काम करते हैं, instead of asking something which has already happened, let's ask something जो होने वाला है. तो वो तो प्रेडिक्शन की तरह हो गया ब्रो. हाँ, प्रेडिक्शन की तरह. And how we will make sure कि किसने बताया था आंसर. जो पहला बंदा सही बोलेगा उसको दे देंगे. अभी पता नहीं लगेगा, but we'll get to know in a few minutes. क्या बोलते हो? Yeah, but somebody has to take a note ना कि इसने ये आंसर बोला था, इसने ये आंसर बोला था.
नहीं, ऐसे we can ask him to guess the next move. No, तो अभी तक 2 मिनट लग जाएगा. Guess the next move. Okay. है ना? Guess So, the next move. कौन से गेम में? कौन से गेम में कर रहे हैं? I think हरी गेम is complicated enough. नहीं हरि कृष्णा के गेम में I think he will तो find एक ही मूव है, I think. या एक बिशप move है. कैप्चर्स नाइट, नहीं तो बाकी सब कुछ एकदम वो हो जाएगा. Okay. So if we go to which game then? Okay, let me see. But something happened. He played king to h8 क्या? Oh, he did not take. He did not take. Who? I think Gukesh's opponent played king h8, I think. Chad, okay. He played king h8. Yes. And King h8, king b1. King b1 played. Yes. Chad, guess करो black क्या खेलेगा यहाँ पे. Just go for it. ठीक है ना? Black क्या खेलेगा guess करो. And whosoever is the first guy to find the correct move, not the best move, the move black will play now. Yes. जो पहला निकालेगा बंदा, he gets the membership. Let's go भाई. कौन निकालेगा? King b1 played by Gukesh, by the way. And now black अगर कोई mod है, अगर मेरे भी mod है जो मेरे चैनल पे, वो लोग भी they like have a look कि किसने क्या आंसर रखा था, मतलब just remember it. हाँ. And उस बंदे का चैनल भी, if you can. Yeah. Kilua is there. Let's go. Patel is there. Please have a look. Yes. Black has to play in this position, guys. King h8 and king b1 is played by. बिशप c3 लोगों ने लिखा है. एक ही मूव लिखना भाई, बिकॉज पहली वाली काउंट होगी. 5 मूव लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है भाई. इतने बेवकूफ नहीं हम लोग. Chess.com India, Prashant bhai, BeastStats, what question for you? What is prophylaxis move? Prophylaxis वो move हो गया where you anticipate a move that can happen in the future and उसको पहले ही से defend कर लिया, वो prophylaxis भाई. Yes, exactly. BeastStats होगी भाई. बहुत लोगों ने मूव लिखी है भाई. One of the craziest prophylactic player in the history was Anatoly Karpov भाई. Yeah, बिल्कुल. Considered to be one of the best. बिल्कुल. बहुत लोगों ने मूव्स लिखी हैं. रुक d8, क्वीन d6, रुक d6, वी हैव रुक e8, रुक h8. कैसे भाई? किंग के ऊपर बैठ जाएगा क्या वो? भाई एंड हरि कृष्णा के गेम में कुछ हुआ है भाई. बिशप कैप्चर e3 इज प्लेड. रुक कैप्चर e3 हो गया भाई यहाँ पे. अरे ऑसम. हरि कृष्णा इज कंप्लीटली विनिंग नाउ. बट नाउ किंग टू f6 और किंग टू h8, समथिंग हैज टू बी फाउंड. हाँ. आई थिंक किंग f6 लुक्स मोर लॉजिकल. आई थिंक सेफर समहाउ. चैट स्ट्रीम लाइक करो. 600 पे एक और गिव अवे. स्ट्रीम लाइक करो सबके सब भाई. चैट लेट्स गो. एंड फिलहाल देखते क्या होता है. 600 भाई. वी विल डू नेक्स्ट गिव अवे एट 500 गाइस. तो लेट्स गो. ओह वाओ. These are generous. Yes भाई, ऐसे मन क्या बोल दिया भाई. Also. Let's go to the game of hopefully let's go Gukesh's game भाई. हमें देखना है कौन जीतेगा. ब्लैक क्या खेलने वाला है. ब्लैक के पास 8 मिनट है अब. 8 minutes he has to play 16 moves. Yes. भाई और नजर भी हम लोग कैमरा पे भी रख सकते हैं भाई कि क्या मूव खेलेगा, कौन से पीस हाथ लगा रहा है भाई. क्या Gukesh's कैमरा, इट इज ऑसम. आज मजा आ रहा है यार. ए और बी की दोनों कैमरा है ना. कुछ कह रहे थे बीस भाई? नहीं आई एम जस्ट गुकेश की गेम के लिए बोल रहा था, कैम के लिए. ऑसम. मेल्टिन 2 कह रहा है भाई. मेल्टिन 2 कहां से दिख रही है भाई? इतने जीनियस भी नहीं है यार कोई यहाँ पे. ओपोनेंट की लगी पड़ी है भाई. 7 मिनट ऑलमोस्ट भाई. क्या लग रहा है चैट? विल गुकेश स्ट्राइक? ही हैज टू. He will definitely. And imagine already तुम देखो टाइम प्रेशर में किंग h8 जैसा मूव खेल रहा है. he is getting nervous, right? हाँ. एंड पूरा किंग साइड खुलने वाला है अब. हाँ, किंग साइड खुलने वाला है एंड एवरीथिंग इज अटैकिंग दैट साइड. हाँ, दोनों खुलने वाले हैं. बिशप को बस एक पॉन मूव कर दो e4 पे, ये बिशप भी खुल जाएगा. क्वीन पहले से देख रहा है. वहां पे पॉन है. h4 h5 भी पुश सब कुछ कर सकते हैं. मतलब एवरीथिंग इज देयर. हाँ. एक बंदा कह रहा है स्कैम है, गिव अवे अभी तक नहीं मिला भाई. तो कल का गिव अवे अभी थोड़ी मिलेगा भाई. इट टेक्स अ वीक. ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल टेक 7 to 14 days. You have to contact Niranjan bhai on Twitter or Instagram. It can happen before 14 days, but it generally takes 7 to 14 days. Please make sure this has been told from the start and don't put say faltu allegations. Thank you so much. And all else, next time if you say so, Lakshya Chaudhary, your giveaway will चलो भाई, धोखा दिया क्वेश्चन में. कौन सा क्वेश्चन भाई? Oh, he played GF5. So who was the first guy to check GF5? Let me see. किसने बोला था क्या? Let me see. GF5 किसी ने बोला भी है? किसी ने नहीं बोला भाई. Nobody. Everyone is checking the engine and saying the best move. No, bhai. Nobody said GF5.
एक बंदे ने नहीं बोला भाई GF5। अब कह रहे हैं पर अब कोई फायदा नहीं भाई। अब फायदा नहीं है भाई, अब क्या हो गया नायक जी? ऐसा कौन सा नाय है जहां पे मूव चलने के बाद बता रहे हो? एंड पता है आप बेस्ट मूव क्या? चैट चैट चलो ठीक है, नोबडी सेड इट। Chat, what will Rukesh play here? What will Rukesh play here? That guy gets the membership now. क्योंकि GF किसी ने नहीं बोला what will Rukesh play here? Come on chat, कौन निकालेगा? Find Rukesh's move. Wow, Not the best move. The move Rukesh will play. What do you think, chat? You have to find the Gukesh का जो move है, but this move is crazy भाई जो। हाँ ये insane है। Wow. लोग कह रहे हैं रुक D6, क्वीन F5। रुक D6 पॉसिबल ही नहीं है भाई। Chat 7 minutes of opponent 19 for Gukesh. Opponent looks very nervous right now. Queen F5, Queen F6, Bishop B4, Bishop F6 तो possible ही नहीं है। Bishop C3 possible है but okay looks bad. ठीक है काफी रुक G8 चेक तो भाई फ्री का रुक नहीं देगा यार वो। E8 भाई E पॉइंट E6 से क्वीन के ऊपर छलांग मार के कैसे E8 पहुंच जाएगा यार? ये कौन सा क्वीन प्रमोशन है? क्वीन C4 ओके। बिशप C3 बाय क्या है भाई? E4 ट्रिपल कैसे करेंगे? लेकिन बिशप है ना यूट्यूब पे। क्वेश्चन बदल दिया साहिल टिकू भाई। कौन सा क्वेश्चन भाई? नहीं सही क्वेश्चन मैं पूछा था भाई। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था H4 is a bit slow man. H4 is too slow है ना? अरे H4 नहीं, H4 is horrible. Let's see, Ukesh will play it very soon, chat, because he knows he's sitting up straight now. He knows he found something. है ना? लग रहा है he found something. है ना? शक्ल से लग रहा है he found something. Let's see क्या होता है। He's very ऐसे भाई खेल दिया तो क्या crazy हो जाएगा भाई। Will he play? Come on. Rook G7, King G7, Rook G7 looks a bit sus, man. Come on, Guki, let's go. Queen F5 is also, I guess, possible, but I think Queen F5 पे pieces exchange होने लगेंगे थोड़े से मुझे लग रहा है। Queen C4, what about Rook E6 then? मैं रट्टा मार के आया था भाई, वो भी आएंगे भाई, don't worry. Guki looks excited, man. I think he'll play something crazy now. कुछ तो crazy आ रहा है भाई। He looks at the opponent, tear दिया भाई opponent को, ऊपर देखा। BC3, Queen capture F5, बहुत सारे moves आ चुके हैं भाई। And निरंजन भाई कह रहे हैं Queen backing up to Rook, ये क्या है भाई? अच्छा ओके हाँ, अगर क्वीन और दुर्ग लाइन में लगे तो उसको एलेफेंस गन बोलते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मुझे वो होना। रूह H5 एक बंदे की रूह ही H5 पे बैठी है भाई। और अपनी रूह को थाम के रखे भाई। H5 भी ना जानते हैं उसको भाई। He has seen something ना, he has seen definitely। हाँ, he's seen something, कुछ तो देखा है भाई। He's something crazy। And he has played Bishop capture on B4। Really? Oh, he played it? Yes। He found the move. Who was the first guy to see Bishop E4? भाई अभी तक मेरे को बोर्ड पे नहीं दिखा, यहाँ पे खेल दिया पर। खेल दिया Bishop E4। Let me see who was the first guy to find Bishop B4. बहुत लोगों ने लिखा था Bishop B4। Wow। Bishop B4. Let me see. Lakshay Hinduja was the first guy. Bishop B4. I think. He has played it, भाई, played it। दिख रहा है हम लोगों को साफ कैम में भी भाई। That he has played Bishop capture on B4. Crazy। Lakshay Hinduja's first guy to find Bishop B4. Awesome, well done, भाई। Now the idea is that if you capture the bishop, then I'm coming here threatening mate in 2. ठीक है? And the way to protect is to go back. Let's say go back, I will play E7. हाँ, E7 is the crazy move. E7 is. Wow. Oh, he takes. He took with the queen. It's over. It's over. It's over. He's losing. Queen. Hi, he took with the queen. It's over now. Queen B4 blunder. Queen G2 is winning on the spot. It's over. Queen G2 is winning on the spot. Wow. Rukesh is going to be 6 out of 6. Dude, what the hell? He reaches 2-7, 2-0, 2-7, 1-9 or something. Yes. भाई साहब. अब तो मतलब काफी तरीके से जीत सकते हैं. It's not just Queen G2. ओ भाई साहब.
Wow. भाई साहब क्या खेल रहा है यार. गुकेश ओपी गाइस, गुकेश ओपी. मैंने उसके जीतने से पहले ट्वीट कर दिया भाई गुकेश वन. He can now, but he can now try this, ना? गाली नहीं Queen to पड़ेगी E4 hopefully. check. You have to capture. हाँ, but then let's say कि तुमने कैप्चर किया भी. Let's say queen g2, queen e4, queen takes e4, f takes e4, now e7. Now e7. Yeah, I also thought e7, and now rook e8, and now rook g8 check. Rook g8 check. Oh wow! And I queen, no, and I queen. You can capture and queen with a check. Wow. Chat 250 ले देने के सब लाइक कर दो भाई. crazy हो रहा है. Wow. भाई साहब. भाई मैंने ट्वीट कर दिया गुकेश वन. अब जीत जाएगा ना भाई. ट्वीट भी कर दिया ही वन. ट्वीट भी कर दिया भाई वन. लेट्स गो. बंदे की ओपन की शक्ल में 12 बजे भाई 13 बज चुके हैं. He played Queen G2 chat. He's completely winning now. Completely winning. What a beautiful game. And वो क्या स्टेयर दिया ना कुर्सी से उठते हुए ना. He gave that स्टेयर. है राही प्यार के. He played Queen G2 guys, and it's over. It's over. Literally over. He can't do anything. I don't see it at least. भाई Indian can't see it. भाई हम लोग क्या करेंगे? Nobody can see it भाई. उनका ओपोनेंट भी नहीं देख सकते. Only thing I think Queen exchange is the way to go कि एक रुक बिशप वर्सेस क्वीन खेले. And I don't think anything else. The thing is, इतने आइसोलेटेड पॉन्स हैं. रुक और बिशप कोने में अटके हैं. हाँ, कोने में अटके. वो भी मरेंगे. चेक हाँ, वो भी मरेंगे और पॉन भी मरेंगे. वही तो है. Exactly. हाँ. भाई साहब क्या खेल रहा है भाई. भाई insane play. 6 out of 6 भाई. I just want to point out one thing. I'm going to his rating profile, and if we go to Gukesh, he is first of all 2006 born, 16 years old. ठीक है. 2000 के बाद भी लोग पैदा होते हैं. 2006, not even 2000. ठीक है. And if you look at in the past 4 months, 22.5 rating gained in April, 22.4 gained in May, 15.6 gained in June, 8.6 gained in July, 14.5 gained in August, and he's already gaining another 20 or so. And crazy. I mean, he was ranked. I think he was ranked 2614 this March. Bhai Sahab, he was 2614 this March. Oh my God, he gained 100 points. 100 points, bhai. 100. It's crazy. Chat तुम लोग ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं, but 100 rating is insane. Oof. ठीक है. That too at that level. 2600 2700. 2614 this March. And he's just 16. Bhai Sahab. भाई सर पकड़ लिया है भाई opponent ने. He doesn't know what to do. He just doesn't know भाई. भाई कितने महीने में भाई? अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त. भाई 4 या 5 महीने भाई. भाई ओपोनेंट को देखो ना एक बार. Just look at his opponent भाई. He's just devastated भाई कि हो गया, खत्म, क्या करूं मैं. Man, this is insane. Wow. Has he? Oh, he has already played by Queen E4 check, Queen capture E4, F capture E4, and now we know what is incoming, guys. E7 is incoming. Sahil for IM, thank you, bhai. But आज Ukesh तो क्या फेल रहा है भाई? And we have the game. We have. I think on the board खेल चुके हैं ना शायद. I think काफी कुछ हो गया. Let me see what happened. Queen G2, Queen E4 check played. Queen E4 played. Fe4 played. Rook G8 check. I think E7 has been played already. India number 2 incoming. Exactly, chat. Yes, India number 2 incoming soon. He's going to be but India number 2. Also winning, guys. Hari also winning. भाई सारे रेस में लगे हैं भाई. कुछ समझ नहीं आ रहा है. तू आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ. भाई साहब. Hey, we have a queen on the board, guys. We have a new queen on the board. भाई स्लो मोशन में मारा है. खत्म भाई, खत्म. क्वीन आ चुकी है भाई बोर्ड पे. क्वीन उठाई है. E8 पे रख दी है.
ओपोनेंट के एल लग चुके हैं भाई, खत्म, ओवर। वाह फुजा तो कुछ भी नहीं भाई, 5 months में he gained 100 points, dude. That is just freaking insane. I have to just say that. Yes, it is. It's really motivating, man. I mean, it's really motivating. 5 months mein he can gain 100 points at that level. It's just, I mean, mind blowing. It's very difficult, guys. From 2600 to 2700. It's insane. That will go to Vidi's game, but I think फिलहाल के लिए we have to give him this moment. Yeah, I think opponent resign करने वाला है. He's going to resign very, very soon. You can see it on his face. This is the moment Guki reaches, 2719. It is just insane, man. He's gained 100 points, 105 points in the last 5 months. Queen e5 check played by Guki after king g7. And now c7 is falling apart. It's all over. It's all over, chat. Opponent की शक्ल देखो भाई. Yes. He's like, ooh. ये भी आ रहा है. He knows it's just gone. E7 possible, no? I think E7 नहीं था. I think E7 में I think there must be EF7. You have to see, I think. नहीं, EF7 won't work, ना? नहीं, मैंने भी सोचा था EF7 ना work नहीं करेगा. हाँ, E7 doesn't work. It doesn't work. Rook g6 आ रहा है उसमें. Because it's not a forcing move. Rook g6 would have won for black. Okay, Gukesh, अब she's literally like moving away from the board. He's like, भाई ठीक है भाई, अब तो खत्म है भाई, अब तो खत्म है. Ronak and Ivan, I know, chat, they are worse, but let's wait for the game to finish. I think this guy will resign very soon. I think he will wait for a few more pawns to drop off. But I mean, he knows it. या फिर he knows it. एक बार वो भी मर जाए ना कि एक बिशप मर गया, एक पीस मर गया, then he will be like, okay. He will be content with his loss, वैसा, समझ रहे? And the best part is now A5 is falling, C7 is falling, E4 is falling. Gukesh has a choice now. Yeah. Gukesh ने हाथ शेक किए भाई. Arjun is completely losing. क्या बात कर रहे हो? Can you have a brief look at Arjun? क्या stick to the क्या बोल रहे हो भाई? भाई मैं तो देखना चाहता resignation moment भाई. हाँ, even I want to look that at the moment. Yeah, so we can stick to this game. We can actually have the cam on and we can just go quickly to other games. That makes sense. Let's go to Arjun's game quickly. Nihal has drawn chat already. Let's go to Arjun's game. Arjun is losing, chat. It does seem like that. He is much worse. Not. The first time looking at Gukesh without a mask. Nice. Mask bottle के कोने में टंगी हुई है भाई. It's like दूर नहीं जाने दूंगा तुझे. And फिर से magically mask पहन लिया है Gukesh. जादू भाई. जादू. Better magic than Vivek Desai. Sigma Gukesh indeed. क्या फायदा रोनक and Adibana losing? I know, man, but I'm hoping at least one of them will hold on. Yeah, that's what you're hoping for. How is Ronak losing, man? That is ridiculous. I don't know what is Ronak losing. Ronak is also worse. Draw type. Yeah, it was supposed to be, but now certainly it's not clear. I also want to see Hari. We forgot Hari only, bhai. Hari के game में क्या हुआ? Chat. Let's do one thing. Let's quickly go through all the 8 games happening in A and B categories. Quickly, the evaluations basically, and then we come back to Gukesh's game. Let's go to A category first. We start with Hari Krishna. बहुत important games चल रहे हैं. Hari Krishna is completely winning still. Knight g6 was played simply. He went back with the knight. Bishop e2 now. Bishop e6, queen b5. He's still completely winning. And he did not go for those complicated variations. He simply brought the knight back to g6. Very safe choice by Hari Krishna. And he is going to win this game. So that's 1 up for India. Now we go to Vidit Gujarati's game. And Vidit has a dead drawn position, chat. It's a dead draw for Vidit. So I think Vidit will draw his game. He has not been able to win a game so far. He's playing decent chess, but he's not able to find that killer blow. Yeah, matlab that clear advantage. Halki full advantage convert nahi kar pa rahe hain. So Vidit will draw his game. That will be 1.5 half in India's favor. Let's go to Arjun's game now. I'm wishing India cannot afford to draw, but draw is better than a loss. That's very important. India's right now. Arjun is much worse, chat. Arjun is almost lost. The rook on b7 for, I would say, his opponent, Sindarov, is putting a lot of pressure on his pieces. The pawn on b5, if it falls, if he can have the game,
I think will be the end of the game because 2 connected pass pawns on the queen side will be all over. So Arjun really struggling in this game, practically might be even lost. Objectively, some hope, but b5 pawn cannot be lost. If that pawn falls, game is literally over. It's just over. We need some help from his opponent here. Maybe he'll blunder something. Arjun, by the way, has 1 minute on the clock. He has to play 10 more moves. It looks very, very bad for Arjun right now. So far looking 1.5 each. Can we go to Sasikiran's game? That game becomes really important. It overrated. For what? Bhai, he's playing chess. Jaldi se chalte hain us game mein, Sasikiran ki game mein. Chat, this game looks Magnus, by the way, is winning. I checked it out. This game does look like it's better for black because the bishop on d4 is a very good piece. But I think Sasikiran still holds chances to draw this. I wouldn't say he's much, much worse. So far, most likely result 2 each. I'm still hoping Arjun can somehow outplay his opponent. That would really help us. But as of now, if anybody can win the match, it does seem like it will be Uzbekistan because they are almost winning on one board and they're slightly better on the other. And Hari Krishna will win, of course, but Baki boards pe India is struggling. So let's go to team B now. Yahan pe not completely clear what's happening. Gukesh ki game pe seedha chalte hain. Hum dekhte kitne pawn unhone kacche chaba liye opponent ke. Lot has happened since then. He decided to capture the a5 pawn. Yes, makes sense because a pawn will rush through very quickly, right? Pass pawn. Now he'll also can pick up the e4 pawn if he wants to. So Gukesh is completely winning chat. He will give a check on e5. Yes, he does that. King g7 has to move now. And then he can start pushing the a pawn slowly, yeah? But I was thinking, why not take the c pawn, c7, and uska a5 ko koi protection nahi de sakta. Bishop bhi attacked hai. And then I can take the a5 pawn or... Thing is, now queen e5, a4, a5, it's over because a pawn runs. Okay. And also that bahut log video ke watch it. You have to remember VD is drawing his game. He's not the one losing. Right now, Sasikiran is slightly worse and Arjun is the one losing. So let's not go too far-fetched. So queen e5 check now. And I think black is struggling. So can we go to all the remaining 3 games? Nihal has drawn. So let's go to the game of Adiban now. So Adiban's game, it's black is a pawn up. Wow. So he lost a pawn. This doesn't look good, chat. I have to say this doesn't look good. Adiban is a pawn down. Some chances to hold. At least he has the bishop pair and a pawn equally hai. So d pawn ko simply king d3 laake uthane ke chances zyada hain. So some chances to hold. But clearly black is the one in the driver's seat with the pawn up in the endgame. Looks very bad. Looks very, very bad. Can we go to the final board? Where something is happening, Chad. What's happening there? What happened in the video game? It's not clear, right? What is he saying? This video is also listening to him. And the clock, is the clock still going on? Can we have the full screen for a moment? Is the clock still running? I don't know what's happening. There's something going on between the players. Like, it's not completely clear. Okay, now they're playing, so probably nothing special. Probably nothing special. Can we go to Ronak's game quickly? Yes. This is terrible. So if we go to Ronak's game, chat, Ronak has to hold this. Otherwise, how? I don't know. It looks lost, chat. It looks completely lost for Ronak. Pass by 40 seconds. That's it. 41 seconds. India B is going to lose to Armenia, I think. Oh my God. Chat, this looks horrible. But if Adiban defends, Adiban has to defend somehow. Ronak, it is very difficult to defend, but Adiban can still try just one pawn down. You know, I told you when your bishop on f5 has to defend the pawn on g6, has to control d7, you've probably gone wrong somewhere. You need the bishop permanently on d7, the rook on e8, the rook on c8. And then whenever you have an open file, you can control it. And with this way, whatever he did was a bit very sus. And now he's struggling. And the issue is if he loses and Gukesh wins, it's 1.5. And Arjun is, Adiban is clearly worse. Team B cannot lose. He can only draw. Team B cannot afford to lose. We are doing so well. Agla match US के साथ पड़ेगा. If we win this, draw करेंगे तब भी पड़ सकता है. So we need to find a way to somehow hold this match.
I really hope. Let's go back to Gukesh game. Is he still winning? Yes, let's go. And can we have the Gukesh's cam 1 second? I want to see when the game is over by. Yes, we have the cams. We have the Gukesh cam. Okay, this is not here. Got it. He's here. Queen e5, king f8 with black. And now I think we can even pick out the H7 pawn if you want to. Chad, Gukesh is completely winning. He's completely winning. But the problem is Adiban is losing and so is Ronak. This is not a good sign. And Adiban is not yet losing. His but pawn down, but it can be a draw. He cannot win. The thing is, pawn down, even though Engine says it might be holdable with perfect play, it's just lost usually. If I was in the black player's shoes, I would be like, okay, this is winning over the board. Engine ke saath na, it feels like maybe we can find a sequence of moves, but Engine ka ek horizon hota hai. It cannot calculate beyond 20, 30 moves. So long term, it should be lost pawn down. It should be lost. So he needs to come with some tricks here. That's the only way he can hold. If India lose today, it would throw the tournament open. Yeah, but we don't want to do it. Luckily for Team A. But even Armenia, if they loses, then still it will be open. So Armenia agar jeet gaya, so they will become at top of the board and they have lost no games. So what I would say is, if Armenia wins, they play the US tomorrow. Confirm. So US will destroy Armenia. That is not the stress. How you are sure? I'm pretty sure US will destroy Armenia. I think US is coming into form with every game. But what I'm trying to basically say is, Team B can technically afford a loss and still be in contention for a medal. But Team A has already given 1 point. We have to keep it in mind. So Team A loss is a bigger disaster for them. That's a problem, chat. So yahan bahut complicated. We have all the 4 boards, Ronak, Adiban, Gukesh, and I think Nihal is already drawn. So that board is empty. We have Queen takes H7 by Gukesh, who's completely winning. Now the threat is capturing on e4 and picking up the rook, so he has to. Magnus has not lost, chat. I have access to the boards, right? You do know it, right? He's completely winning. You do know I can access the boards, right? I mean, no offense, but yeah. We'll go to US team. I think a critical moment for the Indian team. This is this might decide the Olympiad, honestly. If India too can magically just hold this, no draw bhi kar lena. Adiban ke haath mein sab kuch hai, chat. If Adiban draws today, I think he'll become the hero, literally. And we are kind of missing Gukesh. I think I mean Prag. Yeah, I think that might have made a difference. So that game yesterday, which Prag lost, that actually had consequences, because if he had won yesterday or drawn, I'm sure he would play today, right? True. No, ये भी तो हो सकता है उन्होंने पहले से plan करके रखा हो that No, I think Prag was given a rest because I think he lost yesterday. I think he would have otherwise probably played. I think they will oscillate between the 4th board, Adiban and Ronak, and not ask Prag to play still. That's also true. Here, the quick threat is by of capturing on e3 with the rook, and then you have to exchange the queens. But उससे पहले white का move है. Gukesh has won, chat. Gukesh has won. So he goes to 2-7-1-9 with a perfect score of 6/6. With this, India has gotten to 1.5 points. एक draw चाहिए यार. कैसे ये बंदा कर रहा है, bro? Top board पे खेल रहा है, winning every single game. But a आधा point और चाहिए. Can we go to what? First of all, what a beautiful moment for Gukesh, man. He is India number 3 right now, almost number 2. 2-7-1-9 on the ratings. He was 2-6-1-4 literally 5 months back. He gained 100 points in the last 5 months. And if he continues like this, I think we'll have a race between Carlsen and Gukesh for 2900. Of course, I'm joking, but still, it's insane how well he has played. And he has flawless games, just flawless games. Look at the final position, man. Just look at the final position. He has a queen on the board. He has a passed h-pawn, passed a-pawn. The king is being assaulted in the middle of the board. Beautiful game by Gukesh. And he's so calm and composed. You never see an expression on his face. Also because he's wearing a mask. But even without a mask, there will be no expression. And he's very calm and composed. That's true. And he adjusts his pieces at the end. And he has won the game. But this is not over, chat. Team B is still struggling. Gukesh's win is not going to ensure them a victory in the match. Let's go to Adiban quickly. Let's go to Adiban. He has to be the hero today. नहीं, पर आपने बोला कि ऐसे आदिवान के पास बिशप पेयर, पर वो तो बिशप पेयर तो उनका ओपोनेंट के पास भी है. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ, ओपोनेंट के पास भी है, like at least he does not have a bishop pair disadvantage. That's what I was talking about. But somehow this is just lost, man. This is just lost.
I think this is lost. I don't see how you can defend this. Now G5, excellent move. G5. Knight has to come to E2, and then Bishop B5 is winning on the spot, I think. Yeah, kal rest day parso, I mean. I think, and they will go into a rest day with the bad taste, right? Because last din mein sab spoil ho raha hai. Like, I really want India to kind of come back. Two very important games, Adiban and Ronak. Maybe we can switch to Ronak's game briefly and see if there's any hope there. Like any hope whatsoever. That would really help us. Sorry. Doesn't Okay, let's seem go to like Ronak it, but Kal rest day, yes, kal rest day, guys. Yes, Rakesh is playing excellent chess, chat. He's playing excellent chess, but the issue is 2 boards we are losing. Te Sakhiyan better against Adiban, and I think board 4, which is Hostesian, is better against Ronak. रोनक का गेम तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है ना. कुछ एक ब्लंडर हो सकता है क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या इसमें? या इज इट? देखो, ऑपोजिशन में हमेशा चांस रहेंगे ऑपोजिट कलर बिशप में, बट द इशू इज कि लाइक इवन इफ व्हाइट मेक्स अ मिस्टेक, black to play perfect chess is next to impossible. So he will get another chance. समझ रहे हो basically? So that's why I think this is not easy at all. And वो भी तो है ना भाई कि टाइम भी तो रौनक का ही कम है. Only 48 seconds on the clock. Exactly. So I think this is going to be horrible. Yeah, this will not end well, unfortunately. 3 moves more and then they can reach the time control. But even 3 moves is very difficult to be played in 48 seconds. And if it was slightly worse, it would be okay. It's completely lost, right? I mean, the thing is, of course, human IK, it's not that easy. But I think if I was white, I would even consider moves like rook b2, just to kind of prepare this mating nets, or bishop c3 check to pick up the rook. I would play around, dance around to the 40th move, and then, or maybe he's trying to also win on time right now. No, he might be trying to come up with a plan. Jahan pe he puts a couple of traps as well, and maybe expects Ronak to fall into them. World by Adiban can win on board 4 and not 3. I think we missed Prag today clearly, and the game yesterday really affected today's game, because if Prag had won yesterday or drawn yesterday, he might have played today, and I still felt Prag should have played because opponent team काफी strong है. They have full points, and you need your best team. I just felt, and कल rest day है ही, so it's not like he कल rest day नहीं है. So he would have gotten enough rest, and I think Prag should have played today most likely. यार कुछ तो मिरेकल हो जाए यार, आदिबान कुछ करके बच जाए यार, रौनक भी बच जाए यार, कुछ तो हो जाए यार मिरेकल. हाँ, एक ही बंदा बच जाए, draw भी हो जाए, also acceptable यार, also acceptable. I just want to see Hari Krishna game agar quickly by. Hari Krishna was in the driving seat. He was winning the game. Mukesh equal to Kramnik 1992. Mukesh is 271.3, world number 26 indeed. एक बार देखते हैं कहाँ तक. Okay, Hari Krishna is completely winning, right? This is just done. I just want to see कि हमने क्या देखा था. This is just done, right? This is just done. यहाँ हमने देखा था कि knight पीछे. Oh, he's shaking hands. It's over. It's over. He resigns. It's making 10, and Hari Krishna has won the game. So that's 1-0 up for India in Team A. It's similar to what's happening in Team B. Yeah, we won on board 1. Team board 2 was a draw, and then we are struggling on board 3 and board 4. It's literally the same in both sections, Team A and Team B both, right? Yes, true. But now Vidit should try, na. But honestly speaking, if we go to Vidit's game, let's look at all the 3 games now. It's literally impossible. It's literally impossible. Honestly speaking, if Vidit gets a draw, he needs to take it right now, because white ka structure is weaker than black structure. The c4 pawn is weak. So if he gets a draw, he should take it immediately. Like, he might just lose this otherwise. So knight on e5, excellent piece, and yahan bishop on f4 is not doing much, to be honest. And you can't even take it because king e5 and king d4 wins for black. So I think Vidit should probably take the draw if he gets it, and I expect him to hold this game. It's not so bad. Can we go to Arjun's game? Is there any hope? Let's go to Arjun's game, guys. Arjun is drawing. Arjun is drawing. Yes, he held. White blundered. White blundered from +4. He blundered from +4. Arjun is drawing. Let's go to Arjun's game quickly. Oh my God, he saved himself. Can we go to move 34? Move 34. Rook d8, knight to e6, and then he plays rook capture on e7. Knight capture on d8. And यहाँ पे rook d7 खेलना था उनको. He completely blundered. Rook d7 was winning. Blunder है? Basically pawn exchange हो गए सारे इसके बाद. उनको rook d7 खेलना था. उनको maintain करने थे pawns.
I think उन्होंने अपनी position underestimate कर दी सिंदोरव ने. I think so. And he played knight d4, rook c3, rook d7 now, but now rook c8. Excellent move by Arjun. Noticing this important moment. Excellent move. Knight b5, rook c2 check, king g3, knight to c6. Not the best. Knight e6 or better, but knight d6, knight takes b4, knight f8 check, and now king f8 is a dead draw. Arjun OP in the chat. India A is going to save the game. भाई so विदित का ड्रॉ हो सकता है, अर्जुन का ऑलमोस्ट ये तो ड्रॉ ही हो गया ना. हाँ, ये तो कंप्लीटली ड्रॉ है. So can we go to the game we of have one more Sashi game, right? Sashi game? Can Sashi hold this? Can India A win? Oh, Sashi is already better slightly. Are Sashi is fine. He's absolutely fine. Somehow knight came to f5. Now it looks decent. Are India A? But he's very low on time, brother. No, I think Pushin is fine. He might just win this. I think this time is enough. 33-7 moves. It's possible to play this. Oh, he took on d4. I don't like this move at all. I don't like this move at all. Now it's lost. Now it's lost. Why did he take on d4? Why did he take on d4? Why? Knight on f5 is such a strong piece. Oh my God! Now it's worse, much worse. अरे यार एक मूव में गेम दे दिया. यहाँ पे पास पॉन बन गया इसलिए क्या सिर्फ पास पॉन बन गया और c4 is hanging. And c4 is hanging. Wow. अरे यार बोलते ही भाई literally. Now Sashi is completely, I think, just losing. c5 played, but this is just better for black. Capture कर सकता है ना? The idea is to capture on e5, but this looks lost. Sashi cannot afford to lose this. He has to look at this Arjun's game. Arjun is drawing. Even draw is good enough for Team India. He cannot afford to lose. Draw जाएगा ना? I think फिर. अरे यार. नहीं. अगर सबको इन्हें draw कर लिया, then Sashi loses then. हाँ, then it will be a draw. If Sashi loses. ये क्या लोग कुछ या चाहे time pressure. This is what time pressure does to you. Like I wouldn't play. Honestly, I wouldn't play knight d4 even if I was, playing after the Bermuda party. This is what time pressure does to you. Time pressure is horrible. True guys, true. भाई एक बार सबको लाइक कर दे भाई, 500 लाइक पहुंच जाते हैं तुरंत फटाक से भाई. Commentators curse. Yeah man, looks like it. नहीं यार नहीं. भाई एक मौका मिला, क्या पता फिर से एक मौका मिल जाए somehow. बट अभी सब टाइम प्रेशर में भी थे ना, तो चांसेस था. टाइम प्रेशर प्रॉब्लम है ना, वही तो टाइम प्रेशर. बट अभी तो 5 मिनट में सबको मिल जाएगा, उनको ओपोनेंट को भी टाइम. So can we go to team B वापस and see what's happening there? Because I think वहां पे तो आग लगी हुई है ना. यहाँ पे तो एटलीस्ट ड्रॉ मुझे लग रहा है हो ही जाना चाहिए, है ना? So can we go to team B? Yes, Adiban पे आ गए हम लोग. Oh, what happened in Adiban's game? This looks interesting. Is there any chance here? Honestly, this should be, right? No, maybe not. Oh, knight d5, knight f4 आ रहा है. Oh, this is done. This is over. This is over, right? This is over. Sorry. So knight d5, knight f4 check आ रहा है, and there is no clear defense because king अगर आपको g3 लेके जाना पड़ेगा, तो black king will come to d5. Oh, he plays knight to d7, but also decent. Knight is coming to e5, and then all the pieces are dominated. What a move, by the way! Knight e5, knight c5, because the king cannot approach the e4 pawn. No. So this is just lost, no? This is completely lost. Okay, so Adiban is losing chat. There is no hope. I just don't see any hope. Ronak. Can we go to the game of Ronak? King to c6 played. Rook c7 check, king d5, rook d2 check, king e4. ये तो center of the board में mate होने की लग रहा है मुझे. King to d5. Pawn game is losing by exactly. King to e4. And what do you do here? King e6 तो I think mate हो जाएगी ना? अच्छा हाँ, ये तो mate हो जाएगा. Rook e7 mate हो गई. So rook c7, king d5, rook d2, king e4, rook c4 check, king e3. Hey, sorry. Looks very sus, man. Looks very sus. Please don't blame him, guys. We're not blaming him. We're saying that maybe Plug should have played, man. It just feel like कि मतलब opponent team इतनी strong है
They have a perfect score. Fielding your best team made a lot of sense. This is what Spain did. No, Spain ने volley of pawns को नहीं खिलाया, and they lost against India too, right? So you have to put in your best team. That's what I felt. Regardless of how Prag played yesterday, you have to back in him. You've hit Carlson a couple of times, man. He can come back and strike. I think Levan might be a bit like, अरे यार मेरे बिना ही अकेले अकेले. And tomorrow it will be Levan against Armenia, by the way. Is it? That if Armenia wins. अच्छा. Okay. भाई ये स्टोरी क्या है भाई? ये कैसे फेडरेशन चेंज हुआ? क्यों फेडरेशन चेंज किया? So Levan had some issues with sponsorships and everything and support from the government. So he changed federations to the US, I think, sometime last year. And this is the first Olympiad he's playing with the US team. But tomorrow, if I think it looks like Armenia will qualify, will win against India too, he will most likely end up playing against Armenia itself. That will be a very interesting match to see, like, how does he play against Armenia, like his old teammates. So that'll be a very weird scenario. USA, I'll let you. Let's just follow this game. I will let you know what happened in the US. खुद से बता दूंगा मैं, ठीक है? So USA में so far, Aronian we can see their games. Okay, so let's see, na? First what Caruana and Parama still playing. Levan drew. No, Caruana is winning. Caruana is, let's see. Wesley so drew. Aronian drew. Dominguez and Caruana का game चल रहा है. And actually, I think Dominguez is drawing this game, but Caruana is the one winning this time. So Caruana ensuring that US wins, yeah. Let's go back. I think Caruana is winning. Oh, he plays Rook C4 check. He played that move. Oh, ये King E3 अपने आप कैसे चल गया भाई? रौनक अपने आप सीट पे बैठ गया, King E3 चल दिया भाई. Wow. Saurabh bhai, Gukesh has won his game. That's a great sign. Gukesh won. But Krishna won. But other people are in trouble. The thing is, both 3-4 we are struggling. Nihal has drawn. And now 3-4 we are losing. Both boards we completely lost. Both boards. Like until unless some miracle happens, bhai. Sabko puja karo bhai. Kuch to. Adiban is -10 now. It's over. He's trying to basically play h4 and exchange the double pawn, yeah. But if he can somehow exchange the kingside pawns, no, entirely, he might just draw this. But it's not happening. Charan women's team ढंग से देखी नहीं है. I know, but this is just too sharp, man. Like इतना sharp games चल रही हैं. And Niranjan bhai is there, क्या? Niranjan bhai, are you there? Okay, can you take over for a minute, bhai? I will be back. We'll go to women's team soon, chat. Ek baar, I think we'll get to know about what's happening there. I think knight e4 is winning on the spot now, threatening knight f2 check. So Indian team definitely missing Prag today. I think they have struggled on the last two boards. If Prag was there, maybe they would have had a better result, but they must be very disappointed. They're so close, playing so well. And Armenia is not such a strong team. They're a strong team, of course. They played so well, but not a team like US. Jahan pe you kind of feel okay, it was kind of justifiable, and yeah, they'll be very mad at themselves for sure. And Gukesh playing such amazing chess, and the team still not winning. It's a sad feeling. Machine learning वाला सही निकाल रहा हो सकता है यार. Maybe he's the guy who's correct. Yeah, हम ही हवा में घूम रहे हैं. We are losing because Tickoo ji had a bath today. ये क्या है भाई? मैं तो रोज ही मनाता हूँ यार. निरंजन भाई की सुरीली अंग्रेजी में आवाज सुनना हो, ये क्या है भाई? निरंजन कभी बात कर सकते हैं यार. He's always there. हाँ, मैं यही हूँ. Sasi losing, I know, man. Sasi is also losing, and so is Arjun. Arjun का तो draw चल रहा है ना? हाँ, Arjun is drawing, so hopefully that is fine. And so team B, VD is losing क्या? VD is worse. I hope VD does not spoil this somehow, because if VD loses, then team A also loses. That will be horrible. I think team A के medal chances will gold का तो will literally evaporate into thin air. That will be over. So I think VD cannot afford to lose today. He has to draw at all cost.
Sasi is losing, yaar. He was a better man. Why did he take on d4? It's just ridiculous. D4 was such a weird move. I don't know. Like taking on d4 was ridiculous. Team B will face tough opponents. Team A will show their class. Also, Team B is low experience. Yeah, I think you can see, kaha Team B, because suddenly Chat is also like Team B is low on experience. You can see how the trend can change just in one game. I think that game was Prague's yesterday game where it all went downhill, because we thought it was non-consequential, but it was, it made a huge difference now in today's game. Yeah, I think Prague should have played. I think once we reach the second half of the tournament, jahan pe round 4 ke baad, you have to field your best team. Chahe kuch bhi ho jaye. Now, last board pe kya, the rating is similar, so you can shuffle around. But you clearly have to field your top 3 players. I think this was not the best. I don't know if Prague was not feeling well or something back end, but if he was fine, he should have played. Okay. So Team A, I think, I really hope VD can draw this, because can we go to VD's game once in Team A? It will be interesting to see what's happening there. Because Black is definitely better. There's no doubt he's better. Because White has a double pawn on the F file, one isolated pawn on H4, C4 pawn is also isolated. So it's not a perfect endgame, but objectively, it should be draw. It should be draw. Plug is not overrated, dude. Abhijit 1, Setu winning. Awesome. Team 3 ka expected tha yaar, I think kind of. Aisa nahi, we do care about India 3, but I think winning for them is quite, like, it's quite easier than compared to team. I think we'll also go to women's A category very soon. आज किसी की भी टीम में जीतने के चांसेस है यार, मुश्किल लग रहा है यार, बहुत मुश्किल. And it's very similar on team A and B, because team A और B में board 1 पे India 1, board 2 पे एक में draw हो चुका है, एक में VD will most likely hold. Board 4 में we are losing on both teams, and board 3 में Arjun somehow came back. I'm still hoping some magic happens and team B can also draw. By the way, chat, just as an update, Carlson is winning. Just want to point it out. जो लोग कह रहे थे. Chat, Ronas is getting assaulted in the middle of the board. This is sad. VD's opponent is just playing improvement moves. A5 खेल दिया है. He's waiting for the correct moment to strike, and he might also simply play B5, create a pass pawn on the queen side, and then king side पे double pawns जो VD के है ना, they might really cause a problem for him. Ronak flagged. Did Ronak lose, chat? Can we go to Ronak's game quickly? Can we go to Ronak's game? I think he's not been flagged. They've played 42 moves. So he's not been flagged, but I think he's just losing on the game now. Like on the board, he's losing. AD about to resign. Arey yaar, that is just so sad. That is just so sad, man. Can you have the footage as well? Yeah, chat. AD does seem like he's completely lost. Knight E4 played by Black. F2 is falling. The bishop on D1. Also, Knight C3 is incoming. So there's no defense actually. There's no defense. It's completely over. Rukesh विजय को surpass करेगा, कर पाएगा. It is possible, but I think right now, chat, India का जीतना ज़्यादा ज़रूरी है. Which board is this one? Let me check. This is okay. This is, which board is this? It's not clear, right? Oh, Adiban has lost. So Adiban has resigned, chat, already. So Adiban has already lost. So it's 1.5 each, and now it's all Ronak. And Ronak is literally losing. He has to come up with a trick somehow. I don't know where he pulls it out of. Kahan se nikalega wo trick, but he needs to draw this somehow, yaar. Sahil Tickoo, captain of India, Z. Thanks, bye. Sasikiran seriously playing at the mercy of the opponent, blunders in a row. I don't know, man. Like, yeah, Ronak looks dejected, man. He needs to pump himself up and somehow come up with some trap, something. Maybe I should have a look at the game. If you look at the game right now, it seems that the king is stuck. And the threat, for example, if you play G5, let's say G5, a random move, Rook E1, King F4, Rook F2 is literally mate. So that's the main threat here. So let's say I play King to F4 first, trying to preempt this move. I say कि ठीक है, मैं पहले भागता हूँ. Now it's now E1 square is controlled. You still can't play D7. So maybe Rook D4 check now. But now Rook E4. Rook D5. Just start exchanging rooks. And now Rook E1 check, Bishop D2 check. Everything is incoming. Bishop D2 is literally game over. So now Rook takes B4, exchange sack. The sack we are looking at way back. Yaad hai? मैंने कहा the only way Black can ever create any counterplay
But unfortunately, this is not enough because white has 2 passed pawns. You only have 1. So I think this should be lost for long. There's no counterplay, chat. There's no counterplay. Wasn't AD winning at one point? AD was, I'm not sure he was winning. He was okay. Army is not a weak team. Okay, they have won many Olympiads. Either way, what I'm trying to say is like India B team was definitely stronger on paper than Armenia. There's no doubt they were stronger. Armenia is a strong team. Every team in the top 10, 20 is strong. But India team 2 did defeat Spain yesterday. So clearly they were, in form. I think SLK is hard to say. But I think Prague should have played for sure because SL or Sasi के में rating का difference बहुत कम है. It's only 10-20 points, right? But Prague में or let's say Adiba and Ronak is like 60 points, 50 points. So that's a huge difference. No, VD is fine. If VD draws this game, he should be absolutely fine. I mean, you cannot expect him to win every game on board 2, man. He's playing very strong players. As long as Team A is doing fine, it should be okay. But he has to somehow make sure he does not lose today. आज बहुत important match है. Thank you, Soli bhai. यो लंक्ष भाई कैसे हो यार? भाई लंक्ष भाई यार फर्स्ट बोर्ड पे जीत गए यार दोनों जगह, बट थर्ड और फोर्थ बोर्ड पे लगी पड़ी है. Okay, I'm done with this copy paste. The single tables are cursed. Oh my god. रौनक usually बहुत confident बंदा है भाई. वो जिस तरह खेलता है ना, like body language बहुत सही, but he's rejected right now. Let's go to the live position right now on the board and see what's happening. So, yeah, there are some threats here. Opponent looks quite confident. इंडिया भी ने करने वालों को रियलिटी चेक चाहिए, वो मिल गया. टॉप बोर्ड से हटा दिया इंडिया 1 को. Yeah, man, it just feels sad. I have to say, it just feels sad. It just feels sad because Team B played so well. They played so well, man. अर्जुन पैटर्न बना रहा है व्हाइट से 1-0, ब्लैक से हाफ. I think that's the dream pattern for every chess player at the top level. There's no doubt. That's a dream pattern. That is why you play your best team. Agreed. I totally agree. Playing Prague was the better decision because 50 points ka difference hai. And in fact, Prague might be underrated because he's defeated Carlsen and he's not played too much OTB chess. So playing Prague was essential. Absolutely essential in the critical match because ye 2 point jayenge सीधा. 2 point is critical. And US अब आगे निकल जाएगी 1 point. And Armenia 2 point. And ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट भी था ना साहिल भाई. हाँ भाई, literally. Armenia top board पे था तो you should have gone with if they had won this, they would literally be running away with everything now. Yes. How do you not get tired, साहिल भाई? इतने बड़बड़ करके यार बस भाई आदत सी है मुझको अब तो जीने की, क्या करें? Can we results from the bottom line? Yeah, we can have the results but they will not be in our favor, unfortunately. Can we quickly go to the women's section A team once because I think उनका भी important match था ना? Can we quickly go there because I think important games है. Oh, we have 3 results already there. Oh wow! So chat, Tanya Sachdev has drawn her game. We can briefly have a look at the games. You can keep the board of the Ronak here. We can look at the games maybe because games have already finished there. Tanya has drawn against Melia. That's a half each. Harika has drawn against Nino Batiashvili. That is 1 each. Next, Vaishali has defeated Leila Javakishvili. So Vaishali has 1. India is 2-1 there. And Humpy is playing against Nana Zagizne. And in the current position, it seems like a very complex game. Maybe we can have a look at this. It does feel like Humpy is winning. Yeah, so Humpy seems to be winning, chat. Yeah, Vaishali is 1. As you can see, the final position, Knight Essence, modern mate hone wala hai. Nice mate. So we go to Humpy's game now. Yes, here Humpy ka game. So you can look at this, the C pawn, yeah, very strong pawn. And regardless of what black does, bishop B7 or C8 queen aa raha hai, and there is no defense. I don't see any. Is there any defense? B7 5. मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ. नहीं भाई. So India A you destroying. can start pushing your own pawn, but अपना pawn पहले पहुंच जाएगा. हाँ, रुकी बना जाएंगे लास्ट में. So India A destroying Georgia with the same score destroyed India 3 and India 2. That is revenge, by that is pure perfect revenge. So Team B from India will be Team B will be the only square. So Team A will be the only team with the full score unless Romania are also winning. I'll check Romania's score. Romania 1 board lost to Ukraine, 2nd board draw.
third board is also. So India will be the only team with a perfect score in the women's section after this, I think. Only team. That's awesome. Can we come back to the open section now? सॉरी चैट, मेरे को थोड़ा भूख लग गई थी इसलिए चला गया था, एंड अभी मैं थोड़ा देर म्यूट रहूंगा. इंडिया 2 को बेटर समझ के बोर्ड 1 पे डाला और अब ये हो गया द सेम डे व्हेल एज मुकेश स्टिल डूइंग हिज रिटर्न स्टफ. अगर एजी हारे ओपन सेक्शन में तो गोल्ड गया. एजी मतलब who's एजी? एजे कौन है भाई? अगर आज हारे तो भाई. अच्छा आज हारे. ओ अच्छा माय बैड. एजे कौन है यार? वीडी वीजे सब एजी में नाम लगा किसी का. Yeah, this looks tough. This looks tough, man. Why will Mukesh break Karwana 7 streak? They're not that strong though, but same Mukesh. Yeah, man, he can. And he's Giri. By the way, even VD's game is still not a complete draw. I hope he can draw that. At India ka at least आधा point तो बने वहाँ पे. And Ronak, of course, is complete. Adiban has resigned. Beast bhai. Adiban has resigned, so he lost. And Carlson has also won his game. Carlson already won? And US has also won, by the way. Caruana won. Oh, Arjun has shaken hands, right? Can we go to Arjun's game? Yes, bhai. Ye lo. We are in Arjun's game, bhai. Yeah, Arjun has drawn, chat. Arjun has drawn, barely survived, dude. Barely survived. अब विदित और शशि को ड्रॉ करना पड़ेगा ना, and then we are going to win, है ना? Yeah, if Sasi draws, that would be awesome. So India has already, and VD has to also draw. So India has so far 1.5. Hare Krishna won, and Arjun drew. So 2 games going on. VD going on right now, and so is Sasi. Can we go to Sasi's game? विदित पे हम लोग गए थे अभी, पर खुल ही रहा है ये, बहुत स्लो हो गया थोड़ा सा. हाँ, VD's game is still drawish, but slightly better for black. साहिल भाई, आप कितने चांसेस है गोल के? यार थोड़े कम तो हो गए हैं. It all depends on what happens in the match against the US now. I think that has पहले क्या था कि हम आगे थे तो हम कहते थे ड्रॉ भी चलेगा, लॉस के बाद भी चांसेस हैं. अब सारा रिजल्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस अगेंस्ट द यूएस टीम. आई थिंक फॉर बोथ इंडियन टीम्स, आई थिंक दोनों का मैच पड़ेगा यूएस से कभी ना कभी. बट आपका जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं था कि इवन इफ एक लॉस और 2 ड्रॉस वी कैन अफोर्ड. हाँ, बट द थिंग इज अगर if both teams will at least have 1 loss now, so they can only afford 2 draws, right? Yeah, 1 loss. All 1 loss. Yeah. है ना? So if and the thing is, उतनी एक टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बाकी कॉम्पिटिशन से कभी थी नहीं. पहले क्या था? चाइना थी 2700 प्लस एवरेज, रशिया थी 2700 प्लस एवरेज, यूएस थी 2700 प्लस एवरेज. सो 3 टीम तो थी ही जो 2750 के प्लेयर लेके खेल रही थी. सो कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो डोमिनेट कर पाए. अभी क्या है, एक ही टीम है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है. So 18 point might not be enough for first. Got it. And हम लोग शशि किरण के गेम पे आ तो गए हैं. हाँ, okay, लोड भी हो गया सही से. He has stabilized a little bit, I have to say. It isn't as worse as bad as saw it earlier, but still bad. The pawn on e4 is the issue, and the d4 pawn is a protected pass pawn, so looks lost. Sasi has to draw, man. If he draws and really draws, that would be awesome. India would be equal. कोई तरीका तो होगा. Like, what is the ideal position कि ऐसा ये आ जाए तो शशि किरण जी बच सकते हैं? So first case is if the bishop is on b4, pawn a3, c5, that's awesome because हमने तीनों फाइल ब्लॉक कर ली उससे. A, B, C तीनों फाइल ब्लॉक कर ली तो रुक अंदर घुस नहीं सकते, है ना? That's the first plus point. That gives me some hope. King side पे जब भी black को g6 f5 खेलेगा, that will open up his king. I think that is the thing. But I think it might open us even more. So I think black has to at some point play f5 to win the game. And once he plays f5, the e4 pawn falls and हमारे king पे g2 pressure आएगा and ये e5 और d4 pawn connected pass pawns हो जाएंगे. And that's when we will lose. So I'm a bit worried here and I think it should be lost for Sasi Kiran. But maybe some hopes. बार थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है तो बार नहीं दिख रहा है एक्चुअली चैट हम लोग को. चार फिक्र मत करो, बार वैसे भी नीचे ही है. Sahil is here for explaining us things. Sahil, who will support for India A versus India B if there is any matchup? I will support the team who has a higher score. I think that makes sense because we want to win gold if possible.
But as of now, it does feel like दोनों का score बराबर होगा. So they can have a match tomorrow. Totally, it might happen like day after, of course, कल rest day है. Any chance for Ronak's opponent to blunder? नहीं यार, it looks unlikely. बीस भाई, मैं 2 मिनट में आता हूँ, है ना? ठीक है, I'll be back in 2 minutes chat. Maybe we can go through Ronak game, that might help. I'll be back in 2 minutes. Yes, भाई. Gold digger Tickoo क्या है भाई? Yo chat. Sahil, who will you support for India A versus India B? I think Sahil will support India B, भाई आदित्य भाई. I'm pretty sure that. उसको ऐसे like थोड़ा सा ऐसा यंगस्टर लोग को देख के ऐसा मजा भी आता है ना ज्यादा. Even though I know India is more experienced and everything, but ऐसा मजा आता है. Oh, hey, Humpy has won, guys. Humpy has won. Nana has resigned. With this, team A has won 3-1, right? निरंजन भाई 3-1 से भाई जीत चुकी है भाई. And let's go to team B का भी देख सकते हैं. We have heard that team B is winning ना. बार के बिना बीस्टार के लिए चेस खाली बोर्ड भाई. थोड़ा बहुत तो आता है ना, थोड़ा बहुत तो पोजीशन समझ ही जाएंगे भाई. इतना भी नहीं है कि खेलने ही नहीं आता चैट. ठीक है, एक सेकंड में को देखने लो गेम्स. टीम बी का all 3 India team will have 10 points कह रहे हैं अनु मित्रों. इंडिया जेड में आपका सिलेक्शन हो गया बाबू. थैंक यू सो मच परम गांधी जी. थैंक यू फॉर द सिलेक्शन. Okay, Padmani has drawn already. Vishwa is still playing. Vishwa is in C. Pratyusha is still playing. और कौन है? वंतिका का देखते हैं. आज डिनर ऑर्डर नहीं करना, नहीं किल हुआ भाई. मम्मी थोड़ी सी तबीयत बेटर है तो शी इज कुकिंग इट सीम्स. भाई सही बताना, मेडल छोड़ के चाइना और रशिया के बिना उतना मजा आ रहा है क्या? मेरे को तो भाई गेम में बहुत मजा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट. सब इतना मस्त चेस खेल रहे हैं भाई, मजा तो आ रहा है देखने में. वंतिका गेम खोल दिया क्या आपने? वंतिका गेम, अच्छा वंतिका इज बेटर एक्चुअली एज पर बार्स एज यू नो. ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं पोजीशन क्या है, क्यों है बेटर. इसका नाइट बहुत स्ट्रांग है इसलिए. ठीक है, और क्या है इसके पास? और मेरे को इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है यार. क्यों है चैट बेटर? कैन यू हेल्प? She was -9. Padmani was -9 क्या? -9 नहीं था यार. That was glitched I think. बिना क्वीन के थोड़ी उसने खेला होगा यार गेम. I think transmission was glitched. निरंजन भाई, पद्मनी के पास था क्या क्वीन? या ट्रांसमिशन एरर था चैट. इट वाज ट्रांसमिशन एरर. उसका क्वीन नहीं मरा था यार. शी हैड अ क्वीन. भाई बिना टिक्कू के यार चेस एनालिसिस करना इज डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे देखते हैं चैट. एज पर माय इंट्यूशन द मूव शुड बी रुक टू h8 एंड टिक्कू इज बैक विथ अस. थैंक यू टिक्कू. प्लीज शो रौनक गेम. रौनक का गेम दिखाते हैं भाई. एक बार इंडिया बी भी देख ही लेते हैं भाई. टिक्कू जी जल्दी आइए. आई फील लोनली विदाउट यू. यो आई एम बैक. चलो भाई. भाई वी आर वाचिंग ऐसे वंतिका गेम. बाय द वे हम्पी हैज वन ऑलरेडी. उसके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया एंड सो उधर हम लोग जीत चुके हैं इंडिया ए वुमेन सेक्शन में. एंड फाइन वी आर वाचिंग वंतिका गेम. भाई वंतिका गेम में क्या लग रहा है भाई आपको? मेरा इंट्यूशन कह रहा है रुक h8. Yeah, knight g3 looks very strong, no? But why rook h8? Because my intuition says so भाई.
अबे यार भाई कभी तो इंजन का पसीना छोड़ो ना। यार मैं छोड़ तो देता हूँ, पर इस पोजीशन में कोई एक्चुअली समझ में नहीं क्यों बेटर है ब्लैक। नहीं, बिकॉज आई थिंक somehow ये नाइट ऑन जी3 इज वेरी स्ट्रांग, दैट वो मैंने बोला चैट को, बट उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मैं क्या प्लान नहीं मेरे को दिख रहा कुछ। नहीं, बेसिकली लाइक इवन इफ आई जस्ट द क्वेश्चन इज कि मतलब क्वीन हैज टू डिफेंड द h4 pawn, इसलिए आप tied down, इसलिए रुक खेल रहे हैं आप ताकि क्वीन बच जाए, मतलब क्वीन को फिर यूज कर सके। क्वीन जाना कहाँ आती है, where does the queen want to go, that's the question. No, I would say not crystal clear कि how is black winning. It's the bar says so but not so clear. इतना आसान नहीं है. अच्छा, टिक्कू आ गया, बाबू चैट से हेल्प मांग रहा था, पोजीशन कैसा है? देखो मैंने एक चीज तो मेरे को सबसे ऑब्वियस दिखा हुआ है ना, बता दिया यार। जितना बाबू को पैसा मिलेगा देखो 50% बाबू का, 50% BeastStats का और बाकी सब चैट लोगों का भाई, कंफर्म। वाह वाह। अबे देखो मेरे को जो क्वेश्चन पता उतना ही बताऊंगा ना यार, जैसे नाइट स्ट्रांग तो G3 बता दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ भाई। So I think okay, let's go through all the games one by one. I think this one is better probably, but I still don't see a winning plan because my PCs are tied down. My battery is also down. आपका कैमरा बंद हो गया भाई। हाँ, maybe you can change the scene for a while, for a minute. Yes भाई। हाँ, इसमें भी हमारी शक्ल दिख Nice. यार टिक्कू भी नर्वस कर देता है यार मेरे को। नर्वस करना तो काम है रे। ये क्या काम है भाई? ये वीडियो क्या चल रहा है? Can you do this game? Can you do this game quickly? कुछ तो हुआ यार, कुछ तो हुआ। ओपोनेंट थोड़ा ज्यादा जंप कर रहा है फॉर सम रीजन। खुल गया भाई विद्युत का गेम। ओह, दिस इज नॉट आई डोंट रियली लाइक दिस, बट maybe it holds. I don't like this for video, I have to say. शायद क्या सारे आइसोलेटेड पॉन है ना? हाँ, सारे पॉन लाइक सारे पांचों पॉन एक्चुअली डबल्ड, आइसोलेटेड, लाइक it looks like the pieces of my heart after my ex-girlfriend left me. Shattered here and there. Yeah, exactly. And I did not survive, and no, I hope Vidi does. Please भाई आपको बंद करके ऑन कर दो कैमरा ताकि वो बराबर। एक सेकंड कर रहा हूँ। Beast by fine coming. Who cares about निखिलेश जी का belly dance? भाई निखिलेश जी belly dance क्यों कर रहे हैं भाई? निखिलेश जी कुछ भी कर सकते हैं भाई, निखिलेश भाई हैं भाई वो। आज तो राजा का बाजा ही बज गया है करके। भाई तो गलती हो गया यार हमारे साथ आज, बहुत गलत हुआ रे, बहुत गलत भाई। बोथ बोर्ड सॉरी फर्स्ट बोर्ड हैज वन एंड स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। हाँ वही तो चैट, तुम समझो यार, मतलब कल की ना, if India B had won, they would face the US for sure, and they would be 1 point ahead of the US, and even if they would lose, they would have a chance of medal because एक ही point पीछे होते हैं। अब क्या है, they cannot afford to lose anything, both of the teams, क्योंकि वो पूरा 2 point पीछे, अगर मेडल चाहिए तो they cannot afford to lose anything now. अक्षित गुल कह रहे हैं 100K, नाइस यार, थैंक यू फॉर डोनेशन अक्षित भाई, 100K आप भेजेंगे 50K मुझे और BeastStats को, थैंक यू भाई। कब भेज रहे हो? Okay, let's go to the game of I think VD game में तो यार it's very interesting because 21-22 मिनट है and black will play around forever. King e6 is the only move by the way. यहाँ पे तो क्या ही सोच रहा है बंदा? King e6 is the only move, right? There's nothing else. What else can you play? Because knight e6, knight f5 allows me to like remove my double pawns. That's awesome. King e6 is the only move I think. और कुछ है ही नहीं यहाँ पे. King e6, that's it. And then you try to like maybe play knight c2 and wait and see what black does. मतलब white को wait ही करना है. He cannot do much and keep attacking the pawns. Yeah, like कभी c6 c6 attack किया, knight को d4 आएगा तो अच्छा square है ना, because then c6 and f5 both are attacked. I think that's why he's calculating, because king e6 या knight c2 and suddenly अगर d4 आया तो both c6 and f5 are attacked. It's not, he will defend both. So VD can actually equalize immediately. What is he playing? Yeah, he played king e6. He played king e6 something. But now knight c2. सागर ट्विटर पे बर्मुडा पार्टी का नोटिस अपलोड किए। भाई नोटिस नहीं चाहिए सागर भाई, हमें वीडियो चाहिए, वीडियो। बर्मुडा पार्टी का नोटिस अपलोड किया मतलब क्या हुआ? हाँ, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं भाई। कि व्हाट हैपेंस देयर स्टेज देयर, ऐसा पता नहीं भाई। भाई हमें रूल्स नहीं चाहिए, हमें वीडियो चाहिए सागर भाई, वीडियो। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्या वीडियो तो आ ही रहा है भाई। कल तो उसने अमृता ने बोल दिया हाँ कैमरा तो रहेगा उधर।
अरे यार then we can't see drunk Carlson man. We want to see drunk Carlson also. कार्लसन आएगा भी पार्टी में? आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, सुना है मैंने। लेट्स सी भाई। कैन ए वुमेन प्लेयर्स प्ले इन बोथ ओपन एंड वुमेन सेक्शन? नहीं, कोई एक ही में एक बार में खेल पाएंगे ना, क्योंकि मैचेस तो साथ में ही चल रहे हैं ना ब्रो। So they can either play in the open section or they can play in the women section, whichever like the team decides or whatever. Exactly. वीडियो भी आएंगे भाई, कह रहा है भाई बाहर। चाहिए भाई, वीडियो चाहिए भाई। कार्लसन कुछ कंट्रोवर्शियल कर दे, कार्लसन मजा आ जाएगा। Have you ever been to a Bermuda party भाई? What is a Bermuda party first of all? So you should know, you are a chess player भाई। I've never भाई I've never, मैं कैसे भाई, मैं कहाँ देश के लिए खेला हो रहे हैं मुझे क्या पता क्या होती है बर्मुडा पार्टी यार। फिर भी तो इनसाइड खबरें तो होंगी भाई। नाइट C2 is actually played, King E6 मतलब नाइट C2 is played। सारे लोग थोड़े से नॉटी हो जाते हैं, बस इतना मुझे पता है। I have no other information. Okay, interesting. नॉटी हो जाते हैं is very vague. Okay, knight C2 आइडिया है guys, knight to D4 खेलने का। तो both the C6 and F5 pawn will be attacked along with a check on the king, so you cannot defend both, and one you are going to lose and it will equalize the position for Vidit, and most probably he'll hold a draw. But अभी इसको रोकने के लिए क्या कर सकता है भाई वो? It's not entirely clear to me, because I think he has nothing to do, na? Nothing clear. I have to Knight say. D6, sorry, King D6. Yeah, he can't save the both. I think he'll take on F4 now. कुछ करके F4 मारना पड़ेगा. Like king somewhere, let's say king, अच्छा F5 check से आएगा ना, so king D7 probably, and then after knight D4 just knight E6, knight takes F5, knight takes F4, and you just hope that you have chances here. That's the best he can do, I think, because दोनों pawn बच नहीं सकते, है ना? Something like this. And the pawn endgame you cannot take on E6, of course. Pawn endgame would be lost for VD with the double pawns. कार्लसन को लॉलीपॉप लागेलू पे डांस करते हुए देखना है भाई। डालें कल चेस इंडिया क्लिप्स, वेट करो भाई। क्या पता राकेश भाई भी डाल दे भाई, राकेश भाई भी तो होंगे हैं। इसलिए तो गए राकेश भाई वहां पे। दिस इज द मेन रीजन। वो तो बहाना है भाई। गर्मी कितनी है बाहर भाई, बताओ। फॉरेन प्लेयर्स, ये क्या है, कौन सी ओपनिंग, कैसा आपका स्टे है इंडिया में, ये सब बहाना है भाई। असली तो कल के लिए जा रहे हैं। Hari game is over guys. Hari has won. His opponent has resigned by. You know, like the thing is, this would be a good time to off. I don't know actually offer draw क्या ही करेंगे, because he will not take, because opponent का क्या है, but हाँ, he might just like, he will not take it actually. He has nothing. Why will he take? He has nothing to risk. He will keep on pushing until he. और जब उसको लगेगा मन करेगा तो he will offer a draw. एक बंदा कह रहा है रौनक teleporting all over the hall. ये वो रौनक के गेम में देखा है, रौनक एक जगह टेलीपोर्ट तो कर रहा है भाई, हर जगह एक टाइम पे। ओके, यहाँ पे कुछ मूव प्रोग्रेशन हुए हैं भाई। बिशप टू डी। देखो भाई, कैमरा घुमा दिया तुम्हारे लिए यार। ओ यूएस हैज वन 2.5 चैट। देखो स्कोर, देखो भाई सामने। ओ कारुआना बीइंग द द हीरो टुडे फाइनली। हाँ, बिशप टू D3, बिशप C3, बिशप टू E2, रुक टू E1, किंग टू F2, रुक P1, एंड ये है भाई पोजीशन। ए किंग कितना just lost because bishop E5 आ रहा है, rook hanging है, bishop D4 check भी आ रहा है, and there is no defense to both, so it's just over. Ronak is losing chat and team B will go down to Armenia unfortunately, and that means it's just really sad कि मतलब इतना बढ़िया टीम खेल रही थी, they were so close man, they were so close, you know, if they had won today they would be having the sole lead in this Olympiad. But they will drop 2 points today. But the logical part is US कल Armenia से पड़ेगा. They will destroy Armenia most likely, and then we will have an open tournament. But the thing is, it just becomes much more difficult to get gold and every medal actually. But gold के लिए बहुत difficult हो चुका है. The only way they got gold now is win all their games, literally all their games. I think this is gone. We'll come back to this when they finish the game. Let's go to A team because that's where we have hope. ऐसे सोचो ना, ऐसे गलती से वो मार देगा। No, of course he's not going to do that भाई. He has enough time on the clock. No यार, वो भी 26 लगता है। ये भी मार दूँ भाई। And बस equalize. हाँ, कितना आसान है ना भाई। हाँ, COB live के notification नहीं आया, अभी tournament नहीं आया भाई। Let's go back to team A I think because वहाँ पे hope है हमें।
Yeah, Beast lost. I think they missed Prag. It was very obvious to me. I was not sure why Prag is not playing yet. It was just ridiculous. Prag ko khelna chahiye. We have the knight f5 variation chat. I think on the board. No, not yet. He's still thinking. Not apparently. on the board. Not on the board yet. He's touching his king. He's touching his king. But he's making sure na king d7 or king d6. Yeah, he touched his king. No, not touched it yet. Chuo, bhai, chuo. Yeah, he's touching it back and forth. Yeah, he played back to d7. Yeah, no. Yeah, he played king finally. And now really has to play knight d4. I think that's pretty obvious. Yeah, knight d4. Did Nihal drew पर था. पर d7 और d6 में क्या डिफरेंस है? Knight f5 चेक के साथ आएगा ना d6 पे. So वो टेम्पो वेस्ट होगा फालतू हमारा. इतना सोचना पड़ता है भाई इनको एक टेम्पो. वही ना यार, chess is very hard man. Chess is very hard. एक गलती like हम कितने में स्ट्रीम स्टार्ट हुई है? We started the stream at I think 240, 230, I don't know, something like this. 45, and then players have started since 3, right? So 3 से लेके it's been 7, 4, 5, 6 and 4 hours. So 4 hours they've been playing, and you know 5th hour तक भी game चल सकती है easily. We've seen it go longer even. Yes. And it's just kind of difficult because मतलब आप खेल रहे हो गेम, आप एक गलती कर दो 5 घंटे में, एक गलती it's over. एक बंदा रौनक is winning man, check out Judith Polgar's calculation. तमिल रसी कह रहे हैं रौनक is winning man, check out Judith Polgar's calculation. क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया यार? No यार, he's completely lost. This is over. I think वो तो I would win blindfold against Ronak. It's just over. Wow. I've never tested your blindfold skills. नहीं मतलब the thing is, I mean of course ये बोलने की बात है, but yeah, this is आ गया board पे knight d4, knight d6 and we know what is going to happen. Yeah. And एक बार देखते हैं रौनक का देखे क्या? रौनक कहाँ है? हाँ, we can keep switching between both boards. I think. Chat, can we quickly get to 600 likes man? Because if we get there, एक और membership मिलेगी, chat को ही मिलेगी भाई. जल्दी से like कर दो भाई, गर्मा गर्म like चाहिए भाई हमें, गर्मा गर्म. जल्दी से भाई उंगली दबाएं और गर्म कर दें बोर्ड अपना जल्दी से. Rook b2, bishop to d3, and rook to d1 is played by. Okay. Yeah, the thing is now again the rook is hanging, no? तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास कुछ भी करने का यहाँ पे. क्या ही कर सकते हैं? And he's playing perfect chess. Like he's not even making a single mistake. Like perfect chess खेल रहे हैं वो. And यहाँ में bishop e4 now, and then I just pick up the rook on e5, and it should be over. India B will lose. Yeah, they will lose, man. 1.5 hai, but Ronak is losing. And Armenia, by the way, going to sole lead in the Olympiad. Yeah. BeastStats कह रहा है कि US will destroy सीधे भाई. They will destroy. What is destroying means? मतलब तेरे I think at least 3-1. At least 3-1. 2.5. 2.5 नहीं, it will be 3-1 at least tomorrow. देख लेना. US होता क्या है when you are a strong team, no? When you see this opportunity and when you see the toughest competition, that's when you come to your best play. Usually ये होता है. वो जो हारे एक दो गेम वो इसलिए हारे because they were like यार opponent weak है जीत जाएंगे. They were a bit taking it lightly, but now they will not take it lightly. They know they will win tomorrow. So India will have to win tomorrow, both teams. They might even face each other. It is possible कि कल आपस में मैच हो क्योंकि equal number of points होने के chances है ना. If VD draws, then team A gains half a point and team B gains 0. So they both go to like I think 8 points, right? पर शशि किरण का भी तो गेम होना चाहिए ना ड्रॉ. हाँ, but शशि का ड्रॉ हुआ तो then they win. But वो भी chances बहुत कम है ना. Like he is lost. India B, my first board was a win for Rakesh. Board 2 was a draw for Nihal. Board 3 was a loss for Adiba, and board 4 Ronak is losing. If you can go to the game of Sasi, who can literally, make a huge difference in this game. If he can somehow hold this, which is very difficult, but if he holds, India A will win and go to equal number of points as the US. That will make a huge difference. हिंदी सीबीआई 100K awesome. Congrats Niklesh भाई for 100K भाई. हमारे भी करवा दो यार. हम सबके भाई, मेरे BeastStats, चेसकॉम इंडिया सबके करवा दो यार. लेट्स गो. गर्मा गर्म समोसे से गर्मा गर्म लाइक पे आगे साल भाई. अरे भाई बस अपना चैनल अपना ट्रेंड भाई. सही बताना, मेडल छोड़ के चाइना और रशिया के बिना उतना मजा आ रहा है. बिल्कुल भाई, हम आर्मेनिया से पिल गए भाई. अब तुम्हें चाइना और रशिया भी चाहिए. क्या चाहिए तुम्हें? चेस मतलब तुम्हें चाहिए क्या भाई? मतलब रूह ही ले लोगे भाई. भाई गेम्स देख के तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है?
लाइक चाइना रशिया होते भी, It पर would only ऐसे make जो it tougher, like somehow. yeah, Like it I would don't make see. it tougher, but गेम्स तो फिर भी बाकी लोग टीम के साथ भी होंगे ना. हाँ. एंड क्या गुकेश ने कितना मस्त खेला ब्रो आज. वो बिशप सैक क्या गेम खेला करके भाई. क्वीन टू G2 लाना, then you play the E7 move and promote it to a queen. By the way, update from Kilua ji. India 3 has won 3.5.5. Sethuraman has won. Abhijit Gupta has won. I think Puranik has also won. Yes. And fourth board might have been a draw. So that's good for team 3. Awesome. They have updated. Score has been updated. So how many games are remaining? So we have 2 games in A, games in 1 in A, B, 1 in B, 3 games in the open section. We have 1 and we have 3. Oh, 3 games each in B and C category. Yes. I'll quickly check the results there. Till then we can focus on Sasi's game, yeah? Please, bye. We can go and check na, those games quickly. Okay. We have more results actually because team B mein Marianne Gomes has drawn. Padmini has also drawn. Divya is playing and she is playing against okay, Divya's game is very complicated. Oh, Vantika is also playing. Yes, still Vantika is also playing. Yes, Vantika is playing. We have 1 each actually. It's 1 each in team B. So 2 games are finished. And if I quickly go to team C as well, very briefly, team C may only 1 result we have and 3 games are still going on. Interesting. Yeah, so we have all the results that have finished. I think now we can quick look at the games. India 3 has a chance, but unko sare games jitne padenge yaar. They literally have to win all their games now because they've already lost 1 and they have to win all their games, literally all their games. They cannot risk any even draws now for a while. If India draws, then all 3 teams will be on 10 points. Yeah, so that's the thing, no? Like, matlab, inka aapas mein pad jayega and somebody will lag behind. And that's why I feel ki agar India can win, then that would basically put them ahead a little bit. And that will get both team chances to basically win. Varna aapas mein khelte rahe jayenge yaar. That's the issue. And then you might have a draw and nobody gets a medal. So we don't want that. Colson ko points and point mila after 3 wins. Aisa kyun? Bhai, because ek draw hua tha uska yaar. He drew against 126. He drew, तो उसमें तो उसके गए भी होंगे points. And plus he is already, I think, 100 200 rating above all the other players. तो तुमको उसको कितना कम rating मिलता होगा. So can we go to I think the open section maybe to I think Ronak might be still lost. Let's go to Sasi's game and see and Vidit's game as well. Sasi game में अभी तक कुछ progress नहीं हुआ है इस move के बाद. काश Vidit draw कर ले, at least हमारा वो तो हाथ में आ जाए ना. Like at least हमारा draw तो हाथ में आ जाए. We don't want them to lose, right? Because that would be horrible. So that has played rook to G3. Okay. And now his opponent is thinking, but एक बार विदित का देखते हैं कि विदित की गेम चल रहा है. He quickly draws या somehow, then it would be awesome. Knight capture F5, knight capture F4. What we thought happened. Who has the कर क्या सकते हैं भाई? हाँ, draw के chances हैं, but not clear. Who has the most chances to win for gold now? I think maximum chances US clearly. Number 2 पे आता है Armenia, and number 3 I think we'll have to see after the standings. Depends. So number 3 maybe it might be India A if they win. If they draw, then it's not clear. So far US is at the absolute top. There is no doubt. उसका Armenia से कम point है, still there on top. नहीं, हाँ, आधा point कम है, but tomorrow match they will face the same team, right? अगर उनका आपस में नहीं होना होता, then I would say Armenia has good chances, but they are going to face the US tomorrow. If they defeat the US, they are literally almost guaranteed a medal now. Armenia, because अगर US को हरा दिया तो उनका तो almost guarantee हो गया, because they have faced all the strong teams. India से भी खेल लिया, 2 से, US से भी खेल लिया, सबको हरा दिया. So, but US अगर जीत जाती है, then they destroy their chances, right? Okay. और इसके आगे क्या होगा भाई? विदित की गेम क्या लग रहा है भाई? कुछ तो हुआ भाई शशि की गेम में. शशि की गेम में क्या हो गया? रुक G3 के बाद अभी गेम मूव दिख नहीं है, बट बोर्ड पे कुछ हिला था. Apparently. इसके बाद H7 आ तो गए हम लोग. King H7 क्या? King H7, yes, King H7 is also good move by Black. Why King H7? Just to kind of get out of this Bishop D2, Bishop takes H6, yeah, Queen D2, Queen takes H6, simply getting out of this. And now he'll prepare F5. साहिल भाई मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन याद है? हाँ भाई, मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन है क्या वैसे? एक बंदा है यूएस का, उसने कोई प्रेडिक्शन डाली थी एंड उसने कल के राउंड के पहले बोला था यूएस का 56% विन चांस है.
एंड स्पेन का कुछ है, इंडिया का कुछ है, सबके 5-5, 2-2, 3-3%, यूएस का 56%। और कल इंडिया 2 ने स्पेन को हरा दिया, उसके बाद भी स्पेन की ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा है इंडिया 2 से। तो हम उसकी मदद ले रहे थे, भाई क्या ही आदमी है भाई, मशीन लर्निंग कर रहा है, ज्यादा हीरो बन रहा है। यूएस इतना पीछे है, इंडिया 2 इतना बढ़िया खेल रही है, 56% दे रखे यूएस को, भाई क्या ही आदमी है। एंड सडनली वही हो रहा है जो उसने कहा था भाई, मशीन लर्निंग ओपी भाई। If India will lose, Armenia takes the sole lead. Yes, correct. Yes, सिल्वर ब्रॉन्ज अच्छा तो है यार, बट द थिंग इज, आई बी ऑनेस्ट, ओलंपियाड ना, लाइक देखो, even if India were to not get a medal, what changes? The main thing is India में हो रहा है. When you win in India, right? I think everybody gets to know about it. Like no politician can ignore it. पूरा मीडिया कवर करेगा. So जो players को promotion मिलेगा ना, the sponsors they'll get, how much the game will be popularized after they win a medal. Like I can't tell you man, like मतलब गेम पॉपुलर होगी, और प्लेयर्स का तो लाइक मतलब जो मतलब गोल्ड या सिल्वर विनिंग टीम में प्लेयर्स होंगे ना भाई, ऐसे मुझे लगता है कम से कम 5 करोड़ तो कहीं नहीं गए भाई, एंड दैट विल कंप्लीटली चेंज देयर लाइव्स। मतलब गवर्नमेंट से लेके क्रिकेटर्स में भी, लाइक दे कीप डूइंग दिस ना, जो भी गोल्ड जीतता है दे कीप हेल्पिंग आउट पीपल, लाइक एंड इट विल चेंज देयर लाइव्स कंप्लीटली। अभी तो इनॉग्रेशन हुआ था, मोदी जी 2 बार आ चुके हैं इसके लिए, लिटरली प्राइम मिनिस्टर खुद। And if they win this, I can't tell you, जब वो खुद देंगे ना मेडल, मोदी जी आएंगे मेडल देने में भी to the Indian team, imagine यार मतलब क्या फील होगी, एंड कितना प्रमोशन मिलेगा उनको। सारे न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं ये। इफ यू गो टू एनी आज तक, एनी यूट्यूब चैनल स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम न्यूज चैनल का, उनके टाइटल में लिखा है भी लिटरली ओलंपियाड, एवरी स्ट्रीम, बिकॉज दे नो कि इट्स ट्रेंडिंग। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ दाव पे है, एंड जीतने से इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम, दे ऑल्सो बेनिफिट, उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगी, but also chess as a whole will improve. How can USA bring players from other countries and they aren't there in for that? You can change, no, like players के ऊपर है man, you can totally change federations. Depending on the player ना, अब तुम्हारे को कोई फेडरेशन हेल्प नहीं कर रहा तो तुम चेंज करोगे ना भाई। Exactly. फोर्स तो कर नहीं सकता है कोई किसी को। King E6 played now by okay, knight D4. हाँ, A3 was played and then King 2 E6. This is very Knight 2 difficult. D4 check. And then King 2 D6 again. Now, if Knight B3, there is C5, because Knight B3 का idea है C5 check. That would give VD an edge. अगर वो Knight B3 C5 check खेलते ना, he would be better, but he can't do it. After Knight B3, Black will play C5 and block it. Netherlands, I'll check chat. We'll not change the board. I'll let you know what's happening there. Anish Giri has won. Jordan has won. So I think that's 2-0 for. And Max has lost. Let me check the third board. भाई एक बंदा पूछ रहा है, if VD can somehow exchange the knight, then what is the evaluation? It's not clear actually, because pawn endgame में क्या होता है? If you can quickly push the f pawn and then bring the king to e5, then white is winning. But I think because all these pawns are isolated pawns, even in the pawn endgame, it might be bad for VD, because वो b5 खेलेंगे, cb5, cb5, and then b4, and he will be the first one to start pushing his pawn. And then what will happen is कि वो f pawn मारेंगे, हम b pawn मारेंगे, and then h4 pawn भी मरेगा. So maybe it will be a draw, maybe a loss, but VD will not win that, unfortunately. Yes. But pawn game बहुत specific है यार. It needs deep calculation. We can't really predict it ऐसे. It depends कि king कहाँ है उस position में, knights कहाँ है, and so on. India 2 trend कर रहा है यार. अच्छा, वो कॉमनवेल्थ का ट्रेंड कर रहा है. मैंने कहा इंडिया 2 ट्रेंड कर रहा है क्या? It happens यार. अरे इंडिया 2 is trending on Twitter. They are trending on Twitter right now. ओलंपियाड वाले. हाँ. हैं. I don't know. ओलंपिक वाले मैच यार बहुत सारे हैं. बाहर का भी कुछ चल रहा है, यहाँ का भी कुछ चल रहा है. Chess India in tears. India 2 will be defeated today. Actually इंडिया ने कनाडा को 2-0 हराया है, तो उसके साथ साथ ये भी ट्रेंड कर रहा है भाई. दोनों ट्रेंड कर रहे हैं. अरे यार. Nice. अरे भाई हॉकी हेल्पिंग आउट चेस. थैंक यू हॉकी. थैंक यू हॉकी. ये बहुत होता है ना भाई, when you win a gold or any medal, तो फिर तुम्हारा the support is incredible. हाँ. उससे पहले नहीं मिलता है, पर उसके बाद जरूर बहुत मिलता है. हाँ. फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा को देख लो भाई. Now he's doing so much, जैसे ads भी कर रहे हैं, ये सब अगले दिन I think his net worth like at least became 100x. या मतलब अगले दिन. Yeah. So it's trending right now. Chat. India 2 is literally trending भाई.
India 2 is literally trending on Twitter. किंग को कहाँ खेले चैट? कुछ तो हो जाए यार, कुछ तो ब्लंडर कर दो यार प्लीज ओपोनेंट। नॉर्दरबेक कर ही दो भाई कि शशि किरण से प्रेशर ही हट जाए भाई। हाँ, Oh, if Vidi draws, Ronak has lost, भाई. Ronak has lost. Ronak has lost, chat. So I think it's over. Yeah, India B has lost. India B has lost. Bishop to c4, bishop d4 check, king to e4, bishop capture e5, king capture e5. हॉकी में कोई मेडल नहीं आया. check, Okay. king to d4. चलो अच्छा, चल ट्रेंड तो कर रहा है भाई. d5. And he's lost. शशि किरण का देखें एक बार. शशि भाई साहब क्या चक्कर है यार. He's trying to do something on the pink side ना. बट क्या ही कर लेंगे यार. फिर से मैं S7 खेल लूंगा, पीछे चले जाएगा. हाँ, बेसिकली पॉइंट ये है कि ब्लैक को ना कभी F5 खेलना है बस. इफ यू प्लेस F5, बिशप खुल गया ना एक बार, तो फिर गेम खत्म हो जाएगी. जब तक वो बिशप क्लोज है ना, तब तक के लिए ऐसा कुछ है, सब ठीक है. बट वंस इट बेसिकली गोज डाउन, तो देन इट्स ओवर. या दैट्स द इशू मैन, दैट्स द इशू. एक बार वुमेन सेक्शन में गेम देखिए क्या. मेरियन गोम्स कहाँ है भाई? इंडिया भी लॉस्ट. यस, इंडिया 2 लॉस्ट यार. टाइब्रेक्स में 2 ड्रॉ से बेटर है या 1 लॉस से? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ इररिलेवेंट. या आई थिंक दैट्स नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस. आई थिंक इट माइट इफेक्ट इनडायरेक्टली. मान लो तुमने यूएस से हार गए और तुमने नेदरलैंड्स को हरा दिया, तो यूएस के पॉइंट बढ़ गए, तो दे काइंड ऑफ गो अहेड. बट अगर तुम दोनों से ड्रॉ करते हो तो दोनों टीमें बराबर रहेंगी. सो इट माइट हैव अ इनडायरेक्ट इफेक्ट बट नॉट डायरेक्टली. Yukesh has 2 years 3 months to break Aditya Taiso. Oh wow, that's a lot of time, buddy. He might just do it. Yukesh, Arjun, GM, Vish, and Sahil Tickoo in one team will be unstoppable. I know, man, but we can't, make the world suffer from that. Yeah, then there's no Olympiad. It's so easy for us to win. अलीरेजा ऐसे 2800 पहुंचा था. हाँ, 2800 पहुंचा था. In classical. हाँ, 17 की उम्र में. क्या बंदा है भाई वो भी. Can we quickly? So can we go back? क्या कौन सी गेम देख रहे हैं अभी हम? We're looking at the women's section. दिव्या का लगा रहे हैं women's section. दिव्या क्या है? I think looks balanced. ये B2 पॉइंट बड़ा खतरनाक है यार. कुछ तो करना पड़ेगा. और ये अगर पुश होके यहाँ तक आ गया तो it will be over then. Over. India 2 has lost 1.5, 2.5 यार. India 2 has lost. India 2 literally trend कर रहा है यार Twitter पे. Knight to C4 by attacking the rook. हटाना पड़ेगा. कहाँ हटाएगा? C4, rook B5 to knight D6, yeah. Why not rook A4? Rook A4. Yeah, rook A4 is possible. Rook A4, rook B2. Rook A2. Rook A4, rook B2. अच्छा, rook A4 पे rook B2. Rook B2. तो ये तो मार दूंगा ना मैं. हाँ, तो I'll take on B7. Oh, but first I will capture this. अच्छा, हाँ, then knight capture takes, the rook A2, rook F2. Got it. Of course, Fatik bhai यार. We don't like losing and we lost. Exactly, buddy. आपकी ट्वीट की वजह से हार गए भाई. मेरी ट्वीट की गलती है भाई, मेरी गलती है भाई. But what about एक सेकंड ये करूं? हाँ, ये तुम्हारे, मैं ये मारूं चेक के साथ, ये तुम्हारे, एंड फिर यहाँ पे पिन कर दूं मैं इसको. हाँ, तो rook F2. अच्छा, rook F2 डिफेंड हो रहा है. हाँ, and I think white is fine here, probably maybe better. India 1 is not losing. Can we go to India 1? Just knight C4, exactly. Can we go to India 1 once? I think that's the only hope we have of in this open section now. Let's quickly go there. Harikrishna is still struggling, Chad, unfortunately. VD is also worse. King to C5, knight to G3. ये सब हुआ है भाई अभी. Ronak has lost. Ronak has already lost, chat. So India 2 has The good lost. thing is Sasikiran na,
he's creating a couple of his threats, like हल्के फुल्के बोलते ना, like रुक जी से रख दिया है, like it looks like कुछ ना कुछ, like I would say it's not all over, like हल्के chances तो हैं, but yeah, black can just play king h7 ऑलरेडी टाइम पे इतना ज्यादा लो है ना, हाँ, that's also क्या an issue. करे यार, इट्स जस्ट Also a 4 big issue. minutes ओनली ना, और सामने वाले के पास 20 मिनट है. Yep. I think VD is also close to a draw, Chad. I hope VD draws quickly, because then draw confirmed Hamara. That's very important. हाँ, that's very important too. Hari Krishna won, yes, but Team B has lost, Chat, already. They have lost 1.5, 2.5. Very sad result. Team A में 1.5 half hai. We need one more draw, but we are losing in both. We are losing in one and slightly worse in the VD game. He's closing all the ABC files with that bishop pawn combo. That's a good sign. Black को F5 move मिल नहीं रही है. ये करने के बाद तेरा बिशप भी तो इज लाइक अ पॉन ओनली. वो चलेगा ना भाई, रुक नहीं गुस्सा ना भाई, बिशप के बदले रुक के रखे बैठे, क्वीन रोक के बैठे भाई, चलेगा यार. वो बंदा F5 नहीं ढूंढ पा रहा भाई, उसको F5 खेलना है, F5 खेलेगा तो गेम खत्म हो जाएगी, उसको मिल नहीं रहा है F5. नाइट ढूंढे भाई, अच्छा है. इज इट ऐसा है क्या भाई F5? अभी नहीं. आई थिंक बिकॉज़ E5 is also hanging right now, it might not be so great. वो रुक पूरा F8 रख के, E8 रख के, फिर जाके F5 खेल लेगा. अभी तो I think it's risky because E5 is also weak. How is 40% are saying that they have played over the board? They never did. There is no way. Yeah, देखो ना, it can happen. Yeah, it can happen because एक tournament तो खेलना लाइफ में कभी. Yeah, Baz giving some hope. भाई for sure. 43% of 1,000 people, which is almost like 430 people have played. I don't know, हो सकता है possible. chess.com पे follow करता हूँ. D8. Is he planning bishop B5 and D3 now? That might be the plan. Yeah, bishop B5 and then pushing the pawn. Maybe bishop A5, like trying to gain a tempo with this. Bishop A5 now. And if rook to D7, then I don't know what to do though. Doesn't look comfortable at all. Then bishop D2, maybe trying to prepare some sacrifice on H6, like just to kind of, at least डर थोड़ा लगा दो opponent में. He played bishop A5. Nice. At least थोड़ा attack कर रहे हैं, थोड़ा time waste कर रहे हैं, and getting some time on the clock. I played OTB in my house. Nice. Oh, इसको ही OTB कह रहे हो? नहीं भाई, tournament hall में होता है OTB यार. Please show India to result. क्या? कॉलेज में खेला था कह रहा है. हाँ, कॉलेज में भी मैंने भी खेला है. कॉलेज में फन टीम इवेंट होते हैं. इंडिया भी has lost यार. India भी has lost already, unfortunately. Hari Krishna won. Yes, Hari Krishna won way back, bro. चस्का जी. India 2 रिजल्ट में हुआ है भाई. गुकेश has won, but Nihal has drew, Adiban lost, and Ronak lost भाई. So overall 2.5, 1.5, and we have lost. Not looking so great, chat. Not the best day for Team India today, I have to say. Women's के लिए, A के लिए it's awesome. I think B also has some chances and C also, but for open section, not a great day because Team B lost. Team A is also not so clear yet. Team C won though. और डालो आर्मेनिया को टियर लिस्ट में सबसे नीचे. भाई टियर लिस्ट में तो मेरे मजे ले लो भाई तुम. टियर लिस्ट में तूने आर्मेनिया को सबसे नीचे डाला था? मुझे याद ही नहीं है कहाँ डाला था आर्मेनिया को. आई हैव नो क्लू. देखना पड़ेगा. आई थिंक नीचे डाला होगा मैंने. नो चांस में फॉर अ मेडल. I still think they will not win a medal though. I still go with that. I think Armenia is not so strong. Not so strong बोल के सबको तो हरा दिया ब्रो. समझे नहीं इसमें क्या होता है यार. जब इंडिया 2014 में मेडल जीती ना, India was 19th seed and they won bronze. So it happens sometimes. But यहाँ पे एक टीम तो USC है जिसको तो मेडल मिलना ही है. तो 2 ही स्लॉट्स के लिए लोग खेल रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, व्हाटएवर. ठीक है. So 2 टीम के लिए खेल रहे हो. And your average rating, like you don't even have a single 27 on your team. जब भी तुम्हारा नॉर्वे से ही पड़ेगा तो एक बोर्ड तुम्हारा हारना ही कंफर्म. So कभी ना कभी तो you will falter. समझ रहे हो ना? Like it can only go on till so long. अगर की टीम में 2700 प्लेयर 2-3 है, over the period of 11 rounds they will play stable chess. But जैसे ही आपका 11 राउंड में जाता है ना, at some point you will falter. And इनकी टीम में 2500 ही I think 2 है ना शायद. तो it's not easy for them. They can win a medal, but it's very unlikely. BD also thinking right now. So is Sasikiran. Very important chat. If both can draw, India would basically win. In India, A1 would win. By the way, we have had a few moves in that game. Rook B8 played, Bishop B4 back, and Queen to C7 now. Yes.
Rook to b8. Sasikiran playing really fast. He has no other choice. 2.5 minutes for him. He has to bishop d2 maybe, putting some pressure on h6. भाई 2.5 minutes ही सिर्फ, अब तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होता ना, बस इतना ही कोई है ना टाइम नहीं जो है, है। only increment now. Oh no, कैसे खेलेंगे भाई? Opponent एक looks बंदा भाई confident. चैट में पूछ रहा है, साहिल भाई, did any player, Indian player except Anand beat Carlsen in classical? I don't remember I anyone. think Harikrishna might have at some point. Is it? Vidit hasn't. Vidit has drawn. Plug hasn't. Twice, I Nihal, think. nobody has. I think only Harikrishna probably in one game. I'm not sure. I don't Maybe. remember. I do remember he won against Carlsen. I'm not sure rapid or classical though. I think probably only Hari has a chance. नहीं यार, हरी नहीं जीता क्लासिकल में। नहीं, मुझे कुछ याद तो है। I'm not sure if it's rapid or classical though. I'm not sure. I don't remember. किसी को याद है चैट में? और 1.5 मिनट है भाई। Come on, Sasi. And we have शशि का कैम बड़ा कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, that would be cool to see because I think अब time pressure का scene आ चुका है। हाँ। Sasikiran and then we can switch between VD and Sasikiran. Because Sasi loses, then it's VD के हाथ में। फिर opponent क्या है ना? If Sasi loses, तो VD का opponent भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार अब तो मैं जीत रहा हूँ, draw, let me try to push, like then he will also become more over ambitious. Then he might just try to win this game. So if Sasi draws immediately, then opponent की उम्मीदें सारी खता रहे यार। Got it. Rook g3 played by Sasikiran. Interesting move. Not sure what the point is though. Chat कह रहे he won. Rapid game था। एक कह रहा rapid, एक कह रहा he won. It's not clear, yeah? नहीं, I think rapid ही था। Okay, he's playing something. He's playing something. What is he going to play, chat? भाई क्लासिकल में कोई जब मैग्नस को हराता है तो हेडलाइन बनती है भाई। हाँ, but बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। I'm not sure if it was like which year it was, but way back. Okay, maybe then हो सकता है। He plays the move. He played rook to f8, I think, right? He's preparing f5 now. He's preparing f5, chat. This is not looking good. He's preparing f5. He's preparing f5, chat. And that is not a good sign. He played rook b8 and f5 is incoming. And that would open up the black bishop. Do you know Olivia Datta from CBI? Olivia Datta. ये कर सकते हैं क्या? क्या चीज? Rook f3 would not work actually because I can still even prepare f5 slowly. I'm not sure if it's directly possible. Directly might be possible as well because e4 check भी आ रहा है बहुत lines में. Or something he played. He played rook g6 again. Okay, but king h7 now. What do you do now? Hari won before Magnus the world champion. Okay. What's the score? Chat score update. India team B has lost in the open section 1.5, 2.5. Gukesh won a sparkling game. He is 2-7-1-9 now. But unfortunately, AD and Ronak both lost. And then Team C has already won in the open section, as you can see, 3.5 half. Women's Team A has defeated Georgia in the exact same score they defeated Team B and Team C in the women's section. So they got their revenge. Team B in the women's section, it's 1.5 each, 1 game to go. Team C, 3 games are still going on. And in the open section, in the A category, we have 2 games going on. India needs a draw to basically ensure at least 1 point today. शशि भाई, शशिकिरण जी का वो कैम बड़ा कर दो ना आप। कोई सामने ही आ गया भाई। He's like, तुम्हें नहीं देखने दूंगा। वो हट जाएगा अभी, ऐसे वैनिश हो जाते हैं ना वो लोग अचानक से ग्लिच हो गए। Queen to d7. I feel like India one women team is surely going to make a podium finish because this will be one of the strongest teams, Georgia. That's true, but tomorrow they'll face Ukraine. I think that will be the toughest challenge so far. Ukraine has won, I think, against Romania, so that will be an important match. We'll have to see. If they defeat Ukraine, then yes, they are almost guaranteed to basically win a medal at least. 40 seconds, man. 40 seconds. Is Shashi planning exchange sack on c6? I don't know. I think... No, not really. I don't think so. I think he's just playing some moves. He's just trying to hold, just trying to scare black. Yeah, मतलब ये attack कर रहा हूँ, but there's no threat. Yes, women A section is in sole lead now, I think. Yes, Amish bhai. Bishop to d2. Women C4P indeed, bhai, indeed. उनके चांस अच्छे थे यार गोल के. Bishop d2 played. See, he's threatening यार. मालूम था मैं h6 क्या मारूंगा क्या? Maybe I will take. Like he's just trying to threaten black some basically और कुछ नहीं है. Critical women's match का भी कल all critical match होगा against Ukraine, most likely chat Ukraine और India का होने वाला है. If India defeats Ukraine tomorrow, they are
very likely to win a medal for sure, and even gold. Good chances of gold. यूक्रेन को रशिया की याद ला देना, अरे ऐसे नहीं बोलते यार, that's not correct, I think. 52 seconds भाई, it's not, it's too less time. एक बार किसी से क्वीन आ जाए इधर, but thing is, even then it's not enough because rook h7 रहेगा लास्ट में उसके पास, so it's still not enough भाई, वही तो चक्कर है ना. 10 कलोल चाहिए. Chess.com is hanging a little bit, I think, for me right now. हाँ, थोड़ा सा हैंग तो कर रही है, पता नहीं यार. तो इधर जाते ही इधर आ जाएगा फिर ये. अरे यार, 52 seconds only left with Shashi, but अभी तो अच्छा खेल दिया उसके ओपोनेंट ने. रुक b8. Now it's Shashi's turn. Now again bishop. भाई रिपीट हो जाए यार गलती से. हाँ, रिपीट जाए मजा आएगा. Shashi has to be very careful यार, रिपीट कभी हो सकता है. He has to be very careful. मौका मिलना, छूटना नहीं चाहिए. रुक b8 एक बार, 2 बार हो चुका है आई थिंक. नहीं बट क्वीन का पोजीशन चेंज हो गया ना. हाँ, क्वीन होना चाहिए था b7 पे. Exactly. Just passing time, he's just putting pressure on Sasi on the clock here कि Sasi खुद ही ब्लंडर कर दे, समझ रहे हो? So basically क्या है, he's dancing around a little bit, he's forcing Sasi to panic, and we Sasi kind of self capitulates. Yeah, he gives the game automatically. कुछ ब्लंडर कर दे खुद ही. VD also trying to hold the game. VD में pressure बहुत है. He knows Bishop he to must b4 खेल दिया भाई. And VD ने देखा होगा ना. Imagine the pressure on VD right now. Blunder है? हाँ. What did he play? Bishop b4. No, I think it's kind of so. I don't think so. I think it's pretty much okay. वो इंजन I think वो best मुझसे compare करा होगा. But all I was imagine the pressure on VD's shoulders. He knows Sasi is losing. He needs to draw this. He knows it, right? He must have seen the result. हाँ, let's go VD's game. VD ने देखा होगा chat की मतलब Sasi is losing, तो ये बहुत important game है. King to d6, king to d4, knight d6 check, and now he's thinking what to play. And he has 4 minutes. Opponent has 9. So again, we are slightly under time pressure there. I think, in fact, if you push the f pawn, suddenly VD can be better also. You can see how it can go both ways. But yeah, this is most likely a draw still. But both sides having chances. How's Queen A6 Sasikiran? Queen A6. Can we go back to Sasikiran's game? Queen A6 is going in the wrong direction here. I think after Bishop B5, our Queen is going to get trapped or something. So it looks very sus to me. I think we have to kind of hold this. हम worse हैं, we are clearly worse. We are losing. हमें hold करके रखना है बस hold करो भाई. Who is stronger Olympiad team, US or Russia? I think US is slightly stronger, especially because Russia has Kraken, so he doesn't know how to play chess or how to be a human. So Bishop B4 played. Twitter पे trending देखा भाई मैंने यार. Twitter पे India 2 trending है भाई. I don't know if it's because of like only chess or like many things, but yeah. यार एकदम डिप्रेसिंग हो गया. इतना एक्साइटेड था भाई उसका गेम देखने में, गुकेश एंड हरी का, एंड नाउ इट्स ऑल लाइक सो सैड. Gotham Chess has tweeted Gukesh is the GOAT. आज भी एक एडमिटर वीडियो निकालेगा भाई गुकेश पे. I wonder what his performance rating is. Like after पता चलता होगा क्या? It must be 3400, 3500. What? Seriously? हाँ. Wow. हाईएस्ट परफॉर्मेंस रेटिंग कितना रहा आज तक? 3900. नहीं ऐसा तो यार फिर वो कुछ भी होता है ना, because if when you don't lose a game तो it's like insane, because Caruana का था ना 7 out of 7. तो उस टाइम पे तो 4000 रखा होगा उसका ऑलमोस्ट यार. आई डोंट नो कितना रहा होगा, बट तभी तो मैं पूछा कितना हाईएस्ट होगा ना, पर किसी का ना किसी का तो होगा ही. वो कैसे भी वो ट्रैक नहीं किया होगा. आई थिंक ट्रैक इज आई थिंक इट इज ट्रैक्ड. आई हैव हर्ड अ कपल ऑफ टाइम्स. चैट को बताओगा भाई. आ गया भाई वीडियो भाई. वो रुकता थोड़ी है बंदा भाई. वो खतरनाक है. E6 आ भी गया वीडियो. वाओ. Okay. Queen E6 played. I guess it's Queen G3, like putting some pressure. He plays Queen E2. Okay.
He's just holding. He's just holding somehow. He's just not trying to do anything crazy. I think that's not a bad deal because he's low on clock and let black force and find out a way because कुछ हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे. We cannot do anything actually. Be on the lookout. And by the way, VD has played King E4. I think after King C5, that's a critical decision for VD. Does he go to E5? Does he go to D3? So he has to make a critical choice there. E2. And यहाँ पे क्या हुआ है? So he played King to King to E4. And after King to C5, he has to make a critical choice, right? Does he try to defend his own pawn or does he try to go to E5? King C5, not Knight C5. King C5. Oh. So after King C5, he has to make a choice, right? King E5 or King D3. I think King D3 is better. But he might get tempted and go to E5 and then it's kind of almost lost. No, he will not. Yos Kaiwa bhai, kya haal hai? King to D3 only, bhai. King E5 to... It looks lost. It looks lost. We'll follow the game chat, of course. India be lost here, unfortunately. What's favorite opening with black? I would say Queen's Gambit is favorite and the knight off. If only Prag had played it, we would have at least a draw. Yeah, man, Prag should have played. I don't know who made the choice, but definitely a wrong one. There's no doubt it's the wrong choice. Regardless of how Prag lost yesterday, he was like, we needed our best team for today. At least we would not have this thing, no, if only we had Prag. So I think if Prag was playing, we would have at least drawn this match. I think they kind of overestimated how strong Team B is. Even whosoever decided the team, clearly. He should have played. He should have played, clearly. Because they had a rest day tomorrow, right? They had a rest day tomorrow. Levon regretting federation change. Yeah, maybe. He plays King C5. Khela kya? Did this happen? No, Why would Levon be regretting? Oh yeah, King C5 played. He played King C5. Now it's a choice. King E5 is lost. VD has to come back to D3. Has he played King? Oh, he played King D3. Thank God. Yeah, he played King to D3. And B5 played. And B5. Oh, so he's going for it. Yeah, he's finally going for it. Knight E4 check. Let's give a check. Move the king back first. Knight E4 check. Where do you move this here? King here? B6, I guess. King to B6. And then take on B5, I think. Knight E4 is almost made, by the way. Ek hi square hai B6. C capture on B5. Yeah, C captures B5, let's say. And now, can you play King C3? Captures? King C3? Into C3. It should be a draw somehow. Should be a draw. I think pawns bahut kam reh gaye. Should be a draw, most likely. But black is going for it. Yeah, if you pick up H7, then suddenly we can be winning also. So black has to be careful. Yeah, दो pass pawn. इधर जाऊंगा, इधर जाएगा, फिर से वापस अटैक कर दूंगा. And I will get नहीं, फिर ये यहाँ आके defend करेगा. हाँ, मतलब basically black will not have enough time to, वहाँ से कुछ करने का. It should be a draw. So Sasi Kiran के हाथ में sub है, I think. Maybe VD will draw most likely. Knight E4 check खेल दिया है, King B6 हो गया. Awesome, nice move. King B6 played. Time addition हो गया भाई. Oh, by the way, no. Look at Knight G5 now. That's a critical move, right? Knight G5. Yeah, Knight G5. I'm not sure if good or bad. Knight G5. Because if black takes, VD is better. I think it's slightly. It should be a draw though. He plays CB5 though. He plays CB5. That's a human move, I think. CB5 now. कौन ही इंसान खेलेगा भाई ये? Risky है. बहुत game है ना. It's very risky if you have no time on the clock. We have the VD's camera. Can we have the VD's camera in the same camera angle we had earlier? That would be awesome. This is also good. He takes the pawn. Srinath is there watching the game. Yep. Chad, if VD draws, at least Team India is guaranteed of a 1 point, and they will come to 10 points equal to, I think, Team B. So at least they will not be lagging far behind. That's very important. They cannot afford to lose today. So at least draw confirm. Sasi is clearly worse. Come on, let's go. Yeah, this camera is awesome. Let's focus on this. CB5 played by VD now. Chat, I have to be honest. I think VD should be confident now on holding this because there are only 3 pawns on the board. He only needs to trade 2. He can sacrifice a knight for the last one. And if black has to play a pass pawn on the queen side, he definitely has to play b4. So that would ensure most likely one more exchange. So this should be knight f6 played. h6 only move to continue the game. h6 only move now. Beast bhai, kya lag raha hai? Will he hold this?
I think VD will ensure a draw, chat. That's awesome. That's something we wanted from VD. And फिर से भाई VD को लोग रोस्ट करेंगे भाई कि VD जीता नहीं. भाई, this is a tough game, man. He managed to hold this game, and that's when India needed, yeah, to maintain their medal chances. 96. ये खेल. Norway lost to Australia. What? Oh, really? Let me confirm this. Don't change the board. I will check it out, yeah, bhai. If that actually happened, we have to switch to VD's game. S6 is played by. It's played. Okay, makes sense. But I can attack ना again G4. Ah, exactly. Knight G4 now. Knight G4. यहाँ पे हमेशा तेरा नाइट को बचे रहना पड़ेगा डिफेंड करते हुए. Yep. अरोनियन भी लाइक पैसे के चक्कर में गोल्ड गया. By the way, Australia has defeated Norway. Carlsen has won. Aryan Tari losing one more game. Hammer losing and Christiansen drawing. So Norway is basically out now of the medal race. They have lost too many games. I think now Carlsen can enjoy himself in the Bermuda Pride tonight. He's definitely. Vidit has played H5. अब इसको एक fix कर दिया है यहाँ पे. Now he wants to play, I think maybe G4. Knight G4 and to be honest, chat, H pawns are dangerous against the knight. Very dangerous. So I think if anybody can, like, black should immediately take the H5 pawn. Otherwise, VD is the one who will start pushing. So knight F4 check. It should be played immediately, and you should take the H5 pawn. I think. Check and you should take. कोई disturbance आ रही है रुको. अभी भी आ रही है अमरीश भाई. Can footage mute करनी है I think maybe. अगर नाइट्स एक्सचेंज हो जाए तो एफ पॉन दौड़ेगा. एफ पॉन दौड़ने के लिए तो भाई पहले अच्छा एफ पॉन दौड़ेगा, मतलब एच पॉन नहीं. एफ पॉन अकेला पॉन है ना बेसिकली. तो सकता है बट आई थिंक ये रोक लेगा ना. हाँ रोक लेगा. एंड यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा. ये पुश कर देगा तो B4 हमें किंग को याद रखना पड़ेगा. वो वहां से किंग को. हां एंड so it will be most probably ending up in a draw, guys. There's some audio issue क्या? कैमरा फुटेज ही बोल रही है प्रणाली. Audio disturbance. Is it gone now, chat? Is it gone? What are gold chances? I would say it's हाँ ठीक है. It's decent still, but now it involves defeating the US. Clearly, we have no other choice. And guys, whoever not like this stream, please like this stream, guys. Thank you. Thank you, chat. Why is he not playing tonight? I think he's trying to. He knows it's a draw. He's trying to think for one last time. If there's any trap he can set, because once you know it's a draw, then you just think, give one long think, and then you just play out the moves quickly. Yeah. So he's trying to calculate this. But देख के भी तो ये उठा थोड़ी रहा है अभी. But I can't come over there. ये क्या हो गया? Just king anywhere. The thing is, once you take on H5, I just play knight G4 and the pawn is lost, right? VD will draw. All good now. Awesome. Chat, this is the position on the board. Knight and games are very similar to pawn games. And black has passed pawn, a potential passed pawn on the queen side. White has a potential passed pawn on the king side. Actually, a real passed pawn on the king side, the F pawn. And the H pawns will get traded off. And because it's only 2 pawns on the board, king knight versus king is also a draw. So it's just an easy draw. Like at this level, it's elementary. So I think black will just take a long think. If he has any traps, he can set now. And then he will play knight F4 check. Because if he doesn't play knight F4, I think after knight, certainly VD can be the one like, okay, maybe I should play on, because H pawn is very dangerous against the knight. But he has played na knight of. Not yet. Not yet. देखते हैं भाई कब खेलता है. 5 minutes and 3 minutes on the clock. एक बार शशि किरण यही फुटेज रहने दो, बस शशि किरण देखने देते हैं. हाँ फुटेज भी रहने दो. I'm going to शशि किरण के ओपोनेंट ने F5 खेल दिया by the way. Finally he played F5 and Sasi is trying to play A4 and move on with his A pawn. So that looks interesting. Or there's Duda playing actually, I think. He played F5 finally. Yeah. Now he's trying to push the A4 pawn. Queen F6 played by black. I think E4 is incoming now. And once E4 comes, it should be over, I think, unfortunately, for Sasi. Sasi has isolated pawns and black has connected passed pawns. That's the difference, basically. And central pawns. So central pawns are much more deadly and connected passed pawns be. VDC looking at the game. He's looking at the game. He's just trying to see what's happening there. He knows it's lost. So draw hi chahiye. I think draw is okay. Draw is not going to end India team's chances.
But the thing is, they might face India B tomorrow. So that might be happening tomorrow. यार क्या मस्त दिन जा रहा था यार आज. At one point we had, like Gukesh winning, Arjun also drawing, like everybody was drawing, and we thought we would win both games, but suddenly both 3-4 we suffered. Yeah. Yes. I think Prak should have played today. I think there's no doubt. Sasi low on time. Yeah, man, he's been low for a long while now. By the way, Black plays King C5 in Vidi's game. He's just played King C5. I think he's still hoping for some miracle. But now it's time for Knight G4, and let's just play Knight G4 and go home. I think it's over. Knight G4 is a draw. How critical this is not to play Prak man if hurts, if ruin the medal chances. I think if we definitely reduce them, ruin to nahi hoga, but reduce to for sure हुआ ना यार. We lost 2 points straight against a team which is not going to win a medal most likely. So it definitely hurts their chances. There's no doubt. Yeah, VD has played Knight G4. He played Knight G4 just now. And now Black should pick up the H5 pawn before, suddenly the H pawn starts running. So he has to do it now. हाँ भाई गोल जीतना था. हाँ भाई गोल जीतना तो भाई फिर करना पड़ेगा. I think they can shake hands. That doesn't make sense. Well, Black, I think now this is over now. Yeah. I think Viri's opponent, what he's doing is he's looking at the game. उस बोर्ड पे क्या चल रहा है, and he's seeing कि मतलब if he wins, like at least draw हाथ में आ गया, so shall I wait or not? Like I think he can just offer a draw now. Otherwise, he's just looking at that game. Because मान लो if that game ends in a draw, then Viri's opponent would like to play on, right? You like to play on and play on in courts, but yeah, it's over basically. Yeah, Queen C8 by A6 by Sasi. Armenia solid भाई. Armenia ने क्या खेला है यार इस टूर्नामेंट में यार, क्या खेला है so far. Yeah, he plays Knight F4 check, man. That should be a draw. So I think Viri's game is a draw, chat. I think we can see Knight F4 played. He plays, he will take H5, Viri will take H6, and they will shake hands soon. लास्ट में तो भी एक ही पॉन बचेगा और ब्लैक के पास वो कभी भी नाइट मार सकता है उसका. Exactly. It's a draw, chat. I think draw होगा, chat. India against Uzbekistan will be a 2-2 draw. Uzbekistan is a strong team, yeah, clearly. They also drew against the US, almost won against them. ये machine learning prediction में US 75% होगा. I know, man. कल तो से 99 ही बोल देना बंदे ने. Yeah, they agreed to draw. VD has drawn, chat. So I think it was a great defense by VD. He was clearly worse, and we needed this half point. ये बहुत important point था जो मिला हमें. And now Team A and Team B, and I think even Team C have equal number of points, 10 points, I think. And Team C, I'm not so sure actually. And regardless, we'll have a close match tomorrow. Team A and Team B might also face each other. Now they're trying to analyze the games. We have somebody blocking our view, but yeah, at least a draw is confirmed now. So India has got 2 points. It's 2-1 right now in India's favor, but Sasi Kiran is actually losing, so it might just turn out to be 2-2. इधर सब कुछ moves खेल लिए गए भाई. E4 is poised going to A6, A3, going C8 check. Kudos to VD, but he has to start winning now. Yeah, he has to at some point. So I think VD has drawn. Can we open Sasi Kiran's game? We can keep the same camera. Oh, wow. So Black has put his pawns on D4 and E3. This is done, right? This is done. Because your pieces are so passive, there's not even a single threat you have. So it's just lost. E2, D3, E1, khatam. Yeah, that's sad, man. Like Sasi Kiran, I mean, he took on D4 for no reason. I think he was clearly better at that point. Like taking on D4 was just a horrendous blunder, I think. Taking on D4 gave Black a passed pawn. It gave Black a weakness on C4 to attack and proper domination of a light square. So it made no sense. Chat, जितने लोग chat में है भाई, सबके सब हाई लिख दो भाई. Let's go. 160 लोग हैं, सबके सब हाई लिख दो भाई. Let's go chat. जल्दी से भाई, सबके सब 160 हाई में दिखने चाहिए भाई. Enlarged board, यार. Everything in life cannot be enlarged. एकदम ही sad हो गया मैं तो. All 3 teams are 10. Interesting.
Yep. To finish the game soon. भाई चैट में कोई है भी? आप लिख रहे हैं हाय भाई फाइनली. 30 सेकंड बाद आता है ना भाई. 30 सेकंड बाद ही बड़े ड्रामे यार. आदत नहीं है ना भाई. भाई यार आई थिंक कुछ हाँ ये हुई ना बात. चैट बाय क्या होता है भाई? बाय तो क्या होता है भाई? बाय तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ. Sundar of cursing himself or it would have been a 2.5. Yeah, bhai, Arjun bal bach gaya yaar. We are forgetting. Arjun was also completely lost at one point. So yes. Draw is a good result for India, bhai. I think it's a good result. हाँ ये भी है. Okay, with इतने formalities पूरी कर दी हैं. शशि किरण का क्या सीन है भाई? I think VD will now try to look at Shashi Kiran's game. He's looking at his game, right? Why Shashi is not on the board? I am not really sure. He's standing right behind the chair. No, he's right there. Okay, he's right there. But VD was looking at his board, yeah, and even VD's opponent looking at Shashi Kiran's board because that's an important game. Because India has already scored 2 points, right? But for them, it's important. They need that win. यो दलकोड़ा कैसे हो भाई? भाई कुछ हो सकता नहीं, कुछ हो सकता है यार. 1 मिनट है यार शशि को, उसके 10 मिनट है यार. Yeah, Srinath there as well looking at the game. He knows it's an important one. If Shashi could somehow, but it's impossible, man. This is completely impossible. This is done. Yes, USA versus Armenia tomorrow, yaar. Hari Krishna won, guys. Sunita ji. Hari Krishna Luckily, won. Yeah, he won today. Defeated like the strongest player था, उसे डर लगा था, वही हार गया उनका. वही हार गया. और हमारे जो जहां हम कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, वही हार गए. Like it's kind of उल्टा. देखो, both Srinath and Vidit looking at the game of Shashi Kiran, they know it's lost. It's just faith they have. Maybe he can pull off something. E2 played by Black. 40 seconds for Shashi Kiran. It's completely lost. India A will tie with Uzbekistan. Uzbekistan, outperforming all expectations. Arjun was also lost at one point, so India should be happy with the draw. But yeah, VD must be also feeling, right? Because he's been having 4 draws, 5 draws. He's not been able to win a single game. So he must be feeling, I want to strike. Even VD's opponent still sitting on the chair, yeah? सब देख रहे हो, ये लास्ट ही गेम है ना. They are just interested. Chat, do you think Shashi has any chances here? Not really, right? I don't think so. Blunder भी क्या करेगा यार? हाँ, blunder भी क्या करेगा यार, literally. Like Rook F1 आ रहा है. Rook F1 आ रहा है, followed by Rook takes G1 और Queen F1. So he played Rook E1. But Rook F1 anyway. Like Bishop G2 भी आ रहा है actually. It's mate. It's mate in 9 now, chat. It's mate in 9. It's mate in 9 as VD and Srinath look at the games. They must be feeling so close, half point more. And VD की rating कितनी गिर गई भाई? I have no clue. I don't think he lost much rating today. Maybe half a point. 1 point maybe, yeah. He's draw against 5 occasion team 1. If Gajum was team B, it would have been awesome. I know, but then I think it's very hard to know because उस टाइम पे starting में rating बहुत कम थी ना लोगों की यार. I think Ukesh had a rating of 2614 as we said. That's why the ratings were a bit like Arjun ended up in team 1 and so on. भाई बहुत टफ सेकंड के लिए पोजीशन तो हार्ड लक फॉर हिम इंडीड. दिस इज लॉस्ट मैन, दिस इज लॉस्ट. आई लाइक हाउ एक उसमें ना सब कुछ चेंज हो जाता है एक मूव में. नहीं, एक मूव में नहीं, एक लॉस या एक विन से. लाइक एक टाइम पे याद है सर, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अभी अचानक से गुकेश गुकेश गुकेश, और कल गुकेश आया. आई डोंट थिंक गुकेश शुड बी ये. और अभी देखा, मतलब कल तक कहता था इंडिया बी बेस्ट बेस्ट बेस्ट. ऑल ऑफ अ सडन नाउ द मोमेंटम इज एवरीथिंग. अरे यार ये क्या है यार, वी शुड ये वो XYZ यूएसए वुड प्लेस देम. ये वो यहां पता है, यहां पे रूक H3 इज मेट इन 8. बिशप G2 इज मेट इन 6. Queen E5 is mate in 7. It's just over. Black has so many options and it's completely over. If it was not the Olympiad, Shashi would have resigned already. And that's the basic premise. अर्जुन अगर टीम में होता इंस्टेड ऑफ अधिबान तो सही में बच्चों की टीम होती एंड वेरी स्ट्रांग. आई नो, बट द थिंग इज टीम ए में कौन होता है यार? दैट्स द क्वेश्चन. नो, अधिबान. Yeah, but then team B would be weaker, no? Like, matlab, because rating would go down. Like, Adiban right now
is 2598, right? And Team A's rating would go down. And it's based on ratings chat. It's exactly based on ratings. जिनके I think Feb, March, April में उनकी जो average rating थी सारी players की, it's directly based on that. So it's not like pick and choose नहीं है. It's exactly based on rating. FIDE's trying his best, man. I know. And to be honest, he's not playing bad chess at all. He's playing decent chess. But he's not in his perfect element. That's for sure. And he of course wants to win, man. India के लिए खेलने का मौका मिल रहा है. He definitely wants to win. But वो win नहीं आ पाई अभी. At least he's drawing games. I think VD का तो he's drawing games. Draw is good enough against strong players. I think today I think we had some bad luck, man. Sashi should resign and enjoy the party. No, I don't think he'll enjoy the party today, clearly. Bishop G2 played, chat. It's over. Bishop G2 has been played. Bishop caps on G2. Bishop G2 has been played and the game should be over. Black has broken through on the king side. The white's king is getting assaulted. Rook G2 allows queen F4 check. And then king H1 allows rook F1 check. And the game is over. It's mate in 5 from here, chat. Next Olympiad, which is one team for India, who do you think will be the best options? I think it's 2 years away, so we'll have to see as it progresses. But at that point, I assume if Vishal doesn't play, then Hari Krishna, VD, Gokesh, probably Arjun, and whosoever is the next guy will probably end up playing, but it's not clear yet. Yep, he found in chat. It's over. King H1 played. Rook takes G2, and after King takes, it will be Queen G3 or G3, all lead to mate. Yep, it's over. And the thing is, Black's king is so safe. There's not even a single check, so there's nothing. I think he will. Will he capture? Like, I think he will resign now. Yeah, he resigned. With this chat, it's 2-2 for Team A. I think with it and Srinath watching, and so at least it's a draw. India should be okay with a draw, to be honest, because even Arjun was losing at 1 point. So yes. 2 each. Not a horrible result for Team India. I think it's a decent result. But Team B losing, that's a big surprise for me. That's a big surprise for me. And as you can see the results below chat, Team A in the open section has tied with Uzbekistan 2 each. Team B has lost to Armenia 1.5, 2.5, even though Gukesh won a spectacular game. Team C has won 3.5 half. Team A in the women's section took the revenge of the loss of Team B and Team C and defeated Georgia 3-1. And now we can quickly check the results of women's section B and C categories. Let me quickly let you know what's happening. Team B maybe 2 games. Divya is still playing, and Divya is still playing, but most likely it's a draw, no? It's 3 draws, by the way. Team B, maybe we have 1.5 of 3. Only Divya is still playing, and that will decide the result. And it's also going to be a draw, right? It's also going to be a draw. Yeah, it's going to be a draw. So we'll have 2 each, most likely in women's section B. We'll follow that game. Come at time. Is there any camp for Divya and others? Yeah, that will be awesome. We can check. She played King F3. It should be a draw. And if I also check the women's C category, there Nandita is still playing. Interesting position there. Sahiti Varshini has won. Vishwa Vasnawala is still playing. And maybe I'm missing one more board. 2 board पे हो रहा है ना game, I think. No, it's I think more. I think more number of boards. I think. Sahiti has won. Isha has drawn. Yeah, 1.5 half we are, and 2 games are going on right now. Nandita is playing and Vishwa Vasnawala is playing. एक बार नंदिता का देखते हैं, उसका भी perfect. Let's have a look. Nandita has a score of 5 out of 5 so far. She has the white pieces against Richard Heathers. And it does seem to be, well, equalish, right? It does seem to be equal, right? It seems to be a draw, dead draw. Because white cannot really move the rook up, because rook F2 check would basically force the king on the back rank. And then all you can do is repeat draw. So you have a pass pawn, but I don't think you can do much with it. So I think it should be a draw with Nanta. That will make it 2-1, I think, after 3 games. She played F6, but yeah, rook takes F6, rook E4 check, king B5, king takes A3, rook F3. That's an easy draw. So guys, yeah, capture here, you give a check, you move back wherever you want to. Kidhar move karoge? So now Vishna Vasnawala's game becomes important. They are 2-1 leading, and her game seems to be better, I think,
with 2 connected pass pawns, she seems to be winning, I think. So I expect Team C to win today. Yeah, this is an easy draw, chat. The king will simply come to f4 and there's nothing you can do about it. Board 1 Anand, board 2 Hari, board 3 Gukesh, board 4 with it, perfect. But Anand sir will not play. He's not played this time, so he will surely not play last time. I think that's pretty obvious. Yeah, but next Olympiad, India will surely have a team of all players above 2700. That's clear. सारे players 250 होंगे, एक ही team होगी इंडिया की, and everybody will is 250 plus. Yes. Gukesh will be India number 1. Yeah, इतना नहीं होगा यार. I think we have to remember he was 2-6-1-4 just 5 months back. There's only so much he can do, right? I mean, he cannot be like 2-7-6-0 suddenly. It will be very difficult. India ने उज़्बेकिस्तान ने ड्रॉ किया है उज़्बेकिस्तान के साथ. बाबू. Okay, let's go to the game of. Okay, we can look at all the games remaining one by one. Yeah, Vishnawala. What's the valuation of the game? It does look like better for white, right? I hope so. Take pieces are either we double pawn and Vishnawala, yes. Because 2 connected pass pawn. No, that's the problem here. And if rook f7, I will have at least bishop e2 to save everything. So it should be completely winning. We shouldn't play 2020 Olympiad, but play 2021 Olympiad. So there are hopes. No, the thing is, online Olympiad was still different, man, because it's not really a real Olympiad. OTB is quite different. It's quite strenuous. So it requires classical chess and you travel and so on. So I don't think he'll play. Mukesh has to play top 20 people. He hasn't had exposure yet. Exactly. And we'll see the exposure in the Olympiad because I think he'll play some strong teams now. By the way, Norway losing to Australia. So Norway is completely out of the tournament. I think they have no chance for a medal now. Yeah, Bishop E7 just ends the game on the spot, right? Because, not really. What? Oh, rook is on G7. What am I doing? Of course. Yeah, it happens. ये खेल सकते हैं ना बचाने के लिए. हाँ, Bishop C8 is possible. I was also thinking of other moves, but yeah, this is also नहीं अच्छा है. I was thinking of King F4 is not possible. King F4 I was thinking actually, King F4. Because King F4 basically prevent... King F4? Because knight E2 is prevented by knight, bishop on A6. So idea being to just play H6 now, and then G5 and win the game on the spot. Arjun is at plus level, but he didn't play any tournament last month. We'll have to see, man. We'll have to see because ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ 2700 पहुंच के वापस गिर गए. So we'll have to see. What was time control for online Olympiad? I think it was 15 plus 10, right? Online का इतना ही कुछ था. भाईजान क्या लग रहा है? 20 भाई आज के रिजल्ट्स के बाद chances for medals for Team India. मेरे को तो मैं तो ऐसे सैड हो गया भाई आज देखने के बाद यार. I think कल बहुत interesting playings होंगी. Women's section का important match होगा यूक्रेन के साथ. If they win tomorrow, I think they're literally guaranteed of a medal now. So tomorrow will be all important match for women's team A. And open section में both teams have to win tomorrow. They have to do it somehow because otherwise it will be very difficult because they're lagging behind now. और कल आर्मेनिया का यूएस से हो सकता है और क्या हो सकता है? इंडिया बी और इंडिया के किससे हो सकता है? आपस में हो सकता है. Totally हो सकता है आपस में. We'll see how it goes. I think we'll get to know. But I think if there's any scope of not being they're not playing each other, it will happen. But it is possible. It is possible hypothetically आपस में match हो जाए. I am not confident about both Team A and Team B's board 4. I think Team A में तो clearly board 4 is the weakest. Like there's a clear difference in the ratings. But Team B में it's not much of a difference. I have to say. Like I think today. We had to play Prague, man. If we had played Prague, we would not lose. I can guarantee you. I think Prague का खेलना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी. अगर इंडिया से भी होगा तो दोनों नहीं जीत सकते ना. नहीं, basically one team will win. ऐसे important matches में तो अपने best team उतारनी चाहिए ना. हाँ, it makes no sense. I know Prague lost, but I mean you have to trust him. Like he defeated Carlsen, man. If you don't trust him, then why is he there? So I just feel Prague had to be there. इतना important match. If India team B had won, they would be the only team on perfect score, and then they would face the US tomorrow, day after tomorrow, sorry, and then you will also have a rest to prepare against them. And once you defeat the US, you are basically almost guaranteed of a medal and have like 50% chances for gold medal. So I think it was a great chance for Team B. They missed it, and now they have to strike back. Armenia US draw hoga to India B draw ho to it's fine. True, but I think most likely it's obvious that there are higher chances of US winning. India tomorrow is day. Who has higher chance of winning? India A भी ये तो बताना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है. हाँ, है ना, बहुत मुश्किल है because it will be Hari Krishna against Gukesh, and right now both have the same rating almost. Then it will be Vidit against I think Nehal,
And Nihal technically has a good record in online chess with it. So it will be very interesting to see the dynamic. Then it will be Prag against Arjun, very similar ratings. And then final board, it will be Sasikiran / SL. I think SL will play next time. SL against Ronak. So I think that will be where Team A will have an edge, slight edge. I think India A has an edge over P. But depends, no, Gukesh जिस फॉर्म में है हाँ वो भी है ना, फॉर्म भी बहुत अगर हरी को हरा दिया तो सडनली यू नेवर नो. ऑल्दो हरी ने एक 5FI को तो देख लिया आज भाई. That's also true. Yeah, Rishabh bhai, I know it can be a problem if they both play each other, and ideally you would not like to have that match. No, Hari won, and I think Sasikiran lost in Team A. Armenia to US, Armenia should win, then India should play Armenia and defeat them. Yeah, that would be also okay, but it's not clear, no. I think हमारे हाथ में है नहीं यार actually कुछ भी. Now it's gone because there's so many teams ahead of us now, or equal to us. So it's all, we just have to win our games and just leave the other games up to it, जो भी हो. विष्णु जी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हैं चैट में. Why Arjun plays all like Ding and Gukesh plays mixed like Nepo? I'm not sure if you can classify it that way, but yeah. I don't think so. Levon play against Armenia. That's a good question. Do you think Levon play against Armenia? I'm not so sure. Yeah, Maybe they will ask Shankland to play, yeah? And then Armenia could actually win, huh? No, I think Levon will play. Play क्या? I don't think so. I think he will take rest. I think so. मुझे feeling आ रही है. Is it possible that we might not win gold? Yes, of course, Aryan bhai. Of course. There's a higher chance of not winning than winning, of course. India अभी दोनों top 10 में नहीं है अभी तक. Top 10 में है यार. India अभी तो first थी ऐसे round से पहले. Only there is no semi-finals. गागा के थक गया मैं यार. नहीं यार, this is not. There is no semi-finals bhai. Is Mane still in this line for medal? Of course, man, they are still in line for the medal, but this time it will not be easy. It will not be easy. It happened, guys. So we have one game remaining. Vantika still playing, yeah? Vantika हो गया कि is still playing? Who's the game remaining in Team B? Vantika को हो गया. Divya is playing, right? Divya is playing still. Hey, Divya has also drawn. Divya has drawn, so women's B section has ended. And we have 4 draws in the B section, so it's over in the B section. It's 2 each. That's already over. Okay. Yeah, it's already over, so we can update the scores. And now it's all about Team C now. 2 games remaining there. Vishwa and Nandita का तो draw लग रहा है. हाँ, Nandita is a dead draw. Vishwa is completely winning. She just has to be careful about the E3 pawn, and it should be over. CY stream, Harshit said that one woman who transferred from Armenia to the US Federation didn't play her game against Armenia. Yeah, I think it's an individual choice, so we can't go with that. But I think usually, even from the US team perspective, they would rather not risk it, right? They would rather have like, Shankland will try for a win at least. I think Levon might just offer a draw because he might have grown up with these guys, right? It's very hard to kind of play against your own team when you've just transferred. So I think he might not play, but let's see. ये लोग ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? Nita is still waiting. Yeah, maybe black just moved the rook up and suddenly I get a couple of checks, but there's nothing to do. It's a draw. ये अक्षित भाई क्या हाल है? मेल आएगा भाई, देखते हैं भाई. पहले सास तो लेंगे तो भाई मेल बाद में करेंगे. किस चीज का मेल आ रहा है भाई तेरे को आजकल? अरे नहीं, वो हमें को मेल करना है. Rook E3, Knight C2, Rook E2, Knight D4. Black is trying to repeat, yeah. Yes. Now King H4 maybe. And this position has reached twice. King H4 looks okay, no? To play something else. King H4 looks okay, no? Because Knight to check आ रहा है. हाँ, King H4 सही है. ना? King H4 is fine. Rook to E3 बता रहा है इंजन to play. Rook E3 draw हो जाएगा ना, Knight C2.
But repetition. Yeah. So Levon she has to Sergison are play very good against friends. Exactly my point. So I think he might not play against them. And US is a strong team. They can afford to have Shankland as well. There'll be no quarterfinals. Sahil, we must be in top 4 now. There's no quarterfinals, semi-finals, finals. Swiss tournament hai. Everybody plays all the games, and whosoever basically scores the most points, top 3, they win the medals. Do we Cheapest any king F2? camp for Vishwa Vasna wala? Team C में सिर्फ 2 draw चाहिए, right? I think Team C should be okay because Nanita will draw and then Visha will at least draw. So it should be okay. But I think Team C is almost out of contention, I think, if I'm correct. I'm not sure completely, but chances बहुत कम है. अब US से India या B से आगे हो जाएगा. Yeah, exactly, man. But the thing is, Armenia भी आगे है. I think so. We are literally 2 points behind now, Armenia. So Armenia को भी रोकना है यार. King E1 played by her now. Rook, King F2, Rook F7, King E1, beast by. Sorry. Gukesh is feeling like Magnus. No, yeah, Anisha is not such a big fan of Gukesh yet, so probably not. Oh, all of a sudden it shows as a draw by the Indian, right? Yep. I think what this happened? is. ऐसा क्या हो गया इसमें इस I position think King थोड़ा सा mating net में रख चुका है यहाँ पे. Knight F3 check also looks tempting. Actually, E3 also is possible, right? Because Rook E3, Knight C2 check. Or maybe Knight F3 check also looks tempting. Maybe it's not yet completely drawn, but Black has chances. Black should have played indeed by. Who will India play next round? Probably. I think इसके लिए बहुत सारे रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे यार. I think there are many teams on 10 points now. We can't predict. India B is one of the most likely teams actually. Armenia also on gold in 12 open section. यार 2012 अलग था रे. There was no Carlson 2800 rating. There was like उस time पे there were no youngsters. There was no Shankland. There was no Hikaru. Like इतने थे मतलब इतने crazy chess players नहीं थे यार. And कोई गुकेश, निहाल, प्राग, अब्दुल सत्तार, कोई players थे ही नहीं उस time पे. रशिया में क्रामनिक खेल रहे थे उस टाइम पे भाई. वही तो रीजन होगा यार. Like there is some kind of coordination between Armenia, na? I don't know. I think it's probably because they trained a lot and just also because किसी टीम को तो जीतना ही है ना. So किसी even टीम if को तो जीतना है, but एक ही टीम अगर बार-बार जीत रही है, it cannot be बार-बार just, नहीं जीती ना. It's been a while since they won actually. वो पुरानी बात कर रहे हैं. 2012 की बात. हाँ 2012 की. But I heard that they won thrice, ना. मेरे को एक्चुअली पता नहीं कितने जीता है. But I think all I would say is कि it's like maybe the culture अच्छा है वहाँ पे आर्मेनिया में चेस का. But overall I think without Levon it was not expected at all. They would even play this well and they're playing really well. 2012 में रशिया एवरेज रेटिंग वाज 2769. एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या ही टीम थी उनकी यार. इनसेन. सो जाओ 20 भाई. 2012 में रशिया का एवरेज रेटिंग वाज 2769 भाई साहब. सब मतलब 2700 के ऊपर ही थे. हाँ उस टाइम पे क्रामनिक था. टोपुलो वाज प्लेइंग फॉर बल्गेरिया उस टाइम पे. देन यू हैड ग्रिश्चुक प्लेइंग फॉर रशिया. देन यू हैड एक बहुत सारे प्लेयर्स थे ना पुराने जो अब नहीं खेलते उतना. Why do you blink strangely in between? Because my eyes are tired, buddy. और कुछ नहीं भाई. आके तक चुकी है भाई. Probably it will be India A versus India B. Past versus future. Past ही बोल दिया भाई सीधे India A को भाई. Present भी नहीं भाई. सीधे past. I like how ऐसे एक सेकंड में भाई लोगों का एकदम पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है भाई. हाँ आर्मेनिया में चेस कल्चर अच्छा है भाई. बोला था मैंने हर बच्चे को चेस खेलना कंपलसरी है. इंटरेस्टिंग. नेपो वाज नॉट दैट पॉपुलर उस टाइम पे तो 12 में एटलीस्ट जहां तक मुझे याद है. आई डिड नॉट नो नेपो पर्सनली. लाइक आई डोंट स्टिल नो हिम पर्सनली बट एटलीस्ट नाम नहीं सुना था नेपो का भाई तब. How was Ukraine strong few years back? They have 2-3 medals. Ukraine is still strong. They are still strong. Kraken भी था. हाँ Kraken भी था उस टाइम पे. उस टाइम पे तो नॉर्मल था वो. Why are they thinking so much? Like Nandita is drawn by the way. She is drawn. Nandita has drawn. Last game remaining chat. Last game remaining. We've had a lot of moves. Beast by. Yes, bhai.
Now Srishta should not lose. That would be horrible. She has to at least draw this. Otherwise, बहुत problem हो जाएगी. They are playing well because Levon left and they want country. They want to show off that they can win without वो है. Sahil ji का fake laugh. Can we trade AD? We can't यार. Russia and surrounding countries have good chess culture. True man, true. I think which one is a draw, man. I think इस time पे draw for करने का time आ चुका है. Team C can be satisfied with the 2 draws. Yeah, I mean they at least win the match. That's most important, right? बाबू को लोरी सुना दो सर जी. भाई लोरी सुनानी है क्या बाबू भाई? नहीं भाई नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता. Which is the past and future GOAT? Russian team: Kramnik Vladimir 2797, Grishchuk 2763, Kryakin 2785, Tomaszewski. Nice. Yeah, Tomaszewski is also a player. I forgot about him. आज पूरा लो फील कर रहा है. ऐसा लग रहा है भाई क्या ही हो गया यार. हाँ थोड़ा सा. टीम भी इतना बढ़िया खेल रही थी. उस समय बहुत एक्साइटेड तो बहुत मजा आ रहा था. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वक्त बदल गए, हालात बदल गए, वैसा वाला सीन हो गया. Which is the past, present and future GOAT. भाई विशी सर भी एक बार अगर गलती से थोड़ा बुरा खेल दिया ना भाई, तो तुम लोग उनको भी नहीं छोड़ोगे भाई, मेरे को मालूम है. Why is he playing? सचिन को भी नहीं छोड़ा था भाई. उसको भी बोलते थे यार, नहीं छोड़ा था भाई. Why is he playing? He should have given youngster some chance. नहीं खेले तो he should have played. India team would be strong. कुछ नहीं है भाई, जनता का कुछ नहीं भाई. सबको डिस कर देता है भाई. कोई सी कल रेस्ट डे है भाई. आई थिंक अभी लोग तो बरमुडा पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे यार, है ना? आई डोंट नो. सारे लोग आई थिंक जा रहे होंगे अब तो. मोस्ट वाले. नेदरलैंड्स वन. लेट मी चेक नेदरलैंड्स का क्या हुआ. नेदरलैंड्स में अच्छा मेंस का देखना ना. एक सेकंड. अनीश वन, Jordan won, and Max lost, but Benjamin Borg drew. So they won 2.5, 1.5. India, ABC, all 10. What about other teams? So far, I'm not sure, यार, कि बाकी teams का क्या रहा. I think we'll have to see standings last में. I think कुछ मिल पाए तो we'll see. Gold medal गया even without Russia and China. Anish destroyed Jabava. Okay. Chess players चाहिए तो criticism भी लेनी चाहिए. Criticism should be valid ना. You cannot be like एक पल में तुम चेंज कर सकते हो ना. Like आज गुकेश OP and just the other day एक गेम खराब खेला and then criticize. वैसा थोड़ी होता है कुछ भी. इंडिया भी हाथी तो बोलते why are kids playing? That is not how it works ना. It should be valid. The criticism. मुझे ना बीच में थोड़ा डर लगने लगा है व्हाइट के लिए यहाँ पे. Because E3 pawn आ रहा है आगे and I don't like it much. हाँ, I think she should move the rook all the way to H2 or something. Like पूरा कोने में ले जाओ या G2 तक, and then hope for the best. G2 ले जाओ and then push their pawns. ये नाम सुन के BeastStats के खिलाफ स्पेलिंग कंपटीशन का याद आ गया. कोई कौन सा कंपटीशन था भाई? I don't even know. पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ. बरमुंडा पार्टी में क्या होता है टिक्कू जी? उसमें सारे मुंडे नाचते हैं. अरे 2500 रुपए देके और लड़कियां फ्री में जाती हैं. आज तो अधिपा सिकन 2 बजे तक पिएगा. देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म ब्लेडेंट हिटिंग. या मैन ट्रू यार. लेकिन ये तो गलत है यार. 2500 रुपया कम से कम 1250 तो लड़कियों से भी लोया है तो चीटिंग है यार. लड़कों से भाई ये तो नाइट क्लब वाले रूल हो गए भाई लिटरली, है ना? नाइट क्लब में होता है कि भाई लड़कियां फ्री रेक सुंदर लड़कियां फ्री में एंट्री करती है भाई. लड़के बेचारे बाहर लाइन में लगे रहते हैं. अब कितने चांसेस है गोल्ड मेडल के भाई? चांसेस, प्रेडिक्शन, ये सब कुछ भाई साहिल टिक्कू ही संभालेगा. परसेंटेज बताएंगे भाई. तक पेयरिंग नहीं आती. इट्स वेरी हार्ड टू नो मैन. एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि कब करेंगे प्रेडिक्शन. आई थिंक वो परसों ही करेंगे ना. कल तो रेस्ट डे है. कल तो रेस्ट डे है भाई. कल करने का पॉइंट नहीं. बरमुडा पार्टी लाइव होना चाहिए. क्या पता हो भी भाई. इफ वी नो सागर भाई वी कैन नेवर एक्सक्लूड इट. India 8 drew or won or lost? India 8 drew.
नीचे आप रिजल्ट देख सकते हैं गाइस. इंडिया A drew 2 out of 4. India B 1.5, 2.5, so they lost. India C 1 3.5. एंड वुमेन में सेक्शन में जाएंगे तो इंडिया A 1 3-1 एंड इंडिया B का ड्रॉ हो गया 2-2. एंड सी में अभी लास्ट गेम चल रहा है. वी हैव ऑलरेडी हैव अ ड्रॉ, बट अगर ये गेम भी ड्रॉ हो जाए एटलीस्ट, एक्चुअली वी आर बेटर एट लाइक कुछ मूव पहले, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन इट्स वेरी स्कैरी फॉर व्हाइट. I think यहाँ पे okay, we have the results, yeah. So as you can see, chat, Armenia has won against India 2.5, 1.5. India has drawn against Uzbekistan. I think it should be satisfactory because Arjun was also losing at one point, and VD was also slightly worse. So a decent result. USA has won against Iran 2.5, 1.5. Cuba has drawn against Spain, and Poland lost to Serbia. Wow. So I think tomorrow we'll see some interesting pairings. We might see day after, sorry, we might even see India 2. We might see Serbia. We might see Poland. We'll see what happens. Predict करना बहुत मुश्किल है. Tickoo's eyes are getting tired. I know, man. वो तो मेरी तो जिंदगी भर में tired रहती है यार. Will Fabi female fans join party? I don't know, यार. Yeah, it's going to be a draw chat now. ये repetition होगी. Rook F2, Rook E1 check. It's a draw, I think. If King E1, then I'll have like Rook G2 and I'll continue the repetition. So I think it should be a draw. Yeah, Rook H2 actually is better. बेटर इट्स अ ड्रॉ भाई. मालूम चल रहा है इतना बुरा पोजीशन कर लिए कि मीट ही हो जाएगा. हाँ, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, लाइक यू नो, अगर E3 पॉन पुश हो गया ना गलती से, देन इट्स वेरी स्कैरी. Girls looking forward to see Aryan Tari. Aryan Tari is losing all his games, man. I'm not really sure Norway team कार्लसन के अलावा बाकी लोग अटेंड करेंगे, because honestly उनकी जो वाट लगी है ओलंपियाड में, like just look at the Norway team, man. They've struggled horribly in this Olympiad. All the players apart from Carlson, like all the players. So I think, you know, they would really not be feeling happy about themselves, and you just yeah, they might come to the party, but their heart and soul will not be there. When will Sahil Tickoo marry? When I get to 1 million subs, भाई. Subs और marriage का क्या भाई? कुछ भी भाई, अब क्या बताऊं मैं, कोई लिंक तो है ही ना, कुछ तो बोलना है ना. Will निरंजन भाई join the party? निरंजन भाई जा रहे हो क्या बरमूडा पार्टी? हिंदी चैनल 100 के कैसे हो गए भाई? They had 95K, हिंदी 100 हो गए भाई सही में. ओके, निरंजन भाई का चाय पार्टी और खाना पार्टी घर पे ही भाई सर. नाइस. Which chess player looks the best in suit? अब ये तो पर्सनल टेस्ट पे तुम्हारा डिपेंड करता है, तुमको क्या पसंद है. हाँ भाई, टेस्ट है तो. हरियाणा से कौन है भाई? हरियाणा से कोई नहीं है ओलंपियाड में. Anyway, for Magnus, women hate him, he repels them. लगता है आपको ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं नोट भाई. ये नोट भाई वही है जो अपने को कन्विंस कर रहे हैं, लड़कियां मेरे पीछे नहीं जाती तो कार्लसन के पीछे भी नहीं जाती. अच्छा तरीका कन्विंस करने का अपने आप को भाई. आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया था. क्या बोल दिया भाई? मैं भी बोलता हूँ, मेरे भी 100 हो जाएंगे. भाई कितना सन्नाटा है भाई. होगा ना, उन्होंने बेली डांस करेंगे ये सब बोल दिया इसलिए. यार मैं भी करूंगा यार बेली डांस. 100 के कर दो चैट. अरे पर उनका 100 लोग है नहीं चैट में. 100 लोग है, 100 की बातें चल रही है. क्लोज भी था ना उनका. ओ E3 आ गया भाई बोर्ड पे, थोड़ा ध्यान रखना यार. Oh, white is again winning apparently. Now you can capture this ना. ब्लंडर कर दिया ब्लैक ने यार. White is. And ये हमेशा रुक जाएगा, ये कोई पोल पुश नहीं कर सकते हो, ये अपने पास. Take on D4 and play bishop F5 and it's completely winning. Yeah, it's over. सही है, जीत गए तो और भी अच्छा है. चेस कैसे इंप्रूव करो भाई? हमारे कोर्सेज चेकआउट करो भाई. अभी कोड चल रहा है यार, कूपन ओलंपियाड 30% ऑफ. How do you survive this? Look H2. अरीना किंग स्टार्ट हो रहा है चेस सर्कम का. Rook H2 किया तो E3 पॉन मर गया. Now it's just simplified. हाँ, now it's simply winning. Tickoo, I like the way you love. तो गाना देखो ना भाई मैं उसके ऊपर फिर यार. ऐसे कैसे चलेगा यार? गाना लिख के लाओ. Yes, Saurabh bhai, that's why you 3 teams. Subbing everyone if they ask. ये क्या है भाई? ये क्या था? अरे बढ़ो ना भाई. निरंजन भाई ने क्या बोला भाई?
ये क्या वो दो 92 मूव कैसे हो सकते हैं? हाँ, she's winning. Yeah, of course she's winning. वही तो Yeah, बात now कर it's over, रहा था। no? Like, I think just rook takes d4 should be winning, no? Rook d4, bishop h. No, it's not rook d4 actually. Is it? It should be rook d4 also winning, I guess. I'm not sure ये खेला गया कि क्या खेला गया भाई। I'm just confused little. भाई चेस की वेबसाइट पे भाई, बाकी यू कैन आल्सो बाय चेस को मेंबरशिप भाई, यहाँ जीत सकते हो, इट विल रियली हेल्प यू भाई, आई थिंक। भाई लाइव तो कुछ देखने को है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे? सिद्धार्थ भाई, चेस में करना है ना, पहले आप जाओ भाई chess.com पे, मेंबरशिप लो एंड सॉल्व लॉट ऑफ टैक्टिक्स, देन गो टू chesses.com, वहां पे कोर्स देखो, रेटिंग जैसे वो ले लो, and then you come to the stream every day and learn from top players, Gautam Chess, chess.com, chess everything, हमारे से, BeastStats से, समय से, you know, विवेक से नहीं, बाकी सबसे सीखो भाई। इंडिया टीम तो नहीं जाएगी बरमुडा पार्टी आफ्टर टुडेज रिजल्ट। या बच्चे तो वैसे भी नहीं जाने वाले थे, आई थिंक। बच्चे तो वैसे भी जाने वाले थे, आई थिंक दे शुड ना, दे शुड लाइक, दे शुड नॉट बी सो नहीं, बट वो हार्श ऑन 21 प्लस है ना, तो बच्चे बिगड़ते नहीं चाहिए। नहीं, बच्चों का नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे वो तो है, बाकी तो जाएंगे ना। बाकी जाएंगे, आई एम श्योर। आई थिंक रिलैक्स करना ऑलवेज हेल्प्स एक्चुअली, इवन इफ यू हैव लॉस्ट। रहा कोर्स लिया तेरा भाई, डिपेंड्स नो तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। अगर बंदियां चाहिए तो उसका कोर्स लो, अगर चेस खेलना तो मेरा कोर्स लो भाई, यही बोल सकता हूँ। पूरा प्रोसेस बता दिया, वही तो भाई, देखा सब हम बोल देते हैं भाई तुम्हें फ्री में भाई। देखो भाई, इतना लो मैं लास्ट टाइम कभी फील किया था मुझे याद ही नहीं है। ये गुकेश ने कोई गेम जीती ना, पूरा हाई हो गया था भाई, गुकेश जीत गया भाई, क्या खेला है भाई, क्या खेला है भाई, सडनली इट्स लाइक अबे यार। ओके, द गेम हैज मूव्ड भाई, बीस भाई, बीस भाई, बीस भाई, भाई गेम हैज मूव्ड बट हियर देयर इज नथिंग, नो मूव्स आर डन भाई। मूव हो चुके हैं भाई। आप हाथ मूव करो, सब कुछ मूव होगा भाई दुनिया में। है ही नहीं भैया, तो कहाँ से भाई? मैं तुम बोलो भाई। I like the plugins have a nice priority. भाई देखो, चैट ने पूछा तो हमने बताया भाई तुमको। सौरभ कुमार कोर्सेज लिंक क्या डाल रहे भाई, हमारे चैनल पे स्ट्रीम नहीं कर रहे भाई। सौरभ भाई भूल ही गए भाई कहाँ बैठे हैं। मोदी जी को बोलो नेक्स्ट ओलंपियाड में हरियाणा में करवाए। नाइस, विश्वा इज विनिंग, नाउ इज कंप्लीटली विनिंग। आई थिंक शी इज ऑलरेडी, या शी टुक ऑन d3 and now she's winning. Yeah, h pawn is winning. It will be over in the next 30 seconds chat. 6x is crazy. Why? I know. That was also the count of my ex-girlfriend. How many guys she dated while she was dating me? 6x. ये क्या है यार? भाई ex-girlfriend किस काम आती है भाई? रोस्ट करने के बस, कंटेंट, that's it. देखो भाई, कंटेंट बना दिया यार गर्लफ्रेंड को है। ओपोनेंट को बोलो ना रिजाइन कर दे भाई। भाई यहाँ पे और कोई मूव नहीं भाई, और इससे आगे क्या हुआ बताओ ना। बताऊं क्या भाई, इतना पीछे आप भाई, बताने का भी मन नहीं कर रहा है भाई। अब क्या करूं मैं? कौन से मूव नंबर पे हो? अब मैं chess.com का रिले कैसे सही कर सकता? मैं chess.com पे देख रहा हूँ भाई, कौन से मूव नंबर पे हो भाई? यार 93। हाँ, I can't do it ना, ये मेरा तो 93 पे दो मूव वापस जाओ, रूक h2 नहीं हुआ, इंस्टेड किंग e4 हुआ। अब ये पोजीशन है क्या? हाँ, आ गया, हाँ आ गया भाई। एंड शी इज वन चैट, शी हैज वन, सो वुमेन टीम C wins. I think pairings बहुत जल्दी आएंगी। Sahil bhai doesn't get excited when women win and they win, he becomes excited, but when win and then they lose. भाई क्या इतना भाई, after 6 hours of streaming, I think my brain is not ready for such brain twisters. मेरे को तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा guys. Thank you chat for joining this team. We have lost. Thank you. We have lost our insanity guys today. Thank you so much for joining. I hope you enjoyed it. 93 moves खेले गए and 93 भी नहीं, 97 moves are actually played and Vishwa Vasnawala has won. And एक बार राउंड अप दे देंगे क्या क्या हुआ है साहिल भाई? हाँ, तो Can we have the scoreboard? हाँ, we can have scoreboard most likely. So chat basically आज उतना अच्छा दिन है टीम इंडिया के लिए, because
Women's section was pretty awesome. I think A team won against Georgia, जिन्होंने हमारी B और C team को हराया. So 3-1 हराया पूरा बदला लेके. Team B drew 2 each. Not the best result, but I think not a bad result either. But then you have Team C, which also won 3-1. So overall, women's section was decent for Team India. I would say impressive. Open section, India has struggled. Team C won convincingly 3.5. But Team B, the team which was ranked first overall, lost to Armenia and they lost their lead 1.5 to 2.5. Rakesh played a spectacular game today, but it was not enough because Adiban and Ronak both lost. We really missed Prak today. I think some strategy was definitely lacking today. And Team 1, which was, I think it was a decent score for them, 2 each, because at one point, it was not even clear if he would manage to draw because VD was slightly worse. Arjun was losing at one point, but they both managed to hold. And Sasikiran also lost. So it could have easily been 3-1 in Uzbekistan's favor. So India drew. And now all 3 Indian open section has on 10 points. In the women's section, I think India will have the sole lead, I think, with 12 points after 6 rounds. And they will, day after tomorrow, most likely play Ukraine, the strongest competitor. So if they win against Ukraine, they will pretty much almost ensure a medal for themselves. And yeah, I think day after tomorrow, बहुत मजा आएगा. क्या था बीस भाई? And yes, भाई, day after tomorrow बहुत मजा आएगा. Yes, the scores are right. Yes. The scores are right. And guys, अब हम लोग मिलेंगे कल बरमूडा पार्टी के बाद, ठीक है? To watch the round 7. I think Rakesh भाई को कुछ footage लेनी चाहिए and then इस पे discussion करते भाई कौन किसने क्या किया. बेकार दिन था तो सीधा बोल दो. थोड़ा सा खराब था बट थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अच्छा भी था यार. जैसे कि टीम सी ऑफ इंडिया परफॉर्म रियली वेल. इंडिया ए कितना अच्छा खेला वुमेन्स सेक्शन में एंड इवन इंडिया सी हैज वन. तो देयर वाज गुड टीम मिक्स था थोड़ा, ठीक है. बट लेट्स गो भाई. एंड इसी के साथ लेते हैं अलविदा. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. प्लीज हैव सम रेस्ट बिकॉज परसों से फिर से शुरू है. 5 दिन और बाकी है, राइट? 5 दिन और टूर्नामेंट के बाकी है. 5 more rounds and anything can happen. Anyone can win. And thank you so much. chess.com, Sahil Tickoo, Niranjan bhai OP and India OP in the chat. Once again, boys and girls, thank you so much for joining. Bye bye. Take care and beast out. Bye bye chat. Take care. Bye bye.